जो भी होगा सोचिए। हाँ। इसके गाना हाँ, कौन सा गाना लगा बता।
ऐसे चल हाँ ऐसे काला चल मैं पता मैं खुद देखूंगा मैं रुको तेरे नेल कितने गंदे हो रहे हैं फिर बोल तो रात को काट दो दिखा साफ कर दूं
Not Apple to listen, sir. Not Apple to listen. ये बात अभी सुन लेंगे तो अगर खोल के स्पीकर खोल लो इससे खोल लो ट्रेनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ मतलब वही देखते अभी हैं अभी सुन लेते हैं अपनी सीट पे अभी तो बैठना ही पड़ेगा ना कौन सा प्रॉब्लम दिया हाँ थोड़ी बहुत सुन लो ना। मुकुल कहाँ है वही तो मैं सोची वो आगे होंगे भाई सभी एसडीओ को सभी लोग जो एसडीओ बन रहे हैं उन सभी को स्वागत हो। अब जो जितना पढ़ लो उतना अच्छा है ना सारे डिपार्टमेंट पेपर आए है ना ट्रेनिंग भी पढ़ी लो ना समझ में आएगा। हाँ Morning, sir. बहुत जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है तुम्हारा क्या काम था अभी आओगे तो स्टार्ट होगी ट्रेनिंग आ जाओ। नहीं अभी कुछ बोल नहीं रहे वो। इसी हिसाब से आएगा उसको पता ऑलरेडी उसे पता हो। नहीं, उनको तो पता है, कल ही तो मैंने मैसेज किया, हमारा लेटर नहीं निकला ना, तो मैंने इनको मैसेज किया हमारा लेटर नहीं निकला। अभी भी मैं कक्कड़ सर को बोलकर आई हूँ कि हमारा लेटर तो निकालो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? Good morning, sir. Good morning. जैसे थल्ले बुला रहे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, हाँ sir. वही चार, कोई समझ नहीं करना हाँ पहला अपना टीचर हो भैया हाँ वही तो, ये तो बार बार नहीं होता ना। हेलो हेलो आवाज आ रही है? आ रही सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बात बताओ, 80 सीट में इतने सारे बनोगे कैसे? 8,000 लोग। रजिस्टर लैला रजिस्टर में भी नंबर लेता है। हाँ हाँ भाई मनप्रीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड सब मॉर्निंग। पागल हुए हैं, पेपर दो, क्वेश्चन बैंक दो हैं। क्वेश्चन पेपर है, मैंने कहा ऑल इंडिया पढ़ो, आज सारे यूट्यूब पे सारे जाओ पढ़ लो जिसको जो पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी लड़ो हाँ आपस में। अभी एक ने अगर जी। एक सर दिन लड़ना क्लास नहीं है, नहीं हमने बढ़ा होता उससे लड़ना नहीं है। पर्सनैलिटी कम फिटनेस दिलवा देते। लड़ना नहीं है सर। साहब सत श्री अकाल। ट्रेनिंग का दी। चलो, लेकिन सब पढ़ के पेपर देना चाहते हैं, कंग्रेचुलेशन, तैयारी करिए, विश ऑल द थोड़ा बेस्ट। देखो ही है। थोड़ा देखो ही है। ठीक है, संख्या सब का लड़ो को करना पढ़ते चाहिए। करते। अभी थोड़ी देर में आपकी क्लास हाँ हो चलेगी। जाएगा, इस टाइम शांति से। ठीक है, सुनना हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट लोग हैं आपको समय समय पे पढ़ाएंगे, ऑल एक्सपर्ट फ्रॉम द एलटीटीसी, दे आर निकालो, मुझे निकाला नहीं आता। टाइम टेबल, they are going for the training, and welcome to all of you, one on behalf of LTTC, and one more kind word for all of you, best wishes. ठीक है, और during the session you try to the mute all of you, because this session is going to the live and also in the recording mode. So after the ending of the day 1, recording session will be available as the YouTube link, and the same 5 days all link will be available. So don't worry, every day you can go back and see the record as per hopefully you are all recall day over what happened in the whole days. Okay, तो इसका एक रिकॉर्डिंग सेशन भी आप सभी को, जब सेशन खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जो यूट्यूब का लिंक हमने लाइव किया हुआ है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग सेशन भी आपके सामने होगा, और आप सभी लोग उसका जब चाहें देखकर एडवांटेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल के अनुसार मैं अभी जरा देखता हूँ, फिर उसके बाद अभी पहला सेशन। नहीं मेरी आवाज आ नाम रही है? किसी का आया संजू था। कुमारी, मैं परमानेंट यस म्यूट यस। कर दूंगा आपको। ठीक है, माइक म्यूट करके रखिए। अब परमानेंट म्यूट कर दूंगा, 4 दिन तक आवाज आएगी नहीं फिर। ठीक है,
तो इसको सीरियस लीजिए आप सभी लोग, अगर अगर आपने तैयारी कर रहे हैं तो काइंडली प्रिपेयर, टेक सीरियसली। ठीक है, बाकी तो लक सभी के ऊपर आएगा। आवाज भी आएगी, डोंट वरी, आवाज भी अच्छी आएगी। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क ऑल क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, टाइमली आई रिप्लाई बैक। ओके, ठीक सर है, ये सर अभी एक क्वेश्चन है पूछिए। सर। कैसा? अब अभी हम अपने ओए से रिलीव हो चुके हैं। देखिए, रिलीविंग के लिए क्या है कि सीधा सीधा सीएमडी सर ने स्पष्ट क्लियर किया हुआ है कि रिलीव सबको नहीं करना है। पहली बात मैं जी आपको सर। बता दे दूं, आपके जी सर। कंट्रोलिंग ने कर दिया आपको रिलीव, यू आर लकी। जी ठीक है, सर। जी अदरवाइज सर। इस ट्रेनिंग के लिए, रिलीविंग के लिए बिल्कुल क्लियर मना है, कोई वर्क सेपर नहीं करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, नो बडी रिलीव नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहली बात। सर अटेंडेंस कहाँ लगानी है हमें? अटेंडेंस की गूगल शीट में अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, वहां पे आपको लगानी है नहीं Day-1। अपने ऑफिस में तो नहीं लगानी ना सर? आप अपने ऑफिस में लगा, अगर आपके कंट्रोलिंग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सैलरी से जुड़ा हुआ है। ठीक जी है, सर। क्योंकि यहाँ से आपको कोई रिलीविंग नहीं मिलने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है ना? तो कल को जी सर। ऐसा ना हो कि आप कर दें और यहाँ से रिलीविंग मिले नहीं, वो कहेंगे लगाएंगे नहीं, तो इम्पैक्ट, हुई इम्पैक्टेड, आप प्रभावित होंगे। जी सर। ठीक जी है, सर। तो आपके पास वो चीज जो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है अभी प्री टेस्टिंग मोड में है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप उसको अटेंडेंस आप लगाते रहिए, बाकी क्योंकि यहाँ से रिलीविंग मिलने वाली नहीं है। अगर आपके कंट्रोलिंग बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, कि हमने पूरे दिन भर ट्रेनिंग की, सर ये हमारे पास रिलीविंग है, अब लगा दीजिए। रिलीविंग अगर हमारी तरफ से कोई आपको दिया नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके सर। क्योंकि इसमें इसीलिए इसीलिए हमने ओपन कर दिया सभी के लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बाकी एलिजिबल कैंडिडेट है तो उनके जिनकी लिस्ट आ जाएंगे, तो उन सभी को जो भी ईमेल आईडी या जो भी हमारे पास आई है जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन सबको ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। और जो सर लोग भी हाँ, यस। सर एक्चुअली मेरा नॉमिनेशन जो है वो बीए की तरफ से अभी नहीं गया है, तो मैंने डायरेक्टली लिंक पे गूगल शीट भर के अपने आप को रजिस्टर करवाया है। हाँ, ऑनलाइन में देखिए डायरेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन यहाँ भर दीजिए, लेकिन रिलीविंग का कुछ है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आपका वर्क सर आई सपोर्ट, गॉट इट, ठीक वो है ना? समझ आ गया, बस ये चाह रहे थे कि बीए से ऐसा कोई आपकी तरफ नॉमिनेशन गया नहीं, सो आई वांटेड टू बी डबली श्योर कि अभी जो हमने खुद से रजिस्टर मैं किया। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म गूगल शेयर करूंगा, उसमें सभी के नॉमिनेशन आ जाएंगे ना, डेली होंगे, आज भी होंगे, कल भी होंगे। ठीक है ना? और उसको 11 बजे तक फिलअप करना है, तो मैं अभी इसको शेयर कर रहा हूँ। तो यू ऑल ऑफ फिलअप दैट नॉमिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो राइट सर, थैंक वो इंश्योरिटी हो गई कि हाँ इन लोगों ने अटेंड किया, अटेंडेंस होगी हमारे पास में। ठीक है, इन लोगों ने ऑनलाइन यू। रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, तो अभी ये सेशन स्टार्ट होगा अभी थोड़ी देर में, तो 5 मिनट में अभी ब्रेक ले रहा हूँ, फिर देन विल स्टार्ट। ओके, जस्ट वेट नाउ। रिलीविंग अभी मैं आपको इंद्रजीत, प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। आप अपने मोबाइल, जो भी जिनको आवाज नहीं आ रही है वो अपने साइड में चेक करें, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग 100% अभी ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब है मेरी तरफ से नो सिंगल इश्यू हियर। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है वो अपना वो साइड से वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी और क्वेश्चन पूछना? किसने राइज हैंड किया हुआ है? इंदुबाला, यस आप सर। पूछना है, बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरी क्वेरी ये है कि एक्चुअली मैं ना सीसीएल लीव पे हूँ सर। पहले मैटरनिटी लीव पे थे, अभी कंटिन्यू हुआ है सीसीएल लीव पे। तो उसमें कोई इशू तो नहीं है सर? वैसे लिस्ट में मेरा नाम है, तो फिर मैंने इसलिए ज्वाइन किया है सर। का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी ठीक रजिस्ट्रेशन है। सीट दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन सीट में ठीक अभी है। चेक करूंगा, आपको भरना ठीक है है सर। बस। ठीक है ना? हमारी तरफ ठीक है से सर। क्लास होंगी एज पर टाइम टेबल। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर, सर, कोई इशू नहीं। आपको टाइम टेबल आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला? सर, टाइम टेबल दिए? नहीं 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 दिया। सर टाइम टेबल नहीं मिला जी अभी। आई विल शेयर द टाइम टेबल। ठीक है, तो हमारे सर आ नंबर एक एक करके पूछिए। उत्ते चली पाओगे प्लीज, इनके देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगा परमानेंटली, कोई बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं कह रहा तो मैं नहीं हूँ चाहता होगा कि, होगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि हमारे सर आ चुके हैं। टाइम टेबल मैं अभी दोबारा से आपको शेयर कर देता हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीट आपको मैं शेयर कर देता हूँ। क्लास आपकी अब स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे बीच में जो टाइम टेबल है उसके अनुसार हमारे AK तिवारी ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಡಮ್ JTO SDE ಎಕ್ಸಾಮ್
Welcome to all of you. Now the session start as per timetable. Timetable will be shared after shortly through this chat box by me. And now class started by our very senior faculty member, Sri A.K. Tiwari sir. He is now present on I session. Hand over to him because we have the very few time for the complete the whole session. So on behalf of LTTC, I warm welcome to the A.K. Tiwari sir. Sir, please. Hello, good morning, everyone. We'll start shortly. Let me get my presentation ready, downloaded here. बंद कर दूं, ऐड कर दूं। ऐड कर दूं। हाँ, ऐड कर दूं। आराम से हाँ, सेशन के बाद आता हूँ यार। इस क्लासरूम में है। हाँ, क्लास मेरी स्टार्ट हो ही रही है। आपका कहाँ पर हो? क्लासरूम कौन सा है? हैं? 1305। अच्छा, हाँ। Okay, good morning, participants. I think I'm audible to all. The topic today is BSNL CDA rules 2006. Okay. It has been amended time to time. It has been incorporated in 2006 and then in 2013 and later on as per the need, they have been updated. So we'll see. This is just gist. So we have some 61 rules and some formats are there and mainly 3 schedules are there. So we'll see it quickly. Are you able to see it clearly? Okay, fine. So the important thing is that they have been implemented on 10th of October 2006. The full name is Conduct, Discipline and Appeal Rule 2006. That is CDA rules. Okay, full form is CDA. That is Conduct, Discipline and Appeal. Implemented on 10th October of 2006. To whom it will apply? This is important. They'll apply to all employees of BSNL
except those employees who are governed by Industrial Employment Act 1946. Other than this, they are applicable for each and every employee. Even if they are on deputation, they will be applicable similarly. And another important thing is definition of employee. Who is an employee? So just remember this. A person in employment of the company, including employees whose services are temporarily placed at disposal of the company. Maybe for short duration, they may be deputed, they may be hired from some other organization like that, or they are part of subsidiary or any PSU, but does not include casual employees, work charge or contingent staff or workmen defined in Industrial Dispute Act 1947. So other than these three categories, that is casual employees, work charge, and the staff which are governed under Industrial Dispute Act 1947, or you can say Industrial Employment 1946. Other than these three categories, even if he is from central government, so we will not say that BSNL CDA rule will not be applicable on a central government employee on deputation in BSNL. So it will be equally applicable because he is working in our organization, right? Then another definition which is important is family. Because at times we'll refer here and there the term family. So family means wife or husband as the case may be, or of employee residing with the employee, but it does not include a wife or husband separated from the employee by decree or order of court. So if separation is legal one, they'll not be part of family, even if they are wife or husband, but if they are separated legally, then son or daughter, stepson, stepdaughter, legally adopted son or daughters of the employee wholly dependent on him. So dependency is there, dependency clause is there. They should be dependent on the employee, then they'll come under the family, but does not include a child or a stepchild who is no longer in any way dependent on the employee. So dependency condition is very important. We have to remember it. Or whose custody the employee has been deprived by any law, maybe due to some court order, because family disputes are there. So due to some court order, if court has said that, no, you are no longer having the custody of a particular child, a girl or a boy, so then it will not come under the definition of the family. Another definition, because this comes at times when we define our dependents, other persons related whether by blood or marriage. So due to marriage also means the mother-in-law or father-in-law can also be dependent of an employee. So both the things are there due to marriage or due to blood relation, both the cases, the same thing will be applicable. So this definition of family is important. We have to remember it because questions may be framed out of this particular definition. Then comes the rule 4. So when you are an employee of the company, so certain expectations of the company are there from the employee, like the employee of the company shall all the time maintain absolute integrity. He should be faithful to the organization, maintain devotion to the duty. Whatever the work is assigned, he has to do it without any issues. Do nothing which is unbecoming of a public servant. So there are expectations that we are providing service to the common public of the country. So we should not do, our act should be in that framework. Conduct at all times in a manner conducive to the best interest of the company or which will enhance the reputation of the company. So our work, our performance should not in any way lower the image of the organization in the eyes of the public, general public. We should definitely remember it all the point that we are for 24 hours, we are
public servant or employee of the government, because that way. श्याम सुंदर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? If anything is there, you can just prompt me or chat with me, no issue, right? So even if any misconduct is happening out of duty hours, that is after 10 to 5:30, before 10:30, after 5:30, your normal duty closes. Even then, we are punishable if the act is not as per the expectation of the company and as per this CDA rule. So that way we have to keep the things in order. Do nothing to lower the image of the company in the eyes of the public. Because we are public servant, we are servant. If anything goes wrong against us, the newspaper will read like an officer of BSNL has done like this misconduct. So that way, company is always involved. So that way, we have to be cautious, be courteous and prompt in his official dealing with the public. So at many places, we are directly facing the customers, the general public. So our behavior should be courteous. Our dealing should be proper. That is what is the expectation of the company. Every employee of the company holding a supervisory position shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees for time being under his control and authority. So a supervisor has also to see that his subordinates are maintaining the integrity and doing the duty with devotion. So that is an additional responsibility. You have to work and you have to see that all your subordinate chain is also equally doing it as per the requirement. No employee shall, in performance of his official duties or in exercise of powers conferred to him, act otherwise than in his best judgment, except when he is acting under direction of his official superior. So you have to perform the duty with your best judgment in favor of company, in favor of the organization. That is what is expected. If explicitly you have been ordered by a superior or an order, otherwise you have to see with your best judgment that we are doing the best for the organization. That is the expectation. The direction of official superior shall ordinarily be in writing. So any order should be issued in written version. Oral directions to subordinates shall be avoided as far as possible. Where the issuance of such oral directions becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter. So if any oral order is given, it has to be confirmed in writing by the superior. An employee who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be duty of official superior to confirm in writing. That is, we have already seen. No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace. So this is a very serious offense. In no way it should be done. Otherwise, it's a very, very serious offense and it is viewed very seriously, so that we have to take care. Every employee holding a supervisory position shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such workplace. So this is the duty of superior, to ensure that no such act against the women takes place wherever his area of jurisdiction falls. So this is his responsibility, means whenever such a complaint will go, it will be the duty of superior to take such actions that this kind of acts are not happening, and suitable punishment should be given to the concerned person. So this is some explanation what is treated as sexual harassment. Some 5 acts, they are normally defined here: physical contact and advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, so no remark should be passed on, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature. So this is treated as misconduct.
Now, rule 5 is regarding misconduct. So, uh, uh, all participants are requested to put their name with HR number in the chat box, please. So rule 5 is regarding misconduct. So what is treated as misconduct? Theft, fraud, or dishonesty in connection with business or property of the company or property of another person within premise of the company. So this is treated as misconduct, that no threat, no fraud, no dishonesty. Whenever business or property of the company is involved, or maybe there is a contractor who is doing some construction work and his items are kept in the premises of the companies. If they are stolen by someone, it is treated as misconduct. Taking or giving bribe or illegal gratification or indulging in corrupt practices. So bribe, gratification means any monetary benefit if you are trying to take, that is known as gratification. Of course, it is illegal, means normally we get some maybe honorarium or something, that is not treated as gratification. It should not be illegal. Possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known resources of income by employee or on his behalf by any person which employee cannot satisfactorily account for. So this is an area where so many cases are happening even in our organization. So actually we should be very much cautious whenever we are procuring some movable or immovable assets. We should inform the organization accordingly as per the terms. And also whenever we are filing normally in the month of January, we have to file our IPR, immovable property return. So we have to be very much cautious that we properly file it and declare all our immovable property there. Otherwise, at later stages, it becomes a problem for us. Furnishing false information regarding name, age, father's name, qualification, ability, or previous service. So we should not play or give wrong information regarding this, that we want to lower our age so that our service will be extended. No, nothing. We should not do it. It is misconduct. Willful insubordination or disobedience, whether or not in combination with others, or any lawful, reasonable orders of the superiors. So we have to be following whatever orders are issued and whatever duties are assigned to us time to time. Absence without leave or overstaying the sanctioned leave without sufficient grounds or proper satisfactory. So whenever we are going on leave, we should give proper application, get it sanctioned. Otherwise, or even if we want to overstate, we should inform, we should apply, say, in ESS and take the permissions, approvals. Habitual late or irregular attendance. We may be late at times, but it should not be a regular fashion. It is taken as misconduct. Neglect of work or negligence in performance of duty, including malingering or slowing down the work. So if we are neglecting our work, we don't show interest, and we try to slow down the things, that no, sir, it will take some 7 days, 10 days, like that. So which work is expected, say, in a day, then it is also taken as misconduct. Sabotage or damage to the property of the company. At times, and during strikes, people indulge into this, so this is taken as misconduct.
acting in a manner prejudicial to the interest of the company, against the interest of the company if we are working, misconduct. Inference or tampering with safety devices installed in or about premises of the company, or violating safety or environmental regulation or in or about the premises of the company. That is, so maybe there is a camera which is put, maybe there is a some impression machine like that. If they are kept or they are in place, so we should not disturb any security mechanisms. Drunkenness or riotous or disorderly or indecent behavior in premises of the company. So this is not allowed, that we are indulging into riots, we are indecent or drinking on duty. Gambling within premises of the company, this is misconduct. Smoking within the premises of the company where it is prohibited, that is also misconduct. Collection without permission of the competent authority of any money. So we cannot collect any money other than what is expected. Maybe a person is sitting in CSC, so he has to collect the cash. That is not an authorized, but we should not, in the name of some maybe NGOs, or maybe in the name of some religion, if we are asking some money, that is not allowed. Sleeping while on duty. आप चल रही है, मैं सेशन ले रहा हूँ। सो हो गया सर, एक्सीड हो गया। हाँ एक्सीड हो गया। मैं तो एक्चुअली वही तो कर रहा हूँ ना, मैं ज्वाइन पता करूंगा एक आदमी कम पड़ जाए कल तो कर तो 85 होगा। इसमें तो 100 ही है लिमिट। नहीं जो बाकी वो वो कर रहा हूँ मैंने, फार्म दे दिया है, फार्म दिया ना, वो ना भरे कोई तो नहीं वो शेयर कंपनी डायरेक्ट। लो सर क्लास बैठे, आप क्लास लीजिए, वो रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ देखो ये इसी को शेयर करते सभी लोग अपने गूगल फॉर्म भरते रहे ना, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कराया जा Okay, so let us continue. We are continuing the misconduct part. Sleeping on duty, this is misconduct. Commission of any criminal offense in which, say, some section of IPC or CRPC is applicable, that is also misconduct.
absence from an employee's appointed place of work without permission of or sufficient cause. So that is also misconduct. If we are not present in our place of duty without proper reason. Permissions, purchasing properties, machineries, stores from or selling properties, machinery stores to the company without express permission in writing. So we cannot purchase or sell the property for or from company without permission. So for any purchase or for any sale of for the company, we have to take prior permissions. Commission of any acts subversive to discipline or good behavior. So anything we should not do which comes under misbehavior or beyond discipline. Subletting or unauthorized use of company's premises, equipment, tools. So we cannot sublet like I have taken a type 4 quarter and I am subletting it. No, it is not permitted. It is misconduct. Misuse of amenity provided by the company, maybe the residential telephone. We cannot misuse it. Maybe we cannot allow it as a public and we are taking some money like kind of things which had happened earlier. It should not be. Participation or inciting others to participate in strike. This is not permitted. This is a repetition act of sexual harassment of women at workplace, not permitted. Lowering act of lowering the image of company in the eye of public. Already earlier it is there. Tampering with or willfully damaging falsification of company's record, like service book. If we are changing or manipulating the date of birth or any family members' names, no, it is not permitted. It is misconduct. Making representation in order to bring any political or outside influence for transfer. If we are bringing political influence, it is misconduct. Making representation or sending grievance petitions to member of board of directors, senior officers directly. No, we have to send it through proper channel. Attending or holding meeting other than in course of duty within the company's premises. Without prior written permission, we cannot do it. Like associations meeting during office hours in the office premises without permission. Distribution or exhibition of newspaper, handbills, pamphlets. Misconduct. Deliberately making false statement before superior knowing it to be false. Jhoot bolna. Proxy registering of attendance. Or abetting in the act of registering attendance of another employee. So this you can see in the recent scenario, it has become quite relevant. So we should not mark attendance on behalf of others. That is known as proxy attendance. Spreading or encouraging casteism, regionalism, and communalism. Abatement or attempt of abatement, which amounts to misconduct. Spreading false rumors is misconduct. Carrying out money lending or other private business without written permission of the company. If company permits, then only you can do it. Habitual indebtedness or insolvency. दिवालिया हो जाना, कर्ज में लदे रहना. Inference or righteous or disorderly, हम पढ़ चुके हैं पहले, repetition है. Writing of anonymous or pseudonymous letters or asserting oneself in writing such letters in respect of company affairs. कंपनी के किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में किसी और के नाम से या गुमनाम लेटर लिखना, न्यूज़पेपर में देना without permission is misconduct. Misuse of any advance or non-compliance with provisions of terms and conditions governing grant of such advance. Temporary advance मिला, उसका हम misuse करें, that is not permitted. So these 40 are misconduct. We have to be very careful because at times we take it very liberally, but no,
they stand against us. Employment of near relatives in the company or firm having business relationship with the company. So it is treated as if we are promoting it, trying to get employment of our relative, son, daughter, etc. in a company with which our business dealings are there, we will be biased to that organization. So it is not permitted unless you take prior permissions. Rule 7 says joining of unlawful association by employee. So any unlawful association, we cannot, many organizations are banned by the government. If we are member to it, then it is a misconduct. We cannot do it. Demonstration and strikes rules 8 says engagement, no employee shall engage himself in or participate in demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relationship with foreign states, public order, decency, morality. So we should not participate in such strikes, which goes against the country, against the organization, against the public interest, against the law of the country, law of the land. Resort to or any way abet any form of strikes. We should not participate. We should not participate in strike. Not we should promote or indict any person or to tell them to participate in such an activity. Rule 9 is about connection with press or radio or television. So without permission, we cannot take part in any radio program, television program, or maybe in a print media. We cannot give any article. We cannot write any article. We should have prior sanction for this, previous sanction of competent authority. Okay. Rule 10 says taking part in political activity. No employee shall be a member of or be otherwise associated with any political party and organization which takes parts in politics, nor shall take part in or subscribe in, aid of, or assist in any other manner any political movement. So we cannot in any way relate to any political activity. No employee shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in election of any legislature or local authority. So any gram panchayat, village panchayat, any kind of election or political activity, we cannot take part. Rule 11, criticism to government or the company. No employee shall in any radio broadcast or telecast through any electronic media or any document published under his name, anonymously, pseudonymously, or in name of other person, or any communication to the press, should not make any statement which has effect of adverse criticism to the policy or government action. So many times people are very vocal on social media and criticize government policy. So it is taken as misconduct. And I've seen many IS officers holding positions like district collectors, DMs. They write against the government policy and they are removed from the positions and transferred to other positions. So it is taken as misconduct. So we should not criticize in a public platform, social media, or any other platform, any government policy. Rule 12, evidence before a committee or any other authority. No employee shall accept with the previous sanction of competent authority give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee, or authority. So we should take prior permission. We may be asked for an evidence, but it should be with prior permission. That is what. But there are exceptions to this rule. Nothing in this rule shall apply to evidence given at any inquiry before an authority appointed by government, parliament, state legislator, or the company itself.
Okay, so if you are asked for this, evidence given in a judicial inquiry, so you don't need such permissions. Evidence given at any departmental inquiry ordered by authorities subordinate to the government. So you have to go. Unauthorized communication of information. So this is about the secrecy, official secrecy. No employee shall accept in accordance with any general or special order of the company or in performance in good faith of his duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or information to any employee or any other person to whom he is not authorized to communicate such document. So this is what you have to maintain the secrecy. Rule 14, inventions. So, an employee who is while in service of the company makes any discovery, invention, modification to the process or method or equipment resulting in improvement of company services, operations, products shall forth communicate back to company. So if you do a process like I've seen in telecom factories, Jabalpur, Group D employee has improved some process and efficiency and wastage. Efficiency was improved, wastage was reduced to a good scale. So, but if you do it, it is not your personal gain or copyright, but it becomes the company's property. Yes. But that person was given the topmost award, that is Ati Visis Sanchar Seva Padak, All India level award he was awarded with. So that is what it becomes the property of the company. Rule 15 is very important and we have to be cautious here, gifts. Okay. Save as otherwise provided in these rules, no employee shall accept or permit any member of his family or any other person accepting on his behalf any gift. So it should not be taken, but there are some exceptions to these. The expression gift shall include free transport, boarding, lodging, other services, or any other pecuniary. So it may not be tangible, it can be intangible service also, but it should not. Okay. An employee shall avoid acceptance of lavish hospitality or frequent hospitality from any individual or firm having official dealing with him. Very clearly it is mentioned here. But we know our customs are there, our religious things are there, so it is permitted, but up to certain extents, like in weddings, anniversaries, funerals, religious functions, where making the gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, employee may accept the gift. But we have to keep an eye on the value of the gift. Rupees 2,000 in case of Group D and Group C category, that is non-executives. Rupees 5,000 in case of Group B up to JG category DGM. Rupees 8,000 in SAG and HAG, GM, CGMs. Rupees 10,000 in case of CMD and Board of Directors, full-time directors. Because other government directors are also there, but this is applicable for Board of Directors, full-time. So this is the limit we have to follow. Rule 16 is about dowry. No employee shall give or take or abet the giving or taking of dowry. So that is misconduct. Demand directly or indirectly from parents or guardian of the bride or bridegroom, as the case may be, any dowry. Rule 17 is about private trade or employment. So being an employee of the company, if we are willing to do private trade or another employment, what the rule position is, it is given here. No employee shall accept the previous sanction of competent authority, engage directly or indirectly in trade or business. So we cannot do it without
It's very difficult to negotiate or undertake any other employment. So we are doing some 8 hours duty here. After this duty, if we are doing another employment, it is not permitted without permission. I think all are filling the Google Sheet. Those who have not yet done it, please fill the Google Sheet. We need that particular information from your end. So kindly fill it. Rule 17A, subletting and vacation of company's accommodation. As if otherwise provided in any other law for the time being in force, no employee shall sublet, lease, or otherwise allow occupation by any other person of company's accommodation which has been allotted to him. As I have given earlier the example, I was allotted a type 4 quarter and I am trying to sublet it. No, it is not permitted. The employee shall, after cancellation of his allotment of company's accommodation, vacate the same within time prescribed by the allotting authority. So we cannot overstay in the company's accommodation. Rule 18 says approaching foreign government for financial assistance. No employee shall approach directly or indirectly a foreign government or foreign organization for financial assistance for visiting a foreign country, attending a course abroad. We cannot. Without permission of the company. So we have to take permission. Rule 19 is about investment, lending, and borrowing. No employee save in ordinary course of business with a bank, UTI, LIC, HDFC, City Industrial Development Corporation, HDFC, firm of standing, borrow money or lend money to otherwise place himself under pecuniary obligation to any person with whom he is likely to have official dealings. So normally we borrow, we lend, or we do the investment, but it should not be done with an organization with which we are having a official dealing, because again, our decisions are biased. We may take some pecuniary advantage and do something which is prejudicial to the interest of the company. Rule 20 is about insolvency and habitual indebtedness. We have seen this is taken as misconduct. Rule 21, as I said earlier, is very important. Movable, immovable, and valuable property. So we know acquiring or disposing properties, permissions are required in certain cases. So no employee except with the previous knowledge of competent authority acquire or dispose any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift, or otherwise, either in his own name or in name of any member of his family. As I said earlier, many vigilance cases are pending or contemplated against the employee, and they have been punished also. So we should take proper permissions. Formats are defined like Form 1 here. Any addition, extension of immovable property, so you have to take the sanction in Form 2, 3, and 5. So these are defined. Okay. In case of transactions of movable property owned or held in his own name or name of family member, the value, see, 1 lakh in case of non-executive, 2 lakhs in case of executive category. This is the limit. Rule 21A, restriction in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transactions with foreigners. So without permission, we cannot indulge into such transactions. No employee except with the previous sanction of the competent authority shall acquire or dispose immovable property situated outside India
by lease mortgage or enter into any transaction with any foreign government, foreign organization, concerned mission, including international organization, for acquisition or disposal of immovable property. So we cannot do it without permission. 21B says dealing with companies' shares, IPOs. Normally in our case, it is not done, but it is already defined that the persons who are having the knowledge of pricing of these IPOs or FPOs, they are having a limited thing that they cannot acquire the shares or IPOs, FPOs beyond the certain limits because they are in knowledge of the pricing of the shares. Rule 22 says canvassing of non-official or other outside influence. For any purpose, transfers, promotions, or anything, we should not bring any political or outside influence on any superior. Rule 23 is also important restrictions regarding marriage. No employee shall enter into a contract marriage with a person having a spouse living. There are certain exceptions to this also. No employee having a spouse living shall enter into a contract marriage with any other person. Provided the board may permit an employee to enter into contract of such marriage, that is referred to clause 1 and 2. If it is satisfied that such marriage is permissible under any law applicable to such employee. So certain religion, certain laws, they permit it. If the law permits it, then only it can be permitted. Rule 24 is about consumption of intoxicating drinks and drugs. So no employee all employee of the company should avoid by law relating to intoxicating drinks or drugs in force in the area and not be under influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty. These two are important. So we have to see the land of law. Rule 25 is vindication of official acts and characters of employees. No employee shall, except with the previous sanction of competent authority, have a recourse to any court or to press for vindication of any official act which has been subject matter of adverse criticism or attack of defamatory character. So we should not do it like we are going to any court or press for some act which we have done as an official duty. And maybe there are some adverse criticism to it. So there is a process of permission even in normal cases of personal interest. We are going to the court, but we first go and apply to the competent authority. If we are not given the decision in due time, then only we can resort to the court. Rule 26 is about classification of service. So we have two categories, executives and non-executives. Rule 27 is about constitution of service. 28 is about the classification of posts. All these are executives and non-executives only in BSNL. Rule 29 is about appointing authority. So there is a schedule for each grade who is the appointing authority. Rule 30 is about suspension. So it says very clearly appointing authority or any authority which is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered by that in behalf of management
by general or special order place an employee under suspension. So anybody cannot, any officer cannot do it. It should be either appointing authority or its subordinate with the order, disciplinary authority, or any authority appointed by the management. In which cases where a disciplinary proceeding is contemplated against an officer or it is pending, suspension is possible. Where in opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the company. So if an employee is acting against the interest of the company, suspension is possible. Or a third case, if the employee has done a criminal offense and he is under investigation or trial by any law or court, then suspension is possible. During suspension, the subsistence allowance, जिसको हम कहते हैं जीवन निर्वाह भत्ता, वो that is permitted. So for that, certain rules are there. The amount of subsistence allowance is in general defined by the law. The amount of subsistence may be increased to 75% of basic pay and allowance. If it is in opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for the reason. So normally it is 50%. But if the suspension is beyond 6 months, it can be enhanced to 75%, or even it can be reduced to 25% also. If suppose the authority thinks that he's not eligible for such a subsistence allowance because maybe he's not coming to the office regularly, he's doing some other business, he's involved in some other employment during suspension period, so it can be reduced to 25% also. Treatment of period of suspension. When the employee under suspension is reinstated, his suspension is revoked, the competent authority may grant him the following pay and allowances for the period of suspension. The employee is exonerated. If the employee is exonerated and not awarded any penalties under Rule 33, full pay. So Rule 33 is very important. It is about penalties. Penalties are of two categories, major and minor. Minor penalties are censure, withholding of promotion, withholding of increment, with or without cumulative effect, recovery from pay, whole or part of pecuniary loss caused by him to the company, reduction to a lower stage in time scale by 1 stage for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect, and not adversely affecting his pension and terminal benefits. These are 5 categories: are minor penalties, major penalties, reduction to a lower stage in time scale for a period, specified period, reduction to a lower time scale, grade or post. So maybe from SDE to JTO, fine. I'm just giving an example. Compulsory retirement is a major penalty. Removal from service, which shall not disqualify for future employment under government. Dismissal of service, which is a disqualification from future employment under government. So this is the difference: removal and dismissal. Removal means he is eligible for employment in some other government organization, but dismissal means now he is not entitled for any further government jobs. So disciplinary authority and appointing authority, as I said, full table is there. For major and minor, there is a
set procedure. So procedure for major and minor penalties are given in 35 and 36. You have to go it. So 37 is about action on the inquiry report, because whenever any disciplinary case is initiated, disciplinary authority appoints an inquiry authority. So who will inquire and submit the report to the disciplinary authority. So that is how communication of orders from disciplinary authority to the charged officer, CO we say. 39 is about common proceedings. Rule 40 is about special procedures in certain cases. Rule 41 defines procedure of concerning officers on deputation from central government or state government or other public undertaking or local authority, because we know we are taking at times persons, officers on deputations. Rule 42 is about employees lent to government, subsidiary company or other public undertaking. We are allowing our staff to go on other organizations. So that is 42. Rule 43 is special provision in respect of DOT staff permanent absorption in BSNL. So many officers, they were recruited by DOT, but they are on permanent absorption in BSNL. So for them, there is some safeguard relating to security of service on dismissal and removal. So you have to take permissions from DOT, then only it can be done. Order against which no appeal lies. So this is important. Rule 44. Any order of inquiring board in course of inquiry under these rules, any order of an interlocutory nature or nature of a step in aid of final disposal of a disciplinary proceedings or any other order passed by inquiry authority. So there are certain things against which no appeal, and 45 against which appeal can be done. There are two different cases. 46 is about appellate authority. This also you will get a detail in the table. Period of limitation of appeal, if any, against any order, if appeal is to be filed, the period is 30 days. You have to remember it. It is important. Form and content of appeal, it is defined in Rule 48. If at all any appeal is to be done. Rule 49 is about withholding of appeal. Rule 50 says how to transmit the appeal. Rule 51, consultation of appeal. Rule 52 defines about the implementation of orders in appeal. 53 about the relaxation of limit, condone delay at times, even in court. So if the authority, appellate authority is convinced due to reason given, it can do the appeal. After appellate authority, you can, if charged officer is not satisfied with the decision of appellate authority, there is another forum which is known as review authority. So he can go for review also. Rule 55 is about retirements on medical ground on attaining the age of superannuation. Both way. Rule 56 about termination. Rule 57 is about orders and notices. 58, repeal in savings.
Rule 60 is about amendments. So time to time, the board, whenever it thinks CDA rules can be amended. And Rule 61 is about disciplinary provisions for retiring employees. So even after retirement, up to a certain duration, this can be initiated. So I think I've tried to cover up maybe in brief as the time permitted. 1 hour session was allotted. So if any specific query is there, you can please ask immediately, quickly, or otherwise I'll close the session and maybe next session will initiate after 5 minutes break. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म को भर दें। आप मेरे ख्याल से भर दिया होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, गूगल फॉर्म जरूर भर दें। Oh yes, this will be shared. This PDF will be shared. The class in charge will share you this PDF. So maybe you are writing mail ID in your Google Sheets. Mail liya hai? So it will be shared here itself. Okay. Thank you. So after 5 minutes break, your session will be resumed. Thanks for patience listening. हाँ थोड़ा एडिक्शन वही चलता मैं चलता हूँ। मैं अपनी क्लास में जाता 13 से 5 मिनट बता रहा है इसीलिए लेफ्ट साइड पे आपकी नहीं राइट साइड। हाँ राइट साइड से तो क्लास करेंगे। मेल करो बिल्ड मैं देखता हूँ बैठा क्या है लेक्चर भी कॉन्टेक्ट करना टेबल वाले के लिए No. गूगल शीट के लिए बोलो।
So good morning. मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हम शुरू करते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। जनरली जितने भी एक्ट्स होते हैं इनकी लैंग्वेज जो होती है बड़ी टिपिकल सी होती है, जो इजीली इंजीनियर्स को समझ में नहीं आती। लीगल लैंग्वेज होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 का है ये। ऑब्लिगेशंस क्या क्या है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की, कवरेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज अंडर ईपीएफ एक्ट एंड ईएसआई एक्ट। ये जो ऊपर के तीन हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के हैं, और नीचे के चार पार्ट जो हैं ये एम्प्लॉय कंपनसेशन के एक्ट के हैं। इसमें हम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट क्या कहता है, किस बारे में है, इसको डिस्कस करेंगे। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, what are the offenses and penalties in the act, and important sections of the act and its provisions. So let me introduce myself. I am Rajesh Kumar Sharma, Sub-Divisional Engineer Civil in the BS Civil faculty of the LTTC. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, and it was amended in the 2017. There are some important sections we will discuss. तो क्या क्या सेक्शंस हैं? सेक्शन 1 कहता है the act extends to whole of India. It applied to, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? किसी भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें पिछले 12 महीने के दौरान किसी भी दिन 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय किए गए थे एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले 12 महीने के दौरान 20 या उससे ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय किए थे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो ये उस पर लागू होता है। उसकी इस एक्ट के अंडर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को पूरी करनी होती हैं। जनरली एक्ट जो है वो लेबर के वेलफेयर के लिए है कि लेबर को हमें क्या क्या देना चाहिए, लेबर की क्या क्या फैसिलिटीज को मिलनी चाहिए, उसके बारे में है। द एक्ट हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू एन एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग कैजुअली और इंटरमिटेंटली। जो कैजुअली काम करती हैं कुछ एस्टेब्लिशमेंट या इंटरमिटेंटली काम करती हैं, उन पर यह लागू नहीं होता। वर्क परफॉर्म्ड इन एन एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू एन इंटरमिटेंट नेचर। और इंटरमिटेंट और कैजुअल क्या नेचर होगी, इसके बारे में ये कहता है कि अगर कोई काम, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने परफॉर्म किया पिछले 12 महीने में, लेकिन उसकी ड्यूरेशन 120 दिन से कम थी, अगर 120 दिन से ज्यादा है तो वो इस एक्ट के परव्यू में आ जाता है। और अगर 120 दिन से कम कोई परफॉर्मेंस हुई, किसी वर्क को परफॉर्म किया किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने, वो इसके परव्यू में नहीं आता। या वो सीजनल करेक्टर का वर्क है, जैसे कहीं फसल कटाई होती है, ये सीजनल करेक्टर हर साल होता है। और अगर वो फसल कटाई या कोई और इस तरह का वर्क किसी भी साल के अंदर पिछले 12 महीने के अंदर 60 दिन से कम काम किया गया, तो इसके परव्यू से बाहर हो जाता है। 60 दिन से ऊपर होगा तो एक्ट के अंदर जो फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करनी है वो ऑब्लिगेशन हो जाती है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो फैसिलिटीज को प्रोवाइड करें।
कुछ स्टेट्स ने अमेंडमेंट की है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और राजस्थान ने अमेंडमेंट किया है, और उन्होंने 20 और मोर, जो हमने 20 से ज्यादा के लेबर का डिस्कशन किया कि 20 से ज्यादा लेबर है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और राजस्थान ने उसको 20 और मोर की जगह 50 और मोर कर दिया, यानी 50 से ज्यादा लेबर के ऊपर लागू होगा। और उत्तराखंड, JNK की जो यूनियन टेरिटरी बनी है, और लद्दाख की, वहाँ 40 और मोर की लेबर की, ये 20 और मोर को 40 और मोर कर दिया गया है। और इसमें से कुछ डेफिनेशंस हैं कि वर्कमैन कौन कहलाता है। एक वर्कमैन इज सेड टू बी कंप्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर in or in connection with the works of an establishment when he is hired for the work by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer। जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर की जाएगी, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या ना पता हो, तो वो सारी वर्कमैन कहलाती है इस एक्ट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन क्या है इस एक्ट के हिसाब से? कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स means a person who undertakes to produce a given result for an establishment through contract labor or who supplies contract labor for any work in an establishment। जो भी उसने एम्प्लॉय, किसी कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जिसको कोई भी एक संस्था या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए, गिवन रिजल्ट के लिए अपॉइंट करते हैं कि आप ये काम हमें करके दीजिए और उसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसके बीच में क्या, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो होता है जो उसको अपॉइंट करता है, और कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो उस काम को एग्जीक्यूट करता है। द कॉन्ट्रैक्टर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन द फुलफिलमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्टर। वर्कमैन हायर्ड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर विदाउट ए वैलिड लाइसेंस and being paid by the management through that contractor are workmen employed by the establishment and not the contract labor। अब यहाँ एक सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी के पास लेबर का लाइसेंस नहीं है, लेबर प्रोवाइड करने का लाइसेंस नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर तो है, लेकिन उसकी जो सैलरी, जो वेजेस पे की जाएंगी, वो एस्टेब्लिशमेंट देगा थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्टर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर जो डिप्लॉय की गई उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कहलाएगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर की जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जब कहलाएगी जब उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होगा। वर्कमैन एंगेज थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर इन एक्सेस। अब लाइसेंस जब इशू किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, उसके अंदर नंबर ऑफ लेबरर्स भी मेंशन किए जाते हैं कि 50 लेबर, 40 लेबर, 45 लेबर आप रख सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर होता है जितने के लिए वो अप्लाई करता है कि मैं इतनी लेबर डिप्लॉय करूंगा, उतनी लेबर के लिए उसको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है, लेकिन किसी भी केस में अगर वो जितने लाइसेंस है उससे ज़्यादा अगर वो एम्प्लॉय करता है लेबर, तो उसको इन्फॉर्म करना होता है लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को, और फिर अपना उसको लाइसेंस में उसको एक्सटेंशन कराना पड़ता है कि भाई इसको इंक्रीज कराने, जो लेबर उसने डिप्लॉय की उसको इंक्रीज करना। अगर उससे ज़्यादा उसने एम्प्लॉय कर लिया तो जो परमिटेड नहीं है अंडर द लाइसेंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेबल। जितने भी अगर उसने अप्लाई कर लिए, मान लिया उसके पास 50 लोगों के लिए लाइसेंस उसने लिया था, उसने 55 कर लिए, तो जो 50 के 50 तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कवर होंगे, लेकिन जो 5 लोग एक्सेस में उसने डिप्लॉय किए वो इसके परव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए वो उतना ही परमिट किया जाता है जितना उसने अप्लाई किया, और जितनी परमिशन उसको है कितने लेबर अप्लाई करने की उतना ही वो कर सकता है। अब डेफिनेशन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी एक संस्था जहाँ पे कोई बिजनेस किया जा रहा हो, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग लगा हो, कुछ बना मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा हो, कोई ऐसा काम किया जा रहा हो, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो सकता है, कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है। तो एस्टेब्लिशमेंट फॉर दिस पर्पज मीन्स एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्यूपेशन इज कैरिड आउट, और एनी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। अब
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंडर कौन कौन से एम्प्लॉय एंटाइटल्ड हैं? द एक्ट कवर्स एवरी वर्कमैन, जितने भी लोग हैं उसके अंदर सभी किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू डिप्लॉय किए गए हैं, तो वो सब उसके अंदर शामिल होते हैं, सबको उनको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग इसके अंदर एक्सक्लूड होते हैं, जो इसके अंदर इसके परव्यू से बाहर हो जाते हैं। वो लोग हैं, पहली क्लास है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। कोई मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है तो वो इसके परव्यू से बाहर है। पर्सन्स एम्प्लॉयड एज सुपरवाइजर्स एंड रिसीविंग वेजेस एज नोटिफाइड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट। अब यहाँ पे ये 500 रुपये पर मंथ लिखा है, लेकिन ये रिवीजन होता रहता है कि गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में एक पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से मिनिमम वेजेस तय करती है कि मिनिमम वेजेस ये होंगे। दिल्ली के कुछ अलग हैं, लखनऊ के कुछ और होंगे, सब अलग अलग स्टेट के अलग अलग मिनिमम वेजेस होते हैं। तो अगर वो सुपरवाइजर की हैसियत से कोई लेबर एम्प्लॉय की गई है और वो मिनिमम वेज से ऊपर की वेजेस पा रहा है तो वो इसके परव्यू से बाहर हो जाता है। एक आउट वर्कर्स होते हैं टू होम मटेरियल्स आर गिवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एट हिज ओन प्रेमिसेस। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे रेगुलर वर्कमैन काम करते हैं, डेली आते हैं, वर्क जो उनको ड्यूटी दी जाती है वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वो तो होते हैं रेगुलर वर्कमैन। या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं तो वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। लेकिन कुछ होते हैं जो, जैसे कि मान लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, कमीजें बनाती है, या हो सकता है जीन्स बनाती हो, तो वहां से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मटेरियल लेके चले जाते हैं और अपने घर पे बैठ के सिलाई करते हैं उनकी शर्ट्स की और जीन्स की। उनको कहते हैं आउट वर्कर, जो वो अपने प्रेमिसेस पे लेके जाते हैं और वहां पे वो काम करते हैं। तो ऐसे लोग वो कहते हैं हम आउट वर्कर्स, और वो भी इस एक्ट के परव्यू से बाहर है। अब इस एक्ट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है? The act is administrated by the central and state governments in their respective jurisdiction. इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स एक एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करती हैं जिसके अंदर सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अंदर इंडस्ट्री के लोग होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग कुछ नॉमिनेट होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं और कुछ गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं। ये सबका रिप्रेजेंटेशन एक एडवाइजरी बोर्ड में होता है। ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है इन केस ऑफ द decision or any grievance of the contract labor. The government also appoints registration office, licensing officers and inspectors for carrying out the provisions of the act. The central and state government shall make their rules for enforcement of the act. गवर्नमेंट की तरफ से जो नुमाइंदे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो होते हैं लाइसेंसिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स। उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ऑफिस बने होते हैं जो लेबर के मैटर्स को डील करते हैं। और उनसे ऊपर होता है एडवाइजरी बोर्ड, जिसके अंदर सभी का लेबर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इंडस्ट्री का भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी होता है। अब आते हैं हम प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये प्रोविजन ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना मना कर सकती है। ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि जहां पे कॉन्ट्रैक्टर लेबर रखना सुटेबल ना लगे, गवर्नमेंट को ना लगे सुटेबल। वो ऐसे हो सकते हैं जैसे कोई सीक्रेसी के कुछ जगह हैं, जैसे हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वहां पे गवर्नमेंट ये चाहे तो कहेगी, क्योंकि वहां से चांसेस हैं कि हमारा कुछ सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं, वहां से हमारे सैटेलाइट्स जाते हैं, हमारे क्या कहते हैं रॉकेट के लिए बनाए जाते हैं, तो कुछ सीक्रेट्स लीक ना हो तो वहां पे मना किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है इस एक्ट के अंदर कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे ट्रेड सीक्रेट्स का कुछ चक्कर हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, कुछ ऐसे सामान बनाते हो, या कोई ऐसा ऐसा कोई बिजनेस उनका हो, ऐसा ऑक्यूपेशन कोई हो जो उस इंडस्ट्री के लिए खतरा हो, या सॉवरेनिटी, हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी के बारे में कोई खतरा हो, तो वहां पे गवर्नमेंट मना कर सकती है कि आप वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखी जाएगी।
या कोई ऐसा हो सकता है कि पेरिनियल और परपेचुअल नेचर हो, सफिशिएंट ड्यूरेशन की, कोई लगातार कोई काम करना है, लगातार चलता है वो, तो वहां पे भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई हम रेगुलर एम्प्लॉय से इसको परफॉर्म कराएंगे, ड्यूटी परफॉर्म कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जैसे हमारे केस में हमारे पास जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स होता है कॉन्ट्रैक्टर। वेंडर तो आजकल लोग वर्ड यूज करने लगे, पहले कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था वर्ड। तो हम उस केस में हम है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखेगा, उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं विद द रजिस्टरिंग ऑफिसर, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फीस है। जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेटिस्फाई हो जाता है तो एक रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है, और वो रजिस्ट्रेशन अगर हम किसी चीज को वायलेट करें, इस एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करें, तो वो कभी भी कैंसिल भी किया जा सकता है। या हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन उसके अंदर लाइसेंस लेने के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ गलत फैक्ट्स को प्रोड्यूस किया है, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कभी भी कैंसिल किया जाता है। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को लेनी होती है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लेबर हायर करूंगा। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास रजिस्ट्रेशन, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकता। या जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिप्लॉय नहीं कर सकता। फेलियर टू ऑब्टेन, अगर मान लिया कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, तो उसके ऊपर पीनल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है, बट डज नॉट गिव ए राइट। लेकिन इससे ये नहीं होता कि अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके वर्कर्स जो हैं वो वहां रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का दावा ठोक दें, ये भी अलाउड नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, उसके ऊपर पीनल एक्शन किया जा सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, और फिर वो केस को उसको डिफेंड करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक लाइसेंस लेंगे। उस लाइसेंस के अंदर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, कुछ जगह पे ये 1 साल है, कुछ जगह पे ये 3 साल है, और उसके अंदर नंबर ऑफ लेबर्स जो रखी जाएंगी एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो भी मेंशन की जाती हैं। और इस लाइसेंस को एक ड्यूरेशन के लिए इशू किया जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम एक्टिविटी है, लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है टाइम टू टाइम। और जिस प्लेस पे, जिस प्रीमिसेस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर की गई है, उस लाइसेंस को वहां पे डिस्प्ले भी करना होगा। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर पहले लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए फीस जो रेगुलर प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो फीस जमा करता है। जब लाइसेंसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा होती है, इसके अंदर फीस भी जमा होती है, और उस लाइसेंस की कॉपी उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करनी होती है जहां पे काम किया जा रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्टर जब तक इसके पास लेबर लाइसेंस ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर नहीं कर सकता, या उसका लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिया गया किसी वजह से, तो भी वो हायर नहीं कर सकता। अब ऑब्लिगेशंस क्या है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर्स की, कि अगर उन्होंने लेबर डिप्लॉय की हुई है, द फॉलोइंग एमिनिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कम से कम अगर 100 से ज्यादा कोई एम्प्लॉय किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो एक या एक से ज्यादा कैंटीन उसको प्रोवाइड करनी है उन लेबरर्स के लिए। sufficiently lighted, well ventilated, clean and comfortable rest rooms। अगर कोई काम रात को भी परफॉर्म किया जा रहा है, और तो उसके लिए उनके लिए रेस्ट रूम भी प्रोवाइड करना एक ऑब्लिगेशन है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर की। आपने जनरली देखा होगा कि हमारे टेलीफोन एक्सचेंजेस में रिटायरिंग रूम और रेस्ट रूम बने हुए हैं। वो इसलिए बने हुए हैं, वहां को रेस्ट करने नहीं आता,
जो दिन में काम करने जा रहा है वो तो काम करने जा रहा है, वर्क परफॉर्म करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा, चला जाएगा। लेकिन जो रात में लोग काम करते हैं, क्योंकि पहले हमारी हमारी जो टेलीफोन एक्सचेंजेस है अभी भी 24 आवर्स वर्क करती हैं, तो जो रात की ड्यूटी के लिए काम करने आते हैं उनके लिए रेस्ट रूम प्रोवाइड करना एक ऑब्लिगेशन है। इसीलिए हमारी सारी टेलीफोन एक्सचेंजेस में जो 24 आवर्स वर्क किया जाता है वहाँ पे रेस्ट रूम बनाए जाते हैं। इवन यहाँ यहाँ तक भी है कि इसका एक आदमी के लिए कितना एरिया होना चाहिए, 1.1 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, उसके अंदर एरिया भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटे से कमरे में आपने 50 आदमी के लिए रेस्ट रूम बना दिया। उसके लिए पूरी गाइडलाइंस है, इस एक्ट के अंदर है, लेकिन हम सिर्फ एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कितना एरिया होना चाहिए। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी है कि इतने टाइम के अंदर ये प्रोवाइड कराना होता है। लेकिन आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है तो बस ओवरव्यू पे ही आप रहिए। सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर एट कन्वीनियंट प्लेसेस, साफ पीने का पानी कन्वीनियंट प्लेसेस पे प्रोवाइड करना है। प्रोविजन ऑफ लैट्रिन, यूरिनल्स एंड वर्किंग फैसिलिटीज। और फर्स्ट एड बॉक्स, फुल्ली इक्विप्ड फर्स्ट एड बॉक्स जो हर किसी को इजीली एक्सेसिबल हो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ये वहाँ प्रोवाइड करना जरूरी है एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्टर को लेबर उसने रखी तो उसको पेमेंट भी करनी है, लेबर को पेमेंट करनी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रेगुलर और टाइमली पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, इलेक्ट्रॉनिक मोड से और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट। लेकिन अगर किसी तरीके से किसी वजह से ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो कैश में भी पेमेंट कर सकता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल कर जाता है, लेबर की पेमेंट नहीं कर पाता किसी वजह से, या शॉर्ट पेमेंट करता है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लेबर की ये तो फुल पेमेंट या जो अनपेड बैलेंस है पेमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देगा। और कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट है वो तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से जानी है, तो उसकी पेमेंट से उसकी जो कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट होगी उसमें से वो रिकवरी बनाएगा। ये आया वेजेस के ऊपर। लेकिन वेजेस में क्या क्या है, वेजेस तो पे करेगा, लेकिन ग्रेचुटी और बोनस विल नॉट बी पेएबल बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सिंस दीज डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो ग्रेचुटी और बोनस की लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नहीं है पेमेंट करने की, सिर्फ वेजेस की करेगा। अब कुछ ऑब्लिगेशंस हैं एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के। The principal employer and the contractor should maintain such registers and records containing particulars of contract labor, nature of work performed, rate of wages paid, and other prescribed particulars. The employer and contractor should also send the prescribed returns to the registering officer or licensing officer. The employer and the contractor should exhibit in the premises of the establishment notices containing hours of the work, wage period, nature of duty and other prescribed particulars। ये को मेंटेन करने होते हैं, टाइम टू टाइम उनको नोटिस मतलब रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर प्रोविडेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, अगर प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल है। और अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ईएसआई के अंडर कवर्ड है तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो भी ईएसआई के अंदर कवर हो जाएगी, उनको एनरोल करना पड़ेगा एज ए मेंबर ऑफ ईएसआई। अब एक प्रोविजन ये है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कई बार कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये दावा ठोक देती है कि मैं तो रेगुलर एम्प्लॉय और मुझे इसके अंदर रेगुलर एम्प्लॉय माना जाए, और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करती है। तो पर्सन हु गेट डिस्प्लेस्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस पीरियड, अगर लाइसेंस उसका खत्म हो गया या लाइसेंस पीरियड खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उस लेबर को ये राइट मिल जाता है कि वो वहां पर रेगुलर एब्जॉर्प्शन के लिए अपनी डिमांड कर सके। ये राइट नहीं है लेबर को, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह ही रहेगी। पेमेंट उसको करी जाएगी, जो वो काम करेगा उसको पेमेंट की जाएगी, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ। अब राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर। अब कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई ऑब्लिगेशंस जो उसको हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, नो और डिस्प्ले करना है या पेमेंट करना है, और वो नहीं करता है, और उस वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है।
तो उस केस में विद इन 30 डेज अपील की जा सकती है अपीलेट अथॉरिटी को कि ये जो हमारा लाइसेंस कैंसिल किया गया इसको वापस इशू किया जाए। तो ये एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के पास राइट है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं कि अपने अपने लाइसेंस को वापस इशू कराने के। अब राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास क्या राइट्स हैं? बेसिकली जो राइट्स एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के पास हैं वो राइट्स तो लेबर के ही हैं, क्योंकि अगर वो अपील कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बेनिफिट, लेबर के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास एक राइट है कि वो सीधा डायरेक्ट इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस, अगर उसको कोई ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ या उसकी पेमेंट वेजेस जो है ना फुल्ली पेड नहीं की गई, तो वो सीधा सेंट्रल और एडवाइजरी बोर्ड के साथ भी सीधा उसके पास अपने आप रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन वहां डाल सकता है। तो ये राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास। अब इस एक्ट के अंदर कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं कि अगर कोई लेबर इंस्पेक्टर आपके साइट पे या आपके प्रेमिसेस पे इंस्पेक्शन के लिए आया और आपने उसको अंदर नहीं घुसने दिया, या उसको जो इंक्वायरी करना चाहता था वेजेस के बारे में या कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था, या कोई रजिस्टर्स ने मांगा कि भाई रजिस्टर दिखाइए या ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, और वो आपने प्रोड्यूस नहीं किया, तो पेनल्टीज हैं कि उसको 3 महीने की, जो ऐसा करने से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से लेबर इंस्पेक्टर को रोकेगा, उसको 3 महीने तक की सजा की जा सकती है, या 500 रुपए का फाइन किया जा सकता है, या दोनों की जा सकती है। और कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए उनको उनकी अवहेलना करते हुए आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो वायलेट करता है किसी कंडीशन को इस एक्ट की, तो भी 3 महीने की सजा या 1,000 रुपए का फाइन किया जा सकता है, या दोनों किए जा सकते हैं। और अगर वो लगातार इस तरह का ऑफेंस किया जा रहा है तो एडिशनल फाइन अप टू ₹100 पर डे ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये एक्ट हमारा खत्म हुआ, ले कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। अब हम नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं, दैट इज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। इसको पहला कहा जाता था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अब ये एक्ट कहाँ लागू होता है? जैसे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी साइट पे, किसी भी प्रेमिसेस पे, किसी बिजनेस को ड्यूटी परफॉर्म करते हुए किसी रेगुलर वर्कमैन या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लग जाती है, और जिसकी वजह से या तो उसकी डेथ हो जाती है या टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए वो डिसेबलमेंट, तो वहां पे उसको कंपनसेशन दिया जाता है। उसको इंजरी, जो उसको चोट लगी, उस डिसेबलमेंट के एक हर्जाने के तौर पे कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन उसमें पहली कंडीशन ये है कि वो जो डिसेबलमेंट है वो 3 दिन से ज्यादा होनी चाहिए। कंपनसेशन कई बार ऐसी कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पे आपको खतरा होता है, एम्प्लॉय को खतरा होता है कि वहां पे उसको टीबी की बीमारी लग जाएगी। कहीं कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब उस काम को करने की वजह से उसको कोई बीमारी लगी, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। उस केसेस में भी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज, उसको जो बीमारी लगती है, वो एक एक्सीडेंट के तौर पे मानी जाती है, और वो भी कंपनसेशन एक्ट के अंडर कवर होती है और उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू है, और इसके अंदर शेड्यूल 2 और 3 में एक लिस्ट दी हुई है कि किस किस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये लागू होता है। ये एक्ट वहां एक तो लागू नहीं होता कैजुअल वर्कर्स पे, जैसे आपके घर में कोई आपने बिजली का स्विच बदलवाने के लिए कोई इलेक्ट्रीशियन बुलाया, या आपका कोई टैप खराब हो गया पानी का, आपने कोई वर्कर बुलाया, थोड़ी देर के लिए आया, 5-10 मिनट के करके वो काम चला गया, तो वो कहते हैं कैजुअल वर्कर्स। तो उस केस में कैजुअल वर्कर्स के ऊपर ये लागू नहीं होता। एक ये लागू नहीं होता आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो फौज के हैं, फौज के लिए अलग प्रोविजंस हैं कि फौज में अगर किसी को इंजरी होती है
कोई चोट लगती है या डिसेबलमेंट होती है तो उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं, या उनके लागू नहीं होता जो कवर्ड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर जो कवर्ड है, उन पे भी ये लागू नहीं होता, बाकी सब पे ये लागू होता है इन केस ऑफ द एक्सीडेंट। अब एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड कौन कौन है कंपनसेशन के? एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर who is engaged for the purpose of employer's business in any such accident. There are three tests to determine whether an accident arising out of and in course of employment. दो तरह के एक्सीडेंट होते हैं, एक तो आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखना होता है कि जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त क्या जो एम्प्लॉय वाकई में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, द एम्प्लॉयज वर इन फैक्ट एम्प्लॉयड ऑन द ड्यूटीज of their employment. The accident occurred at the place where he was performing his duties. Third one is that the immediate act which lead to the accident is so remote from the sphere of his duties and that is to be regarded as nothing but something foreign. तो सिर्फ ये देखने के लिए कि एक्सीडेंट हुआ, पहले तो ये देखा जाएगा कि वो वाकई में ड्यूटी जहाँ एम्प्लॉय किया गया था वो वहीं ड्यूटी कर रहा था, उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ, या कोई कोई और वजह थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उसको डिसेबलमेंट हुआ। टू फाइंड आउट एज वेदर ए वर्कमैन इज कवर्ड अंडर द एक्ट और नॉट, वी हैव टू सी द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं कि वो कवर होगा या नहीं होगा? क्या एम्प्लॉयमेंट उसका कैजुअल नेचर का तो नहीं था? जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन का और प्लम्बर का एक एग्जांपल दिया, कैजुअल नेचर का था तो नहीं कवर होगा। Relation between the employer and the person who is claiming compensation can be determined on the basis of, अब बेसिस क्या क्या है? Whether the workman is having contract of the service, क्या उसको सर्विस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था कोई इसका? Whether the master can only order, जो इसका सुपरवाइजर था जिस लेबर को चोट लगी या किसी वर्कमैन को चोट लगी, तो क्या सिर्फ उसको ये कहा गया था कि ऐसा काम करना है, या ये भी बताया गया था कि वो काम कैसे किया जाना है? क्योंकि वो तो स्किल्ड, कोई जरूरी थोड़ी है कि स्किल्ड लेबर हो, तो उसको बताया गया था कि कैसे किया जाना है। वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कमैन टू ओबे द हिज ऑर्डर्स, और क्या ये बहुत जरूरी था कि जो वर्कमैन को जो आपको उसको ऑर्डर दिया गया वही ओबे करना क्या उसकी जरूरत थी? तो बाध्यता थी उसके ऊपर कि ये वो बिल्कुल जैसे ऑर्डर दिए गए उसी तरह से करेगा। Whether the workman is having any agreement to serve the employer only or employed for his trade or business, तो ये कुछ चीजें देखनी होती हैं। अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है? इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू कमिश्नर्स। यहाँ हर स्टेट में कमिश्नर्स होते हैं फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अपॉइंटेड बाय देम। गवर्नमेंट में आल्सो मेक रूल्स, गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है फॉर प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट। अब कई बार एक्सीडेंट के दौरान या एक्सीडेंट की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ भी हो सकती है, तो जब डेथ होती है तो जो कंपनसेशन दिया जाता है उसके डिपेंडेंट्स को दिया जाता है। तो उसके अंदर डेफिनेशन है, वो डिपेंडेंट्स की जो डेफिनेशन आप लोग सब जानते हैं कि कौन कौन डिपेंडेंट होता है, जो उस एम्प्लॉय जो इसकी डेथ हुई उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो ए विडो, कोई विधवा जो उसकी विधवा है, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, उसका बेटा हो सकता है, और अनमैरिड डॉटर हो सकती है, विडोड मदर, कोई विधवा माँ भी हो सकती है। जो भी लेबर आप समझ सकते हैं कि जितनी भी डिपेंडेंट की जो डेफिनेशंस हैं, टाइम टू टाइम ये रिवाइज होती रहती हैं। कोर्ट भी आजकल आजकल तो जो अवैध बच्चे हैं उनको भी उसका डिपेंडेंट मानते हैं, तो वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। ये सब जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं, जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें वो डेफिनेशन उसी की है कि कौन कौन इसके अंदर कवर होते हैं, जो उसके डिपेंडेंट्स कहे जाते हैं, जो उसके ऊपर आश्रित है। अब आते हैं हम डिसेबलमेंट पे कि इंजरी caused by an accident ordinarily results into the loss of earning capacity। अब डिसेबलमेंट का मतलब ये है कि उसका पैसे कमाने की क्षमता जो कम कर दे, वो एक डिसेबलमेंट। पहले
अगर उसका हाथ बिल्कुल सही है, हाथ पैर बिल्कुल सही है, तो वर्कमैन मान लिया 1,000 रुपये रोज के कमा रहा है, लेकिन अगर उसके हाथ में चोट लग जाए, टूट जाए, कट जाए, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो पैसे कमाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, फिर वो रोज 1,000 रुपये नहीं कमा पाएगा। तो जो ऐसी इंजरी जिसकी वजह से उसकी रिजल्ट होता है लेस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन इज कॉल्ड डिसेबलमेंट। तो उसको कहते हैं हम डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट कैन बी आइदर टोटल और पार्शियल, which can be further subdivided as temporary or permanent. Disablement, whether permanent or temporary, is said to have be total when it incapacitates a worker for all work he was capable of doing at the time of accident, resulting in such disablement. Disablement आपकी टेम्परेरी हो सकती है, किसी मशीन पे काम करते हुए किसी वर्कमैन का, लेबर का या एम्प्लॉय का हाथ टूट गया, प्लास्टर चढ़ा और वो 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाएगा, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी। वो है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। एक होती है परमानेंट डिसेबलमेंट। मान लिया किसी मशीन पे काम करते वक्त कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका हाथ या पैर कट गया, तो वो हाथ और पैर जो कट गया वो दोबारा तो उग नहीं सकता, तो वो हो गई परमानेंट डिसेबलमेंट। अब ये टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। पार्शियल मीन्स एक हाथ में फ्रैक्चर आया, पूरी बॉडी बाकी ठीक है, तो वो कहेंगे पार्शियल। और कोई ऐसी इंजरी हो गई जैसे उसकी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गई जिसकी वजह से वो बेड पे ही आ गया या कोमा में चला गया, तो इट इज कॉल्ड टोटल डिसेबलमेंट। वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, वो अपने अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता। तो ये आप इसको अगर इस हिसाब से देखें तो पता लग जाता है कि डिसेबलमेंट किस तरीके की है। अब आते हैं एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जब कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी प्रेमिसेस में, किसी फैक्ट्री में, किसी साइट पे, तो दो तरीके होते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर मशीन पे काम करते वक्त एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है वहां पे कोई रिस्क इन्वॉल्व हो पहले से ही, और उसको वहां काम करने दिया गया। उस मशीन पे काम करते वक्त जो उसको इंजरी होगी वो कहलाएगी अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और वो उस इंजरी को प्रॉपरली कंपनसेट किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। इसको कहते हैं आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इस सिंपल सा है कि मशीन पे काम करते हुए या किसी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उस ड्यूटी की करने के दौरान ही उसको एक्सीडेंट हुआ और उसको डिसेबलमेंट हुई। एक आता है इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मतलब उस जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो पर्टिकुलर मशीन पे या पर्टिकुलर जगह पे काम नहीं कर रहा था जहां पे उसको डिप्लॉय किया गया था, बल्कि वो वहां से थोड़ा सा दूर था, लेकिन था उसी प्रेमिसेस में या उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान था। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय आया, फैक्ट्री में काम कर रहा था, टी ब्रेक हुआ। अब चाय का ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, तो टी ब्रेक में वो कैंटीन जा रहा था चाय पीने के लिए, और वहीं पे कोई ट्रक बैक हो रहा था, और उस ट्रक बैक होते होते ट्रक ड्राइवर ने देखा नहीं और उसको हिट कर दिया और उसको एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट की वजह से उसको डिसेबलमेंट हो गया। तो एक्सीडेंट तो उसको काम करते वक्त नहीं हुआ, लेकिन टी ब्रेक जो था वो ब्रेक नहीं है, उसका ड्यूटी का पार्ट है। उससे उसकी जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था वो उसमें ब्रेक इन सर्विस नहीं है, वो उसका पार्ट है। लंच ब्रेक में मान लिया, टी ब्रेक में वो चोट लग गई, उसी प्रेमिसेस में लगी, तो वो कंपनसेबल है, क्योंकि अगर वो ड्यूटी नहीं करता तो वहां उसको चोट ही नहीं लगती, ना उसको फैक्ट्री में जाता। अब कई बार ऐसा होता है कि एक गांव में एक कोई एम्प्लॉय रहता है और वो 8 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री में जा रहा है, और सुबह जाते जाते सुबह सुबह 8 बजे उसको जाना है। 8 बजे वो अगर जा रहा है और साइकिल से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी वो कंपनसेबल है, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। क्यों? वो इसलिए दिया जाएगा, बेशक वो फैक्ट्री में पहुंचा ही नहीं था, लेकिन अगर वो वहां ड्यूटी ना कर रहा होता, उसकी ड्यूटी ना होती, तो वो सुबह 8 बजे घर से निकलता ही क्यों वहां जाने के लिए? तो ये सब कमिश्नर डिसाइड करता है, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। जो कमिश्नर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको कंपनसेशन दिया जाना है। और
एम्प्लॉयर ये कोशिश करता है, जिसके पास वो वर्कमैन काम कर रहा होता है, वो ये कोशिश करता है कि कंपनसेशन ना दें। और लेकिन ये डिसीजन जो है, इसको जुडिशियल पावर होती है कमिश्नर के पास, वो जो डिसाइड कर देते हैं वो फाइनल होता है। कंपनसेशन देना है, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, ये कमिश्नर को देखना होता है। एक होता है एविडेंस एक्ट, जिसमें ये प्रूव करना होता है कि एक्सीडेंट ऐसे हुआ, उसने देखा, उसने गवाही दी कि हाँ ये उस मशीन पे काम कर रहा था तब एक्सीडेंट हुआ। लेकिन लेबर कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर वो एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। सिर्फ ये रिश्ता कि वो उसका वर्कमैन था और एक्सीडेंट हुआ और एम्प्लॉयमेंट, कि वो वहां काम कर रहा था और एक्सीडेंट हुआ, बस इतना ही काफी होता है। कोई सबूत या कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी, ऐसा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक फैक्ट्री वर्कर अगर हार्ट का पेशेंट है, जैसे ही वो आता है, सुबह सुबह आता है, सुपरवाइजर इस पे चढ़ जाता है राशन पानी लेके कि तूने कल, तेरे को इतना काम दिया गया था, तू नहीं करके गया, ये नहीं करके गया, वो नहीं करके गया, और उसको डांटना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद ही उस लेबर एम्प्लॉय को हार्ट अटैक आ जाता है। बेशक वो पहले से हार्ट पेशेंट था, लेकिन फिर भी उसको कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि जो उसकी डांट थी, सुपरवाइजर की डांट थी, उसकी वजह से उसकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, ट्रिगर हुई, उसको स्ट्रेस हुआ, इसीलिए उसको कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। अब आते हैं कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट लेबर दोनों ही इसके दायरे में आते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट उनके साथ होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ भी, तो भी उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। बस इतना होगा, क्योंकि फैक्ट्री ओनर या कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये नहीं जानता कि ये किसका आदमी है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को ये साबित करना होगा, ये पहचान करनी होगी कि ये उसका आदमी है, और कॉन्ट्रैक्टर लेबर लेबर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू डिप्लॉय की गई थी, सिर्फ उसको इंडेमनीफाई करना है, और वो भी कंपनसेशन का हकदार होगा। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, इसके अंदर इस एक्ट के अंदर पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी बीमारियां ऑक्यूपेशनल डिजीज में मानी जाएंगी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होती है वो भी एक एक्सीडेंट के तौर पे मानी जाती हैं, और कंपनसेशन के लिए लेबर जो है वो एम्प्लॉयर को देगा, उसके हकदार होती है। कंपनसेशन वेट नॉट पेएबल। अब कंपनसेशन कब कब नहीं दिया जाना, अभी तक हमने डिस्कस किया कि कंपनसेशन दिया जाना है, अब कब नहीं दिया जाना। When disablement is for period of less than 3 days, अगर डिसेबलमेंट 3 दिन से कम है तो कंपनसेशन इज नॉट पेएबल। नंबर 2 है when accident not resulting in death, मतलब एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन, ये वर्कमैन की गलती से हुआ, और जानबूझ के वो जो उसको कहा गया था उसको डिसओबे कर रहा था, उसका कहना मतलब उसको जो ऑर्डर दिए गए थे उस ऑर्डर को डिसओबे कर रहा था, उनकी अवहेलना कर रहा था, लेकिन तब उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा बाय द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर प्रूव करेगा कि वो वाकई में डिसओबीडियंस कर रहा था। और कई बार जैसे हमने ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात की, तो ऐसी बीमारी जो वहां काम करते वक्त नहीं लगी, उस बीमारी के लिए कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। कुछ बीमारियां इसमें मेंशन्ड है एक्ट के अंदर, जो जो कवर होती हैं, अगर उसको कोई अलग बीमारी हो गई तो वो कंपनसेशन के लिए हकदार नहीं है। या एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर कोई केस कर दिया पहले से ही कंपनसेशन का, इससे पहले कि कमिश्नर डिसाइड करता, वो उसको सब्र नहीं हुआ और वो जाके पहले से केस फाइल कर देता है, तो उस केस में भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। फिर जो कोर्ट का फैसला होगा, तो उसने केस किया हुआ है तो कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही उसका डिसीजन होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स। अब कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ, एम्प्लॉय तो कंपनसेशन चाहता था, लेकिन उसने उसको समझा लिया, मालिक ने उसको समझा लिया एम्प्लॉयर ने, और मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन कमिश्नर को किसी तीसरे सोर्स से, किसी तीसरी जगह से ये पता लगा कि वहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था,
उस केस में कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो नोटिस देगा उस एम्प्लॉयर को, उस एस्टेब्लिशमेंट को, ये रजिस्टर्ड नोटिस देगा कि भाई 30 दिन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि मुझे ये पता लगा है कि आपकी फैक्ट्री में या आपके प्रीमिसेस में ये एक्सीडेंट हुआ है। उस केस में 30 दिन के अंदर जो एम्प्लॉयर है उसको उसका जवाब देना है, परिस्थिति बताएगा, डेथ हुई तो डेथ बताएगा, फिर ये बताएगा कि कंपनसेशन दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, दिया जाना है तो कितना दिया जाना है। फिर 30 दिन के अंदर उसको जवाब देगा कमिश्नर को। एक एप्लीकेशन और है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी फैक्ट्री में, किसी प्रीमिसेस में, तो जो उसका एम्प्लॉयर है वो 7 दिन के अंदर एक्सीडेंट की रिपोर्ट कमिश्नर को भेजेगा। जो डेथ डेथ हुई तो डेथ की, या सीरियस बॉडीली इंजरी हुई तो उसकी एक्सीडेंट रिपोर्ट विद इन 7 डेज कमिश्नर को भेजनी होती है। अब आते हैं हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। अब इंजरी तो हो गया, डिसेबलमेंट हो गया, तो कितना मिलेगा कंपनसेशन, कितना मिलेगा? अगर वो एम्प्लॉय मर जाता है, इन केस ऑफ डेथ 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाई द रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर, इन दोनों में से। अब रिलीवेंट फैक्टर क्या है? रिलीवेंट फैक्टर भी एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। जिसकी जितनी एम्प्लॉय की जितनी कम एज होगी उसका रिलीवेंट फैक्टर ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा एज होगी उतना रिलीवेंट फैक्टर कम होता चला जाएगा। ये सब एक्ट के अंदर मेंशन किए गए। तो अगर मर जाता है तो 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर। सेकेंड केस आता है इन केस ऑफ द टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट, यानी टोटल भी है परमानेंट भी है, तो 60% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,40,000 विच एवर इज मोर। अब इसमें रिलीवेंट फैक्टर के लिए एक एग्जांपल दिया है कि रिलीवेंट फैक्टर अगर कोई 25 साल का एम्प्लॉय है तो उसका रिलीवेंट फैक्टर है 216.91, और अगर वही एम्प्लॉय 40 साल की एज का है, जो लास्ट बर्थडे पे जो उसकी एज थी अगर 40 साल थी, तो उसका रिलीवेंट फैक्टर जो है 184.17 हो जाता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसका कंपनसेशन का अमाउंट कम होता जाता है। अगला केस आता है इन केस ऑफ द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट लॉस इन केस ऑफ द इंजरी स्पेसिफाइड अंडर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1। इसके अंदर शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है कि इंजरी किस किस तरह की हो सकती है। परमानेंट पार्शियल है, मतलब परमानेंट तो है लेकिन पार्शियल है, और वो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। तो जो उसकी इंजरी, जो अमाउंट हमने अभी में डिस्कस किया यानी 1,40,000, उसकी परसेंटेज तय हो जाएगी जिस हिसाब से उसको इंजरी हुई है, जिसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जो है इसकी, जो पैसा कमाने की क्षमता कम हुई है, उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज उसको कंपनसेशन के तौर पे दी जाएगी। अब अगला केस आता है कि शेड्यूल 1 में मेंशन ही नहीं है वो इंजरी, तो उस केस में जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, वो डॉक्टर बताएगा कि इसको इतने परसेंट इंजरी हुई और इतने परसेंट डिसेबलमेंट हो गई है। उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज जो 1,40,000 हमने अभी डिस्कस की थी, उसकी परसेंटेज उस हिसाब से तय होगी जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के हिसाब से कि कितनी डिसेबलमेंट इसको हो गई। अगला केस आता है इन केस ऑफ द टेम्परेरी डिसेबलमेंट। टेम्परेरी है, टोटल और पार्शियल हो सकती है, तो उसको हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम ऑफ हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्वलेंट टू 25% ऑफ द मंथली वेज, यानी जितना मंथली वेज उसको मिलता था उसका 25% पैसा उसको हर महीने दिया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट, जब तक उसको डिसेबलमेंट रहेगी, या 5 साल, ये मैक्सिमम है 5 साल। 5 साल तक, अगर वो 3 साल में ठीक हो गया तो 3 साल तक होगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है, डिसेबलमेंट टेम्परेरी है, ठीक हो सकती है। तो अगर ठीक हो गई तो वहीं रुक जाएगा। तो जितना पैसा वो कमा रहा था मंथली वेज, तो उसका 25% पैसा उसको इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया जाता रहता है, मैक्सिमम अप टू 5 साल तक। अब वेजेस में, क्योंकि इसमें 25% पैसा देना है उसको मंथली वेज का, तो वेजेस फॉर दिस एक्ट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट एंड और परक्विजिट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ मनी बट एक्सक्लूड्स ट्रेवलिंग अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन और पीएफ. It includes bonus, night out allowance, DA, gratuity,
3 quarter food allowance etc. also. इसके अलावा जो खर्चा उसकी दवाइयों पे होगा, इलाज पे जो खर्चा होगा, वो भी एम्प्लॉयर को देना होता है। और अगर डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अब 2500, ये 5000 हो गया है। ये उसको जो उसके क्रियाक्रम का जो खर्चा है वो भी एम्प्लॉयर को देना होता है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। कंपनसेशन देगा, उसका इलाज का पैसा देगा, और अगर डेथ हो गई तो उसके क्रियाक्रम का भी खर्चा एम्प्लॉयर को देना होता है। अब आते हैं जी टाइम एट मोड ऑफ पेमेंट। अब कमिश्नर ने कोई कंपनसेशन डिसाइड कर दिया, किसी भी अमाउंट का कर दिया जो उसको रीजनेबल लगा, जो फार्मूले दिए हुए हैं उसके हिसाब से कि भाई इतना कंपनसेशन उसका बनता है, तो 1 महीने के अंदर एम्प्लॉयर को ये कमिश्नर के पास जमा कराना होता है। और अगर नहीं जमा कराता है 1 महीने के अंदर तो 12% का इंटरेस्ट उसके ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन 12% का इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन अगर कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वो डिले क्यों कर रहा है, 1 महीने के अंदर उसको पैसा देना है कंपनसेशन का, अगर वो नहीं दे रहा है और कोई रीजन भी नहीं है, जस्टिफाइड रीजन भी नहीं है, तो जो कमिश्नर ने जो कंपनसेशन डिसाइड किया था उसको 50% तक इंक्रीज किया जा सकता है, यानी उस कंपनसेशन अमाउंट को 1.5 गुना किया जा सकता है। 50% इंक्रीज का मतलब 1.5 गुना तक किया जा सकता है अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है डिले का। हाफ मंथली पेमेंट जो हमने डिस्कस किया, हाफ मंथली इंस्टॉलमेंट जो देते हैं उसको लमसम में भी पेमेंट किया जा सकता है, मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कमिश्नर के पास पावर है कि अगर कोई कहता है कि ये आप मेरे महीने में इतने पैसे से मेरा काम चलता, मुझे इकट्ठा दिलवा दो, तो इकट्ठा भी दिया जा सकता है। कंपनसेशन टू बी डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर, जो कंपनसेशन जो भी डिसाइड होता है वो कमिश्नर के पास जमा होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय को या उसके डिपेंडेंट्स को नहीं दिया जाता। जब एक एम्प्लॉयर ने कमिश्नर के पास पैसा जमा करा दिया कंपनसेशन का, तो उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसकी जो रिसिप्ट होती है वही काफी होती है। फिर कमिश्नर अगर वो एम्प्लॉय जिंदा है तो डायरेक्ट उसको देता है, या अगर वो एक्सपायर कर गया, डेथ हो गई उसकी, तो उसके डिपेंडेंट्स को बांटता है। और वो प्रोपोर्शन किसको कितना पैसा देगा ये कमिश्नर के ऊपर है, जिसको वो उचित लगता है। कि अगर मान लिया 4 उसके पास डिपेंडेंट्स थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सबको इक्वली देगा, वो डिसाइड करेगा कमिश्नर कि किसको कितना कंपनसेशन देना है। अब आते हैं, कई बार ऐसा केस हो जाता है कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ और एम्प्लॉय कंपनसेशन चाहता है लेकिन एम्प्लॉयर देने को तैयार नहीं। एम्प्लॉय को तो ये लगता है कि मुझे चोट लगी, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर उसको रफा दफा करने के चक्कर में है। तो उस केस में एम्प्लॉय की ये ड्यूटी बनती है कि वो पहले नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट देगा, कमिश्नर को भेजेगा और उस एम्प्लॉयर को भेजेगा और बताएगा कि मेरा नाम ये है और मेरे को इसी तरीके से इंजरी हुई। या उसका कोई डिपेंडेंट भी ये कर सकता है कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, और एक नोटिस सर्व करेगा पर्सनली या रजिस्टर्ड पोस्ट से, जो एक कॉपी उसकी कमिश्नर को देगा और एक कॉपी एस्टेब्लिशमेंट को देगा, जिसके ऊपर वो कंपनसेशन क्लेम कर रहा है। फिर उसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ क्लेम्स। नो क्लेम फॉर compensation shall be entered unless the notice of accident in the prescribed manner has been given by the workman, except in following cases। पहले तो उसको नोटिस देना है, लेकिन कुछ केसेस में नोटिस की कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है। वो क्या है? फर्स्ट वन इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन मर गया। इन केस ऑफ द एम्प्लॉयर हैड नॉलेज ऑफ द एक्सीडेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्स और एट अबाउट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। In case of failure to give notice or prefer claim was due to sufficient cause। और उसके बाद 2 साल होते हैं, 2 साल के अंदर वो अपना क्लेम फाइल कर सकता है। The case must be preferred within 2 years from the occurrence of the accident, from the date or from the date of death, or it must be preceded by a notice of the accident। Second is the claimant employee must present himself for medical examinations
सो रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ये कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं भाई चोट लगी तेरे को, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आ, और या मैं अपने डॉक्टर से इस बात का चेकअप कराऊंगा कि तेरे को चोट लगी थी या तेरे को डिसेबलमेंट हुई थी। तो उस केस में उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा डॉक्टर के सामने, ये दिखाना पड़ेगा कि उसको डिसेबलमेंट हुई है। लेकिन अगर वो नहीं भी पेश होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा इस बेस पे। अब आते हैं सर अटैचमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनसेशन मान लिया कमिश्नर ने डिक्लेयर कर दिया कि 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाता है इसको, लेकिन साथ में एम्प्लॉयर ये कहता है कि हाँ ठीक है सर, मैं 2 लाख रुपए इसका कंपनसेशन बनता है और मैं इसको देता हूँ, लेकिन इसने तो मेरे से पहले ही 2.5 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, तो मैं उसमें एडजस्ट कर देता हूँ। ऐसा करना इस एक्ट के हिसाब से मना है, प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मना है। कंपनसेशन पेएबल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी अटैच्ड, चार्ज और पास्ड ऑन टू एनी पर्सन अदर देन द वर्कमैन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नॉर इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर क्लेम। तो ये कहीं और एडजस्ट नहीं किया जा सकता या किसी और को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ जो वर्कमैन है अगर वो जिंदा है तो वर्कमैन को या उसके डिपेंडेंट्स को ही दिया जाएगा। अब इसके हिसाब से कुछ कंपनसेशन के जो एनुअल रिटर्न्स जमा करने होते हैं, द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिटर्न स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ इंजरीज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच कंपनसेशन हैज बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में कितनी इंजरी हुई और कितना कंपनसेशन दिया गया है, सारे पर्टिकुलर्स उसको रिटर्न्स में जमा करने होते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर हम डिस्कस कर चुके कि एक्सीडेंट रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर देनी होती है, और अगर कमिश्नर नोटिस इशू करता है तो 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना होता है। एनुअल रिटर्न्स जो जमा करने हैं उसको स्पेसिफाइंग जो नंबर ऑफ इंजरीज और कितना कंपनसेशन दिया गया, ये ऑब्लिगेशंस हैं एम्प्लॉयर के ऊपर। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन का क्लेम फाइल करता है तो सबसे पहले है उसको एक नोटिस देना है टू द कमिश्नर एंड एम्प्लॉयर, और विद इन सच टाइम एज सून एज इट प्रैक्टिकेबल फॉर हिम, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट होना है। तो क्या एम्प्लॉयर कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं भाई आपको इंजरी हुई या डिसेबलमेंट हुई, तो उस केस में उसको डॉक्टर के सामने पेश भी होना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि अब ये राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, अब कंपनसेशन डिसाइड हो गया और एम्प्लॉय को ये लगा कि यार मेरे को 2 लाख रुपए कंपनसेशन कमिश्नर ने दिया, मेरा तो 3 लाख बनता था, तो उस केस में ये उनके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है उस कंपनसेशन का जो डिक्लेरेशन हुआ कि इतना कंपनसेशन बनता है, तो वो हाई कोर्ट में सीधा अपील कर सकता है, क्योंकि कमिश्नर के पास खुद में अपने आप में एक जुडिशियल पावर होती है। और हाफ मंथली पेमेंट जो है उनको कंडीशन चेंज हो गई है तो उसको लमसम में करवाना, कन्वर्ट कराने के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर एम्प्लॉयर जिसको कंपनसेशन देना था उसको भी ये लगता है कि यार कमिश्नर ने एम्प्लॉय कंपनसेशन ज्यादा दे दिया और वो अपील करना चाहता है, तो वो भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उसको सारा पैसा कंपनसेशन का पहले कमिश्नर के पास जमा कराना पड़ेगा, तब वो अपील में जा सकता है। और ये अपील एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरफ से दोनों की जो है 60 दिन के अंदर दाखिल की जा सकती है हाई कोर्ट में। अब आते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या क्या है। बिना किसी कारण के कंपनसेशन के पेमेंट को डिले करना, 1 महीने से ज्यादा है, 1 महीने का टाइम तो है, 1 महीने के अंदर जमा करना है, और अगर 1 महीने से ज्यादा पीरियड में उसको डिले करता है तो उसको 1.5 गुना किया जा सकता है और 12% का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है इन एडिशन। और एक फाइन शेल नॉट बी लेस देन 50,000 से 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। किस किस केसेस में, टू फेलियर टू मेंटेन ए नोटिस बुक, नोटिस बुक नहीं बनाई तो 50 से 1 लाख के बीच में कभी भी उसको कितना भी फाइन उसको इम्पोज किया जा सकता है। स्टेटमेंट फेटल एक्सीडेंट का नहीं दिया, उस केस में भी किया जा सकता है ये फाइन। एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा नहीं की, उसके केस में भी किया जा सकता है। एनुअल रिटर्न्स जमा नहीं की, और
एम्प्लॉय को उसके राइट्स भी नहीं बताए। आजकल एक कंडीशन ये है कि जब कोई आप किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो उसको बताएंगे कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट यू आर यू हैव द राइट्स टू फॉर सच सच कंपनसेशन। उसको ये पहले से इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसा अगर कुछ हुआ तो आपको ये कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये कुछ ऑफेंस एंड पेनल्टीज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको हम डिस्कस कर ही चुके हैं तो ज़्यादा उसके लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ ये टॉपिक मेरा खत्म होता है। आप इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। So all are requesting to share these. So I will share in the PDF. I will share the PDF with the training coordinators. तो मैं PDF इनको दे दूंगा जो यहाँ ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहे हैं, बिकॉज आई एम ए गेस्ट फैकल्टी हियर। तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको शायद शेयर कर देंगे कि मेरे पास डायरेक्ट तो आपके पास शेयर करने का कोई ऐसा नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं इनको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कोई आपके पास और पॉइंट हो तो आप अपना माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। और अब 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, तो प्लीज रिमेन ज्वाइंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई कंक्लूड माई सेशन।
Hello? Hello, are you getting my sound? Hello? Are you getting my sound? Please make your mic on and response. No, no, on mic you response, please. So that I can hear you. One a communication. Okay, just. Okay, okay, okay. Okay, if you have any doubt, you can convey in the chat. Let us start the session. Are you getting my sound? Just give me in the chat. I'm audible to you. Okay, okay. Let us start the topic. The topic is energy conservation and fire safety. Energy conservation and fire safety. Right? So, why we needed the energy conservation? What is the need of it? Because the cost of energy is increasing day by day, and for saving the energy, regarding cost, regarding pollution, regarding dependency, we need energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन में होता क्या है, कैसे करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन? पहले ये जाने कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का पहला अर्थ है एनर्जी को बचाना, टू सेव द एनर्जी। कैसे सेव करेंगे एनर्जी को? हम अपने यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। जैसे मान लिया कि मैं एक रूम में हूं और पढ़ने के लिए लाइट की जो रिक्वायरमेंट है 200 लक्स अगर है और लाइट 400 लक्स आ रहा है, तो हम अपने लाइट रिक्वायरमेंट को घटा देंगे, लाइट ट्यूब्स को घटा देंगे। अगर हमारे पास 4 ट्यूब हैं और 100 लक्स अगर सारे ट्यूब दे रहे हैं, तो 2 ट्यूब हम बुझा देंगे और 2 ट्यूब्स ही ऑन रखेंगे। हमको 2 लक्स मिलेगा, 200 लक्स मिलेगा और हमारी नीड भी उतनी ही है, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने 2 ट्यूब को बुझा करके एनर्जी सेविंग कर लिया। तो दूसरा एक और तरीका हो सकता था एनर्जी सेविंग का। वो क्या हो सकता था कि हम अगर मेरे पास 4 ट्यूब है, हम 4 में 3 ट्यूब भी बुझा सकते थे, 100 लक्स में ही काम चलाते। लेकिन ये लाइट एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट है लक्स का वो 200 लक्स होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमको अपने रिक्वायरमेंट में कोई कमी नहीं करनी है। हमको जितना चाहिए, जितनी जरूरत है, उतना चीज हमें मिलना चाहिए। उसके बाद जो कंजर्वेशन हो, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि ऐसा नहीं कि हम अपने काम को बंद कर दें, अपने काम को मिनिमाइज कर दें और एनर्जी कंजर्व करें। दैट इज नॉट एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना है और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन करना है, पहला चीज। दूसरा चीज एनर्जी एफिशिएंसी। पहला तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा होता है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमारा सब कुछ वही रहेगा, हम
जो इक्विपमेंट यूज करेंगे वो एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करेंगे। जैसे पहले हम लोग पुराने समय में इनकैंडिसेंट लाइट इस्तेमाल करते थे, जो 100 वाट का आता था, 10-12 रुपए का आता था। उसके बाद हम लोगों ने CFL इस्तेमाल किया, आज हम LED इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। हम लोग इक्विपमेंट को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तीसरा, एनर्जी कंजर्वेशन का पर्पज क्या है? जितने वाटेज हम खर्च करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी हमारा पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द पॉल्यूशन। तो हम अगर हम अपने कंजम्पशन को कम करेंगे, अपने एनर्जी कंजम्पशन को कम करेंगे, दैट मीन्स वी आर मिनिमाइजिंग द कार्बन कंट्रीब्यूशन टू द एटमॉस्फेयर। तो ये 3 बड़े मायने हैं एनर्जी कंजर्वेशन के। क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे? बहुत तरह का होता है। आप लोग एक्सचेंज में होंगे, जैसे किसी एक्सचेंज का कंट्रैक्ट डिमांड होता है। जैसे 100 किलोवाट का कंट्रैक्ट डिमांड है। अगर 100 किलोवाट का कंट्रैक्ट डिमांड है और अगर हम 50 किलोवाट ही यूज कर रहे हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट विल बी चार्ज ऑन कंट्रैक्ट डिमांड ऑन 100 किलोवाट। दैट मीन्स if we are using less energy than the contract demand, in that condition also we have to pay on contract demand, so we have to minimize। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, शेयर तो मैंने किया। एक उधर की आवाज लाने की क्या नहीं, वो तो कर दीजिए बाकी, ताकि आवाज आता रहे। नहीं करने मुझे कम्युनिकेशन होता है बस। ओके, सो हाउ टू कंज्यूम द एनर्जी। पहला हम पॉइंट कह सकते हैं लक्स। लाइट में लक्स, लक्स क्या है? दैट इज द लूमेन पर स्क्वायर मीटर। जितनी लाइट हमारे पर स्क्वायर मीटर में आ रही है इसको लक्स बोलते हैं। और हमारा लक्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए अलग अलग होता है। फॉर जनरल पर्पज 150 लक्स इज इनफ फॉर रीडिंग एंड वर्क। 200 lux is enough for in our switch room area। 400 lux is enough। तो हम अपने लक्स के अनुसार लाइट को एडजस्ट करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अपने कंटेक्ट डिमांड को घटा करके एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? हमारे किसी बिलिंग पीरियड में, जैसे 1 महीने का अगर बिलिंग पीरियड है तो 1 महीने के बिलिंग पीरियड में जो हाईएस्ट डिमांड जाता है वो मैक्सिमम डिमांड होता है। और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है। तो हम अपने मैक्सिमम डिमांड को कम करके भी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। टाइप ऑफ टैरिफ, जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं वो जनरली छोटे एक्सचेंज के लिए 2 तरह के कनेक्शन लेते हैं, NDS1 एंड DS2। नॉन डोमेस्टिक सप्लाई 1, नॉन डोमेस्टिक सप्लाई 2। जनरली NDS1 का जो टैरिफ होता है 30 रुपये पर किलोवाट होता है। NDS2 का टैरिफ 180 रुपये पर किलोवाट होता है। यानी कि करीब करीब 150 रुपये का डिफरेंस होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जहां हमारी NDS1 का रिक्वायरमेंट है वहां NDS2 कनेक्शन न हो। ऐसा बहुत जगह BSNL में है जहां पर हमारा NDS1 कनेक्शन लेने से काम चल सकता है, वहां पर NDS2 कनेक्शन लिया हुआ है। तो इस चीज को डिसाइड करके, तय करके, टैरिफ को चेंज करके हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ये पावर फैक्टर क्या होता है?
पावर फैक्टर क्या होता है? जैसे हमने पंखे को पावर दिया, 100% पावर दिया, पंखा घूम रहा, फैन इज रनिंग, लेकिन जब हम कुछ देर बाद पंखे को टच करेंगे तो पंखा गर्म मिलेगा। लेकिन मैंने जो पावर दिया था पंखे को चलने के लिए, वो घूमने के लिए दिया था, पंखे को चलने के लिए दिया था, गर्म होने के लिए नहीं दिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा पावर दो तरीके से कंज्यूम हो रहा है। सम पार्ट ऑफ द पावर इज यूजिंग फॉर यूजफुल वर्क, कुछ हमारे यूजफुल वर्क में जा रहा है, पंखे को घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए, और कुछ पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है यूजलेस वर्क के लिए, पंखा गर्म हो रहा है उससे। तो जो हमारा यूजलेस वर्क है वो हमारा लॉसेस है, जो यूजफुल वर्क है वो हमारा यूज है। तो अगर किसी का पावर फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का पावर फैक्टर अगर 0.8 है, इसका मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग 80% ऑफ पावर एंड 20% ऑफ पावर इज बीइंग लॉस्ट। तो हम पावर फैक्टर को जितना ज्यादा अच्छा रखेंगे उतना हमारा यूजफुल पावर ज्यादा होगा और हमारा लॉसेस घटेगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड पावर फैक्टर that is 0.8, and in BSNL we are maintaining power factor 0.95 and above, 0.95 and above we are maintaining in BSNL। इसका मतलब क्या है कि हमारा लॉसेस कम से कम है। तो हम अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके अपने लॉसेस को घटा सकते हैं और एनर्जी को भी कम कर सकते हैं, कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूव करने से और क्या क्या फायदा होता है? पहला फायदा ये हुआ कि हमारा लॉसेस कम हो गया, हमारा यूजफुल पावर ज्यादा हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो भी पावर लॉस हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग द इक्विपमेंट लाइफ। पंखा अगर गर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ को कम करेगा, यानी कि हम अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो हम अपने इक्विपमेंट के लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। ओके, देन ओके, सो एंड पावर, if we are having the less power factor, less than 0.8, that means we are having poor power factor, that means we are having more losses. More losses means what? It is national losses. In that condition, some electricity board of some states, they make penalty. So for reducing our penalty, for minimizing our penalty, for minimizing our losses, we have to improve the power factor. And by monitoring the electricity bill, because there sometimes there are some excess billing, some wrong billing. So by monitoring of electricity bill, we can also conserve the energy. And right now we are using it in 80% cases conventional power. Conventional power means what? Thermal power, tidal power, the power which are conventional. So our dependency is more than on conventional power. And conventional power में क्या है? जैसे thermal है, we are dependent on coal and coal is limited. तो हमारा कोयला अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा ये पावर जो है प्रोडक्शन ये भी खत्म हो जाएगा। In that condition, we have to search any alternate source of power so we can shift from conventional power to non-conventional power, that is solar power or wind power. In now, see, for conserving the energy, we have to make the energy management. What is energy management? That is the judicious and effective use of energy to maximize profit, minimize cost, and enhance competitive position. The main target, maximize the profit. If we will reduce the energy cost,
Naturally, our profit will be maximized, minimizing the energy cost and competitive position, enhancing the competitive position. These energy management incorporated into the safety quality under ISO 9000 and ISO 14001. So, what is the need of energy management? The 4 vital requirements for a successful energy management, that is the total support of top management. If your top management will not support you, then you will not be success to conserve the energy. So your top management should be convinced that the energy management and energy conservation is essential, and well-charted strategy plan. You have to make the plan for saving the energy, and you have to monitor the system, and you have to have adequate technical ability. Because without having technical ability or a skill, you cannot understand the energy conservation, and that will be problem. So you have to have technical ability also. So an organization seeking financial returns from superior energy management continuously strive to improve their energy performance. These are the steps of energy management system, how to conserve the energy. First, you have to make the commitment, because you cannot do any work without making the commitment. Commitment is the very first effort for any work. So you have to make the commitment. And second step, assess the performance. Who will do it? You have to find out the people who जो हर एक काम हर एक आदमी नहीं कर सकता है ना। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। हम अगर मछली को बोलेंगे कि भाई तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ सकता है। मछली पानी में तैरने के लिए कंफर्टेबल है, पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर कंफर्टेबल है। तो हमें हर एक आदमी, कोई भी आदमी खराब या अच्छा नहीं होता है। हर आदमी का अलग अलग एक एरिया होता है जिसमें वो बेस्ट होता है, और कुछ अदर एरिया में वो वर्स्ट होता है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई हु आर कंफर्टेबल फॉर द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन। हमें परफॉर्मेंस देखना होगा। परफॉर्मेंस देखने के तरीके होते हैं। नॉलेज टेस्ट, हमें कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ ओरल टेस्ट कर सकते हैं कि भाई किनका ज्यादा नॉलेज है, नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। स्किल टेस्ट, कुछ उनको टास्क असाइन कर सकते हैं, वी कैन असाइन द टास्क फॉर परफॉर्मिंग। एंड एटीट्यूड टेस्ट, उनको कुछ टारगेट दे सकते हैं, यू हैव टू कंजर्व दैट मच एनर्जी विद इन दिस मंथ। कुछ एनर्जी फिक्स कर कुछ टारगेट फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम परफॉर्मेंस टेस्ट करके कुछ टीम बना सकते हैं। wherever we are working in the organization, we can make the team and set the goal, because without having the goal we cannot do anything. Goal, what is the goal? That is the target with time. Target without time, that is not goal. So we have to make the goal. We have in BSNL, what is the goal regarding energy conservation? 20% energy conservation we have to do each year, which compared to previous year energy used. जितने भी एनर्जी हमने प्रीवियस ईयर यूज किया था, उसमें 20% एनर्जी कंजम्पशन को हमें करंट ईयर में करना है। दैट इज द गोल। नाउ फॉर achieving the goal, we have to create the action plan. We have to create the action plan, then implement the action plan, because without implementing the action plan, the plan is in vain, and we have to evaluate the progress, whatever we have done, and recognize the achievement. The person who has done better in the energy conservation, we have to recognize also. We have to give some award, like man of the month, man of the energy, like that. At some appreciation letter. At least if we cannot do anything, we can say the word thank you, well done, like that.
we can appreciate the people who are making energy conservation. So for energy conservation, government has made Energy Conservation Act 2001. Note down, Energy Conservation Act 2001. Yeah. The purpose of Energy Conservation Act to conserve the energy. So energy conservation, already I discussed, by using the timer. Suppose we are having the light in campus. So that light is required after 6 p.m. in evening and up to 6 a.m. morning. So we can have a timer, and with the control of timer, we can conserve the energy by using the energy efficient light like LED light. We can conserve the energy. Promotion of energy efficiency will contribute to energy conservation, and it's therefore an integral part of energy conservation promotional policy. So note down the full form of CFL, that is compact fluorescent lamp. Compact fluorescent lamp. जो हम previously we were using the incandescent lamp. In compared to that incandescent lamp, the pollution, the carbon dioxide produced by CFL is 1/4. And right now we are using LED. Note down the full form. Light emitting diode. LED. So see the picture, that is very important. For the same light output, incandescent lamp of 60 kilowatt producing 65 grams CO2 per hour, 15 watt of CFL producing 16 gram of per hour, and 7 watt of LED producing 7.5 gram per hour. So see, for the same output, same light output, that means all are producing the same lux but consuming different watt. For the same lux output, 7 watt LED is sufficient in compared to incandescent lamp 60 watt. So it is consuming less power and also emitting less CO2, that is 7.5 gram per hour. Note down the carbon emission from LED, that is 7.5 gram per hour. The carbon emission from CFL, that is 16 gram per hour. Carbon emission from incandescent lamp, that is 65 gram per hour. So being energy efficiency means using less energy to achieve the same output. Note down this word. It is very, very important. Your output should be same. For maintaining the same output, for maintaining the same requirement, then you have to conserve the energy. So energy efficiency means what? Using less energy to achieve the same output. What is the purpose of this energy efficiency? The very first purpose, reduce energy bill. Yes, that is the very first purpose. Then protecting the environment, because if you are consuming the less energy, that means you are contributing less carbon dioxide to environment. That means you are protecting the environment and enhancing industry energy productivity, better manage energy demand, contribute to a competitive energy market. So what are the benefit of energy efficiency? You are contributing less greenhouse gases, that is the CO2 gases, and economic. If you are using energy efficiency, then your consumption will be reduced, and in that condition, that will be economic. And utility system benefit. Energy efficiency can provide long-term benefit by lowering overall electrical demand. Greenhouse effect, that is the effect, is a process that occurs when gases in Earth atmosphere trap the sun heats. This process makes Earth
much warmer than it would be without an atmosphere. So the benefit of the energy efficiency towards industry, what are the benefits? Reduce energy bill, increase competitiveness, increase productivity, improved quality, and increased profit. What are the benefit of the nation? Yes, reduce energy imports, avoid costs, can be used for poverty introduction, conservation of limited resources, and improved energy security. And for global benefit, reduced greenhouse gases and other emission, and maintain a sustainable environment. So, regarding energy conservation, there is a organization, BEE, Bureau of Energy Efficiency. They are making some star rating, 1 to 5 star. What? Note down. What are the star rating? What are the level of star rating? From 1 star to 5 star. 5-star rating is the highest rating for the most efficient equipment. Note down, 5-star rating is the highest rating for the most efficient equipment. Now, I'm coming to the fire safety. What is fire safety? What is fire safety? We have to prevent fire before everything is afire. Fire safety is very much needed. Otherwise, it may. So, for protection the fire, we have to approach in 2 ways. First is the passive fire protection measure, and second is the active fire protection measure. What is passive fire protection measure? Passive fire protection measure का मतलब क्या है? वे जब आग नहीं लगी है तब हमने जो अप्रोच लिया, हमने जो काम किया, दैट इज पैसिव फायर प्रोटेक्शन मेजर. हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उस कंडीशन में भी हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं. इसका पर्पज क्या है? कि हमें फ्यूचर में भी स्वस्थ रहना है. आज तो स्वस्थ है ही, फ्यूचर में भी स्वस्थ रहना है. सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड पैसिव. पैसिव. व्हाट इज एक्टिव? हम स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, और डॉक्टर कहता है कि भाई मॉर्निंग वॉक जरूरी है, करना है, तो फोर्सफुली हम मॉर्निंग वॉक करते हैं. दैट इज एक्टिव मेजर. फायर की कंडीशन में आग नहीं लगी है, आग नहीं लगी है, तो आग से बचने के लिए, फायर से बचने के लिए व्हाट एवर एक्शन वी हैव डन डू, दैट इज पैसिव. क्या मतलब है इसका? At the time of building construction, we use high resistive fire brick. Say 2 hours fire resistive brick. What is the meaning of 2-hour fire resistive bricks? इसका मतलब यह है कि अगर आग लगेगी और 2 hours fire resistive brick का इस्तेमाल बिल्डिंग में हुआ है, तो एक दीवार को, फायर को क्रॉस करने में 2 घंटे लगेगा. तो हम बिल्डिंग बनाते समय ही फायर रेसिस्टिव ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पैसिव एक्शन. एंड अगर इलेक्ट्रिकल वर्क, केबलिंग वर्क कर रहे हैं, केबल ले कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन वी कैन यूज FRLS cable. What is FRLS cable? Note down, fire retarded low smoke cable. Fire retarded low smoke cable. What is the meaning of it? Fire retarded. It will resist to fire. ये जलेगा नहीं. And अगर जल गया, then low smoke cable. ये कम धुआं निकालेगा. लो स्मोक इससे निकलेगा. जितने भी फायर केसेस होते हैं उसमें अगर 100 डेथ होता है तो 20 डेथ इज ड्यू टू द बर्निंग and 80 death is due to the smoke. So for minimizing the smoke, we can use FRLS cable. So using the FRLS cable, using the fire resistive brick, that is passive fire protection measure. And आग लग गई तो उस कंडीशन में फायर एक्सटिंग्विशर लेके हम दौड़ गए बुझाने के लिए. That is active fire protection measure. So these are the passive and active.
तो नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसिव फायर प्रोटेक्शन मेजर कब करते हैं? When we do passive fire protection measure, the answer is in planning phase. जब हम प्लान करते हैं उसी समय पैसिव एक्शन लेते हैं. सो पैसिव एक्शन कब लेते हैं? इन प्लानिंग फेज. पैसिव एक्शन कब लेते हैं? इन प्लानिंग फेज. ओके, सो passive fire protection measure are those which are adopted at the planning stage. Note down, very important. Passive approach done at the stage of planning. Okay. And active fire protection measure are those which operate in the event of outbreak of fire. जब आग लग गई, हम फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ गए. That is the active approach. Wet riser, dry riser, fire detection, that is the active approach. ये कुछ stages है फायर के. The first stage is the incipient stage, then visible stage, then flaming fire, then intensive. On the different stages of fire, we have to sense the fire. आग लगती कैसे है? The three elements are necessary for the fire. The first is fuel, second is heat, third is oxygen. Note down again. There are three elements for the fire. First is any element should be there to burn. First, second is the burning temperature of the element. Third is oxygen. ये तीन चीजें रहेंगी तो आग लग जाएगा. तो बुझाने का सिस्टम क्या है? We have to eliminate any one of these three, either oxygen, either heat or fuel. Suppose आग लग गई तो हमें करना क्या है? The very first stage to find कहाँ आग लगा है, ये हमें जानना है कि आग कहाँ लगा है. Then I have to inform to the concerned people, responsible people. Then the third stage to rescue and the fourth extinguish. That is the stepping of the fire. Now there are two types of fire detection in our exchanges: manual fire alarm and automatic fire alarm. What is manual fire alarm? In that we have some manual call boxes. You have seen probably in the exchanges, red rounded or square type call boxes. That is called MCB, manual call boxes. The distance between two call boxes is 22.5 meter minimum. Minimum 22.5 meter, note down. And the height of call boxes, that is 1.2 meter. Manual call boxes, footer, these are the part of the manual fire alarm. And the building which height is above 15 meter, and the exchange which is 1K and above should be provided automatic fire detection system. जहां भी हमारे बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर से ज्यादा है और एक्सचेंज की कैपेसिटी 1K एंड अबव है, वहां हमें ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना है. ऑटोमेटिक और मैनुअल में अंतर क्या है? ऑटोमेटिक में just one item increase, that is detector. Detector, it itself detect the fire in different stages and it give the signal to the panel. There are different type of fire detection in our exchanges. First is ionization fire detection and second is photo fire detection. Two type of fire detection we use in our exchanges. अगर हमारे बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज्यादा है तो हमें वेट राइजर का इस्तेमाल करना है. व्हाट इज वेट राइजर? दैट इज द राइजर प्रेशराइज्ड with water. Pressurized water is used in pipeline for extinguish the fire. That is wet riser system having the pressurized pipeline
some water storage, pump, some pumps. There are 3 pumps used in water wet riser: main electric pump, diesel pump, and jockey pump. So for building above 15-meter height, wet riser system is used. And on each and every floor, हर एक फ्लोर पर we have to maintain fire bucket 4 number, 2 number for sand bucket and 2 number for water bucket. 4 fire bucket we have to use, that is mandatory as per the fire regulation. 4 fire bucket we have to keep on each floor. 2 fire bucket, 2 sand bucket, and 2 water bucket. This is the part of the wet riser system. Hose box having the hose pipe through which we can throw the water on the fire. This is the hose reel, hard pipeline. This is the fire hydrant. On each floor it is provided, and pipe is connected through this fire hydrant for throwing the water. This is the landing valve available on the each floor. Now, see, there are 4 type of fire. There are 4 type of fire. Note down, important. There are 4 type of fire. First type of fire, class A, general fire. लकड़ी में आग लग गया, कागज में आग लग गया, पेपर में आग लग गया, टेबल में आग लग गया. That is the A type of fire. Ordinary fire, general fire. और अगर लिक्विड में आग लग गया, गैस में आग लग गया, दैट इज बी फायर, क्लास बी फायर. इलेक्ट्रिकल आग लग गया, इलेक्ट्रिकल पैनल में, इलेक्ट्रिकल फायर, दैट इज सी फायर. और मेटालिक फायर, मेटल में लग गया, मैग्नीशियम, सोडियम, लाइक दैट, तो इसको बोलते हैं क्लास डी फायर. नोट डाउन अगेन. जनरल फायर क्लास ए, लिक्विड और गैस फायर क्लास बी, इलेक्ट्रिकल फायर क्लास सी, एंड मेटालिक फायर क्लास डी. तो जो इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं उसके लिए हमारे एक्सचेंज में जनरली CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है. और जो लिक्विड फायर होते हैं, जैसे हमारे फ्यूल में, तेल में, डीजल में आग लग गया इंजन रूम में, तो उसके लिए इंजन रूम में फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है. बाकी ये 2 ही टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर जनरली हमारे टेलीफोन एक्सचेंज में होते हैं, फोम टाइप एंड CO2. सिंपल आग के लिए, जनरल टाइप ऑफ फायर के लिए वाटर टाइप, प्रेशराइज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं. और क्लास डी के लिए स्पेशल ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. दिस इज द फायर एक्सटिंग्विशर. तो 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जनरली. APW, एयर प्रेशराइज वाटर, ये कैसा आग बुझाएगा? क्लास ए फायर, जो जनरल पेपर टेबल वगैरह में आग लग गई उसको बुझा देगा. होम टाइप, तेल में लगी आग, फ्यूल में लगी आग को बुझाएगा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. फोम एक कवर, एक लेयर बना देगा वायल के ऊपर में, और वायल का कनेक्शन ऑक्सीजन से कट जाएगा, एयर से कट जाएगा और आग बुझ जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड, that is generally used for class A, class B, class C type of fire, and dry chemical fire, that is used for class D type of fire extinguisher. This is the air pressurized water, generally used for class A fire, means general fire. Using water on the electrical fire increase the risk of electrocution, that is the carbon dioxide fire extinguisher. Generally we are having in our exchanges, that is used for A, B and C. तीनों टाइप का बुझाता है. डी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसका रिचार्ज जो है एवरी 5 years पर इसका रिचार्ज करना है. दैट इज ड्राई केमिकल पावर, ड्राई केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. दिस इज यूज्ड फॉर क्लास डी जनरल. बट द फायर एक्सटिंग्विशर which can be used for class D can be used for all type of fire extinguisher, class A, class B, class C, class D. But especially it is used for class D fire extinguisher. What is class D fire extinguisher? That is the fire on solid material. Again, I am repeating, very, very important. Again, repeating, class A, general fire like wood, paper, table. Class B, liquid fire, gas fire. Class C, electrical fire. Class D, metallic fire. Note down, it is very, very important. So foam type fire extinguisher, generally we are using it in our engine room.
where we are using the diesel as a fuel. So it makes the layer in admin building. In admin building, for every 300 square meter, we use one CO2 type fire extinguisher of 4.5 kg. Generally, we are using in our exchanges 4.5 kg CO2 type fire extinguisher. Its coverage area is 300 square meter for floor area, and for technical building 100 square meter coverage. A person does not have to travel more than 15 meters to reach the nearest extinguisher. That means on every 15 meter of distance, you have to keep fire extinguisher. For every 15 meter of distance, you have to keep fire extinguisher. So business can benefit significantly by moving towards energy management practice. Effective energy management can drive whole business to improve performance through its effect on the productions. Energy management can be incorporated into existing business system to provide an integrated approach. Fire safety measures are very much required in telecom building, as demand caused by fire not only affect the person and property, but it is felt throughout the population due to the effect of the several breakdown. I'm concluding again, energy conservation. I'm repeating the important facts. Energy conservation. There is 3 points. First is the energy conservation. हमें अपने यूज को मेंटेन रखते हुए, अपने यूज को ऑप्टिमाइज करते हुए एनर्जी को मिनिमम से मिनिमम यूज करना है. दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? हमें अपने यूज में कोई समझौता नहीं करना है. सेकंड, एनर्जी एफिशिएंसी. हमें एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट का यूज करना है, लाइक एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. थर्ड, हमें पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना है. दैट इज ऑल्सो द पर्पज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. हमें पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना है. जितने हम पावर लेस कंज्यूम करेंगे, हमारा पॉल्यूशन उतना ही कम होगा, क्योंकि लेस पावर कंजम्पशन मींस लेस CO2 कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर. एंड द फोर्थ, हमें डिपेंडेंसी को घटाना है ताकि रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना है. सपोज हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हमारा कोयला खत्म हो जाएगा, या थर्मल छूट गया तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगी. अगर हम 2 पावर सप्लाई एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, सोलर एंड थर्मल, तो सोलर के नहीं होने के कंडीशन में हम थर्मल से पावर ले लेंगे, थर्मल के नहीं होने के कंडीशन में सोलर से पावर ले लेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मिनिमाइज होगी और हमारा कंटिन्यूटी ऑन पावर ये बढ़ेगा. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन. और ये कैसे करें? इसके लिए हम एनर्जी मैनेजमेंट प्लान करते हैं, इसमें कमिट करते हैं कि करना क्या है, टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट को टाइम के साथ सेट करते हैं. टारगेट प्लस टाइम दैट इज गोल. टारगेट को टाइम के साथ सेट करते हैं. और क्या करते हैं? हम इफेक्टिव पीपल को देखते हैं कि कौन आदमी इसके काम को अच्छे से कर सकता है, उसको सर्च करके इस काम के लिए लगाते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं, और अचीवमेंट होने के बाद जिसने अच्छा काम किया उसको कुछ अवार्ड भी देते हैं, उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो. दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट. एंड फायर क्या है? फायर में 3 चीजें होगी तभी फायर होगा. द फर्स्ट इज कोई चीज, द एलिमेंट. थर्ड, सेकंड इज द बर्निंग टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट. थर्ड इज द ऑक्सीजन. तो आग बुझाने का प्रिंसिपल वही है. इस तीनों में कोई एक हटा दे, आग बुझ जाएगा. बर्निंग टेम्परेचर, ठंडा कर दे आग को, बर्निंग टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आग बुझ जाएगा. ऑक्सीजन, हवा से कांटेक्ट खत्म कर दे, जैसे आग लगाई कंबल से ढक दिया, आग बुझ गया. और कोई चीज जहां आग लगी वहां से कोई फायर बर्निंग जितने भी एलिमेंट है उसको हटा दे. ऐसे दुनिया का हर एक एलिमेंट जो होता है
वो जल सकता है, बशर्ते उसके कंपेटेबल उसका बर्निंग टेम्परेचर उसे मिल जाए। तो आग जिस कारण से लगता है उस कारण को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। आग बुझाने का दो तरीका, पैसिव अप्रोच, एक्टिव अप्रोच। पैसिव अप्रोच, आग लगने के पहले हमने जो अप्रोच किया, जैसे हमने फायर में ब्रिक लगा दिया, 2 आवर्स फायर रेसिस्टिव, हमने FRLS फायर रेसिस्टिव लो स्मोक केबल लगा दिया। तो हमने जो प्लानिंग फेज में काम किया, दैट इज द पैसिव अप्रोच। और आग लग जाने के बाद हमने जो बुझाने का काम किया, दैट इज एक्टिव अप्रोच। तो ये दो तरह के अप्रोच होते हैं। हम अपने एक्सचेंजेज में मैनुअल और ऑटोमेटिक लगाते हैं। जहां भी बिल्डिंग की हाइट जो है वो हमारा एक्सचेंज अगर 1K से ज्यादा है, वहां हम ऑटोमेटिक लगाते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल में अंतर क्या आ जाता है कि ऑटोमेटिक में सिर्फ डिटेक्टर एक आइटम बढ़ जाता है जो मैनुअल में नहीं होता है। डिटेक्टर क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली फायर को डिटेक्ट करके पैनल में अलार्म देता है, इंफॉर्मेशन देता है, पैनल में इंडिकेशन देता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आग लग गई है। हर एक एरिया को जोन में बांट दिया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि किधर आग लगी है। सो दीज आर, और 4 टाइप का मैंने फायर बताया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए दैट इज जनरल फायर, क्लास बी दैट इज gas fire and liquid fire, class C electric fire, class D metallic fire. We are using 2 type of fire extinguisher in our exchanges generally. The first is the CO2 fire extinguisher and second is the foam type fire extinguisher. The CO2 fire extinguisher that is used for class A, class B and class C, and foam type fire extinguisher that is used generally for class B fire extinguisher, generally in India. Okay, if you are having any question, you can ask on the chat. Your next class will be started from 2 p.m. Okay. If you are having any question, you can ask. Okay. नेक्स्ट क्लास IT बेस होगा। इट इज द कॉमन फॉर ऑल मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल हैं चाहे वो कोई भी हो। EB से दे रहा हो पेपर, CM से दे रहा हो, CFA ID मॉड्यूल, इम्पोर्टेंट क्लास विल बी गोइंग ऑन। तो होपफुली 2 बजे सभी लोग ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।
Good afternoon. What will be exam date? Okay. Every exam will be decided in the 2 times in the earlier, in a week, sorry, in a year, calendar year. One is end of the 31st March and another is the end of the 30 September. Okay. If without any issue, so this is the by default fixed. Okay. Now depend on the luck, depend on the form and depend on the situation, time may be varied. But as per calendar, this 2 months is the fixed for the all types of LIC. Either JTO to SD, SD to AGM, and all. Okay. Okay. Now a session start regarding the IT module. Welcome to all of you. In the IT module, it is the important module and 20% marks related to the all stream in IT. And topic is too huge, so not easy to cover up all, but some important topic I try to today cover. If time permitted, I give in the future more. Okay. So first we know what is our topic. So first I sharing our screen. Okay. As per your this upcoming LIC exam, IT module cover up of this following topic, and this topic is the finalized by our BSNL. This topic will be reference for your upcoming examination, JTO to SDLIC, ICT security, cyber security, ERF, Oracle, cloud computing, networking, World Wide Web, OSI model, Ethernet, multimedia, e-governance. This is a very important topic, and 20% marks will be covered on this. This all 11 topic, and no doubt it is the play very important role. So without delay, I just start keeping the time. Go to the data network and communication. In this topic, we try to complete 3 to 4 topics. Here some option for you. What is the traditional network and current network? In the traditional, that is the old network. Basically, this is the known as telecommunication, either telephone line. But in the present scenario, this line completely migrate as per new scenario. This is the known as data communication. Either you can say IT communication, either multimedia communication. In old time data communication, old time telephone communication, just we focus voice communication like this. But in the coming time, present time, we focus a lot of multimedia communication. In this regard, we have changed mobile phone, convert normal phone to in a smartphone. Okay. In overall, we compare what is the traditional network and the current network. Old is known as telephone line and data network is the present line. Earlier is known as the telephone number and IP address is the present scenario. Earlier only use telephone instrument, but now in place of we can connect everything through the internet. I think, am I audible? Yes or no? You can check your phone, मंत्रित अपना वो check करो फोन, मेरे ख्याल से ऑडियो आ रहा है. Am I audible? Yes or no? Kindly confirm another person. Yes, thank you. Okay. Okay. Here we all are joined assembled for the
preparation of pre-recruitment exam. So as point of exam view, here the most important topic is the IP address and the networking system. At least 4 to 5 questions will be there in the paper. And we try to, from this session, we were able to easily sort out and solve all problem in the exam. And minimum mark it will be help, and also your merit is, it will be help. Okay. So first we go for IP address here. I know you are very well aware about what is the IP address, but here we just focus ki how to, anybody ask the question and we can easily, without wasting the time, give the answer. Purpose of my this session accordingly we can here arrange for you. So first we understand about traditional telephone number, and we can go easy compare with the IP address, and it is the most easier form you can able to understand what is the IP address, and easily without any upcoming future, not only for paper and upcoming future in your field side, it is easy for all of you learning. Okay. So here we just I have write one telephone number. Just be imagine ki this telephone number at that time, if there is no any issues in the field, any problem arise in the field. In that case, if I ask this telephone number in which location of the India, I know everyone give the very easy manner which location of this IP address in India. Anyone can give the answer? Is possible? Please write down chat mark. Kindly look this number. According to STD. Okay, just I just write chat box because sound is disturbed. I just unblock okay. Now. Okay, very nice. Everybody well known. Okay, so I just explain about without delay and saving of the time. It is easy for everyone and very well known. Just look the number and easy to say ki this number which location in the world. So by pattern, this first two number, it may be one number, two number and 3 digit. It may be the 1, 2, 3 digit. In this case, here is the 2 digit. This is the fixed number, and this is also known as the area code, country code, sorry. This is known as the country code. And by default, this is the India. Okay. My next question is, can you change it? Yes or no? Just write in chat box. Can you anyone change this? Yes or no? My question is, can you change country code? Yes or no? No. Once allotted, it is not easy to change. By default, in the world, country code that is also in the field area, STD code, sorry, ISD code. This is the fixed and not be able to change. In US, this is the 3 digit 001, 2, 3, and 91 is our country plus 91. Okay. No problem. It is a very easy. This is a fixed number and this is the country code. Now the next. In India, is a very big country. In India, this telephone number in which area, yeah, which location? Can you say anyone? This number, the next 3 digit, 120. It may be either 2 digit, yes, maybe 3 digit, and maybe 3 digit. This is known as area code. Not city code, this is known as area code. City code is a particular area, a particular part of area. So currently this city code is also 2 city area code, STD code. This is known as STD code.
Okay, this is the ISD code. Okay, and this is the STD code of the two city. This is the Ghaziabad and Noida. There are two big districts nearby the NCR, nearby the Delhi in NCR region. This is the Ghaziabad and Noida. Okay. It is also fixed, not changed, no problem. From everyone, if you go and ask your parent, so everybody very well known what is the ISD code, what is the STD code. But now the next position, there are two different districts in India. These two distant district is very big area. So now next two digit, it is decided sub area code. Sub area code. And this is known as the Rajnagar. Where is the Rajnagar? This is the located in the Ghaziabad. Earlier, this telephone number, when planned, so that time most common media for the communication purpose is the copper base. And copper base maximum area covered. There are two types of copper base. One is the in the rough manner 0.911 mm. Another is the 1.25 mm. This is also important question point of the view of the CFA. See what is the diameter of the copper wire in the traditional telecommunication system. So there are two types of copper wire used. One is the 0.96 mm. Another is the 1.25 mm. Okay. If diameter is 0.96 mm, so distance is covered by the nearby telephone exchange 5 km. If diameter is the 1.25 mm, distance covered by the telephone line is the 6 km. So on this behalf, in the BSNL in India, every 5 km we can find one telephone exchange. So this is the concept of the telephone exchange. How many distance cover? 5 km cover due to the copper wire and their diameter. So 5 to 6 km, every 5 to 6 km, one telephone exchange is the situation. Okay. So this next 255, this is the in Rajnagar, there is almost 6 telephone exchange. Because this is you can say roughly, this all area is the cover of the geographically. Okay. So every 6 km radius, 5 km radius, there is a telephone exchange. Okay. So this next 55, this identification of the exchange ID. And this is the ALT telephone center exchange. There is one telephone exchange here in ALTTC. Okay. So when this number, just I look this number and easily identify this telephone number, which location situation in the world. In this case, in India, this is LT telephone exchange. So you can say every telephone number divided into two parts. One is the fixed part and another is the customer serial number. The fixed part is just defined as this number, which location situation. Suppose where is now telephone number allotment. When first customer given the first telephone number 000, second customer this is the 001, and last customer is a 999. So how many total number are possible in this case? 1000. So you can say 559112027555. In this identification, we can allot 1000 telephone number. But in LT center, more than 1000 customer is here. So another also identification is developed 28. So now here 2000 telephone number is possible in this campus. So again, I summarize any manner in the world, any telephone just divided into two parts. One is the fixed part, another is the
customer serial number, you can say variable part. This start by the 000 to 999. Now rule regulation. The first telephone number. What is the first telephone number? +91 120 2755 000. This is the first telephone number. Okay. And same time, last telephone number +91 120 2755. That is the 999. Okay. These two telephone number, first and last, is not given to any customer. Rule is there, not given to any customer. So how many customer is possible? Accordingly, this scenario, 1000 is total minus 2. This is the 998. Okay. First telephone number just use for exchange ID. Suppose anybody asks you what is your exchange ID? Very simple. The first telephone number is known as exchange ID. And last telephone number. In today's scenario, we are very lucky. Our Prime Minister Modi sir just go to the Twitter and just messaging Happy New Year, Happy Republic Day. Everybody very well known what is the message given by our Prime Minister. But earlier, old time, there is the our ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Okay. That time, how to they celebrate, yeah, how to their message convey to the public? They have simple option, either print media, television media, either our telephone system. Just one message recorded. I am Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee ji, and best wishes for all of you on Happy Republic Day. Such types of message just recorded, and this message circulated by the last telephone number. And this is known as the broadcast ID. When anybody just dialing for any number, just one message circulate and everyone very listen. This message then able to dial any number. So nothing is wasteless. Everything is the useless. Huge way. The last number is the broadcast ID. So keep this following scenario, and we now go to the IP address. Okay. Now in the case of IP address, again first I repeat, this telephone number that is already defined. This PPT I will be share everyone, and you can add for your knowledge and for exam purpose. Already defined. This is a fixed part. This is the customer part. Okay. Now compare to our IP address. Okay. One again. Before 2005, just I asked him here about practical scenario in the manner of the practical scenario. Before 2005, 2003, 2003, so before 3003, we have only one word. This is the IP address. Only one word. There is no IPv4, no IPv6. Just in the market, you just listen one word IP address. Okay. IPv4 and IPv6 in the current scenario. Now IPv4, IP address. That time IP address is only 32 bits. But human nature, 32 bits, if you write 0011, 00011100, just like it, not easy to maintain, not easy to handle. In this case, what we can do for the simple handling, we just go for grouping, 8 group.
how many group possible? Total 4 group possible. Or and each group separate by the dot. Okay. Now IP address in the current scenario, just like 192.168.5 plus 4 or 5.4. So first, keep in the mind IP address is just binary version of telephone number. And second is that IP address only 32 bits. And current scenario, it is not possible. 32 bit is the sufficient. So the new IP address come in the market. So this IP address is known as IPv4. This is the 32 bits. And new IP address implemented. This is the 128 bits. And that is the known as IPv6. This is represented by the hexadecimal with full column, separate by the whole. And this is the dot, separate by the dot only. Okay. If IPv4 you are well aware, give the answer. IPv6 is very easy. Question paper mostly focus very few out of 4 or 5 questions, 2 questions related to the IPv4 and 2 questions related to the IPv6. So no doubt कि IPv6, IPv4 both IP address used in the current scenario, and what is important? If anybody asks, what is the standard IP? What is the meaning of standard IP? Currently, whole the world working which IP? My question is that, please give the answer. If I ask to all of you, single question, whole the world in which IP working their internet? What is the answer? Please give the chat. My question. एक क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में जो आईपी है वो किस आईपी एड्रेस पे काम कर रहा है? IPv4, either IPv6. By the way, a lot of confusion is the Realme. Who is the Realme? It is very competitive. Yes, no doubt. Standard IP, whole IP, national IP, international IP is working is the IPv4, and this IPv4 is known as IPv4 is known as standard IP. IPv6 working in the only local level. Your local computer, local network is your IPv6, there is no doubt. Migration work is under progress. December 2025, it will be completely IPv4 IPv4 is migrated to IPv6, no doubt. But currently, whole the world, one country to another country, yeah, you can say the main IP, their networking is going on, that is the IPv4. So hopefully, one doubt is clear. Maximum answer is right here. Okay. Now, if I ask on your screen, suppose 0308 1985. Suppose I ask here, anybody can unmute. कोई एक मिनट अनम्यूट मैं अनम्यूट कराना चाहूंगा, पहले मैं अलाउ करता हूँ. कोई एक अनम्यूट हो जाए. यस, कोई ओनली वन अनिल. ओके, हाँ बोलिए. तो सर आपकी ये आवाज आ रही है. सर स्टैंडर्ड IPv6 लिखा है आपने, IPv4 कर दीजिए. सॉरी, इट्स ओके. सर नेक्स्ट क्या जानना चाह रहे हैं सर? हाँ हाँ, यस यस, ये कर दीजिएगा. IPv6 कर दीजिए. IPv4, सॉरी, IPv4, आई एम रॉन्ग, सॉरी. सर ये 03.08.198 क्या चीज है? हाँ, आपको क्या लगता है? व्हाट इज दिस? डेट ऑफ बर्थ. आर यू डेट श्योर? ऑफ बर्थ लगा. हाँ, कोई यस एक रहे ना, रिकॉर्डिंग भी होगी नहीं इसलिए, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनेंगे तो अच्छा लगेगा. कोई एक ही हो. अनिल आप बोल रहे हैं तो आप ही बोलिए, कोई इशू नहीं.
बाकी सर ये डेट ऑफ बर्थ सर। हेलो 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 हाँ, मेरा आवाज आ रही है आपको? सर हाँ हाँ जी सर, जी सर, जी सर। अगेन आई रिपीट कि माई हार्ट इज सेइंग दिस इज डेट ऑफ बर्थ, सर ये माइंड इज सेइंग, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आर यू श्योर जी कि दिस इज द डेट ऑफ बर्थ? हाँ श्योर सर, जैसे ये हाँ सर, ये एज ए डेट पैटर्न है सर ये। नहीं, एज ए पैटर्न इज योर माइंड, पैटर्न वेयर ये जनरेट इन योर माइंड, वेयर योर माइंड, योर एक्सपीरियंस, योर माइंड, आपका दिमाग है, माइंड ये कह रहा है कि आईपी ये डेट ऑफ बर्थ है, बट यू नॉट गिव द गारंटी। ये यस सर, ये एज ए डेट पैटर्न है सर, किसी का हाँ, भी हो सकता है। किसी का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो यस सकता है, सर। कुछ भी लिखा हो सकता है, बट जी अगर जी मैं इफ आई राइट जस्ट हियर DOB, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन वी कैन राइट, ये चीज मैं लिख दूं 03, ठीक है ना, 08, ठीक है, 1985, नाउ यू आर श्योर यस या नो? अब तो यस श्योर हो गए। यस यस तो मेरे यस कहने का श्योर। मतलब ये है, माई माई कंसर्न इज वेरी सिंपल कि डाउट इन इंजीनियरिंग फील्ड देयर इज नथिंग इज डाउट, एवरीथिंग मस्ट बी इंश्योर। ओके, जी सर। so here when you go for the IP address, in case of IP address, this is only half information. यस सर। Okay, it's okay, look like it's IPv4, it's okay. Suppose I'm saying this is IP address, okay, I accept this is IP address. But this information is incomplete. This IP address will be complete when we can write, what write? 192.168.5.4 slash something like this, or class C IP 192.168.5.4. You have, this is the complete information. जब भी आपको आईपी परचेज करना हो, when you are purchasing a new IP, it must be ensure कि what is the pattern of IP /24/16/30, just like this, and another either class wise. Simply this IP is not sufficient and not easy to calculate any question answer. So first in the exam paper, yeah, in your field experience required, so you are first ensure कि what is the /24 either किस what class of IP. Okay, तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपी जो है कभी भी आप खरीदेंगे या फील्ड में यूज करेंगे तो केवल इससे बात नहीं बनने वाली है, आपको कम से कम या तो इस तरह से हो, फॉरवर्ड स्लैश करके कुछ लिखा गया हो, आइदर किसी कैटेगरी का आईपी दिया गया हो, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूँ इस चीजों को दोनों को रिजॉल्व करने के लिए, बस मैं इसको क्लीन करते हैं। मैं यहाँ पर पहले तो मैं एक टेलीफोन नंबर अगेन एंड राइट 911202755164, this is a telephone number. Telephone number pattern already we discussed, because this is the binary number system, sorry, decimal number system, and directly used by the human, so there is no problem. But binary number system always used by the machinery system, like your computer, mobile phone, all any smart devices. So there should be must be one is the IP address, just like this, and there is something is the symbol sign, you can say mask, and this mask is the /24, or sometime you can say class C, class B, class A, look like this. So without this mask, is any computer, any devices not able to communicate any another device. जब तक इसको दोनों चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे, आईपी एड्रेस और उसके साथ जो उसका मास्क है, बाय डिफॉल्ट इन द रेगुलर मैनर यू कैन से सबनेट मास्क। अगर हम आज की बात में बात बोले, ये भी मैं बता दूंगा सबनेट मास्क क्यों बोला। सबनेट मास्क, मास्क एंड सबनेट मास्क इन द फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर द सेम, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
बस very simple manner. It is just indication. Yeah, just is the symbol. We can easily identify in this IP address how many bits are the fixed, how many bits are the customer bit. In the telephone number system, there is human number system. You can easily identify the 912 up to 55. This is the fixed part. But in the IP address, it is also binary version of the telephone number. Okay. So Excuse me, definitely, sir. ah, You written /24 or class C. or class C. Either you can write. But a series starting with 192 fall in class C. It's Sir, very much first clear complete from the my chart. 192. First, sir, leave your mind outside. First, complete the class. Every answer we can easily identify. Okay. You just ask me question because you are already aware some knowledge about your experience, about your handout. Okay. Now here I just discuss how to IP address making process in the real person by in the field. रियल में कैसे बनाया था मैं उस चीज को रखूंगा तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बात मैं समझ चुका हूं। आपको आंसर मिल जाएगा जब मेरा सेशन खत्म हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा, उसके पहले ही मिल जाएगा। अभी मैं सिंपली ये बात कह रहा हूं, अभी मैंने इसकी भी बात नहीं की, अभी मैंने इसकी भी बात नहीं की। आई जस्ट अबाउट कि दिस आईपी इज इनकम्प्लीट विदाउट राइटिंग दिस आइदर दिस वर्ड। ओके, अभी मैं कह रहा हूं इन दोनों के बिना ये आईपी एड्रेस कंप्लीट है। जब भी आईपी एड्रेस लिखा जाएगा आपको ये दोनों चीजें मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आईपी सपोज करो 192.168.5.4 सपोज and slash something anything, here write हम 24 and in the question paper following question asked to you network IP, second is the broadcast ID, third is the number of IP, fourth is the IP pool, either range, and last is the subnet mask. Only this question asks always in the normally in question paper. Okay. Here what I am saying. Here I am saying telephone number binary version of IP address is just binary version of this telephone number. Suppose, for example. Okay. So no doubt this IP address, just like telephone number, we already discussed, divided into two parts, in the fixed part, and this is the customer part. Okay. So same like manner, IP address is also divided into two parts. One is the fixed part, and another is the customer part. In the current as per your handout, this is known as the HOTS. Okay. Now question is that key in this case, this is the decimal number system, no problem. But in this case, how many bits are the fixed and how many bits are the customer bits? How to identify? Very simple. This is identified by this digit. This is the total is the 32 bits. Meaning of the 24 bits is the from left hand side to right hand side. Out of 32 bits, 24 bit is the fixed bit. Very simple. And this is the fixed bit, no doubt. Okay. So now, up in this case, you go again back question. In this case, this is the fixed bit. Already explained when the first customer is coming. So what is the first telephone number? So you can say 000. Okay. And this is known as the exchange ID. Okay. So same manner, exchange ID is known as the network ID as per new scenario. Okay. So what is the network ID?
So first we fix part separate. How many fixed part is separate? This is the 8-bit 192. This is the fix. ये fix हो गया. Another 168. This is also fix. 16 fix हो गए. 16 is the fix. Next is the 24 is the fix. So from left hand side, this is the fixed part. No doubt. Not change as per this like this. बिल्कुल वैसा ही होगा. Change कोई नहीं होगा. 192.168.5.fix. Now, remaining all part doesn't matter what is the value of this last 3 digit. So same here, doesn't matter what is the value of last group, either 8 bit. All bits are the 0. This is all bits are the 0. But human tendency, our writing purpose, yeah, order performa, you can write network ID is the 192.168.5.0 slash. It must be ensure slash either masking is definitely given, otherwise not work in the field also. So this is /24. This is a network ID. Hopefully कि everyone easy got कि what I am saying. आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा है. अगर मैं पूछूं, if I ask you what is the broadcast ID, so here is the last telephone number in the decimal, all triple is 9. In this case, all bits are 1. So what is the broadcast ID of in this scenario? क्या होना चाहिए? Please write in the chat box. Broadcast ID 192.168.5. This is the fixed part. All remaining part are the 1. And this all part 1, then it becomes 255 and /24. This is the broadcast ID. Hopefully no doubt. First, remove your mind. Network ID is the first IP address that used for the network IP या network ID. ठीक है ना? This is network ID. Sorry, I'm here IP ID, not IP. Okay. Suppose I just I for testing check at testing purpose ki all are of guide all are aware about my concern. Yes or no? Here write 192.168.5.4/16. Now you are all right. What is the network ID? Give the answer. अगर आंसर दे दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा. इस क्वेश्चन का ऑन योर स्क्रीन देयर इज वन क्वेश्चन 192.168.5.4/16. So my question is the what is the network ID? अभी मैंने आपको जो बताया उसके हिसाब से बताना. Yes, Suraj Nonania is the right answer. Remaining all right. /16 is the important. मैं पहले बोल रहा हूं. Yes, /16 बहुत इंपॉर्टेंट है. /24 अलग चीज हो गई. ठीक है. ओके, बहुत वेरी नाइस. तो हमेशा ऑलवेज आंसर इज 192.168.0.0/16. अब सेम अगर ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168, this is the fixed part. Remaining 16 bits are the 1. So in this case, what is the broadcast ID? आप लोग पूरा ही आंसर लिखिए. Yes, Sarvan Bani, now write. Banani. You can also write the slash is been sure. Keep in the अपने प्रैक्टिस में डाल लीजिए. अभी नहीं काम आएगा. जरूरी नहीं कि एसडी बनने पे ही काम आए. ठीक है. So this is the 255/16. Okay, no problem. So I think if first 2 question answer you are very easily identified. Now, one more question. Here some IP address given to all of you 192.168.5.4/24 192.168.256.4/16. Option C 192.168.5.4/8. Option D 0.0.0.0/.
8। ठीक है, ओके। मैं अनम्यूट भी कर दूंगा, जिन्हें बोलना है बोल के भी बता सकते हैं। माय क्वेश्चन इज दैट इन आउट ऑफ 4 आंसर व्हिच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। अभी तक मैंने जो बताया है टिल स्टार्टिंग टू टिल टाइम जो मैंने सेशन डिलीवर किया है, अकॉर्डिंगली आपको बताना है। बी 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 बी, ओके। बी सी विच इज नॉट वैलिड आईपी, मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है, को पॉसिबल नहीं है, नो डाउट। व्हाई बी इज नॉट पॉसिबल? 256. Yes. First of all, here is also keep in the mind this is this group. This is the 8-bit group. ना? This is the 8-bit group. Okay. तो कोई भी ग्रुप लिखेंगे आप, ठीक है, तो नो डाउट कि all bit starting the 0, 1 and finally all bits are the 1. So maximum value start from 0, 1 to maximum the 255. Okay. ऑल आईपी एड्रेस इज द वैलिड आईपी, यूज होता है या नहीं होता है, या यू कैन से कि इट मे बी यूज अप्लीकेबल और नॉट, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट इट इज वैलिडिटी यस या नो। तो वेरी सिंपल मैनर, वैलिडिटी बाय डिफॉल्ट जो भी ब्लॉक है उनका 0 से लेके 255 के बीच में होना चाहिए। हियर इन दिस केस ओनली बी ऑप्शन 1 इज द मोर देन 255, तो दिस इज द नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये भी आपको कंसर्न दूर हो गया कि आईपी एड्रेस में जरूरी नहीं है कि अभी हम क्लास ए बी सी डी की बात करेंगे, वो भी करता हूँ अभी, वो भी आपको भी जस्ट क्लास ए बी सी डी, ओनली 5 मिनट एंड यू कैन ऑलवेज परमानेंट रिमेंबर। ओके, नाउ अगेन आई रिपीट बैक 192.156 plus 4/20। okay, now first is the network id, okay, no doubt 192.168.5 dot 0/24। ब्रॉडकास्ट आईडी ये भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 192.168.5.255, ठीक है, /20। नाउ आईपी रेंज, आईपी रेंज व्हाट इज द आईपी पूल, आईपी पूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपी रेंज एंड आईपी पूल? ओके, so again I back and telephone number 91-120-2755-164. In this case, what is the telephone number range? This is not given to 000, so this is given to 001, then 002 up to the 9, up to the 999, 998. ठीक है ना, 998. So this is known as the telephone range या telephone pool that allotted to the customer. In the same manner, in this case, IP network ID not given to any customer, broadcast ID is also not given any to customer. So what is the IP range or pool? Okay, so in this case, IP pool, I first is used for the network purpose, network ID purpose. Last is used for the broadcast ID purpose. So in this case, what is the IP range? Your answer is here 192.168.5.1 to 254. Okay, not 0, not 0. Shravan Kumar, again check. Okay, don't confuse. One every marks is very important for the exam purpose. Okay, 0 is for in this case 0 used for the network ID. Okay, IP range either IP pool, very okay. Now number of IP, how many computer, how many laptop, how many IoT devices you can connect here. In this like 12998 telephone number, same manner. Now every devices they want to communicate to each other. No doubt, allotment of IP is mandatory. So this in this case 1 to 254. Yes. In this case, you can easily identify how many number of IP because 1, 2, 3, 4, 5 up to 254. Suppose question is now change 192.168.5.4/16. I'm now I'm accessing again number of IP.
How? What is possible? कर पाएंगे? How to possible? कैसे निकालेंगे? Because here all are engineers, all are here fight for the SDE. So I think everybody very well known. The total, yes, very simple. Total number of customer bit. How many bit in this case? Suppose for this sheet. Here is the 32 bit is the fixed bit minus 24. This is the 8 bit. 8 bit is the customer bits. Okay. So this is the as per very well known 2 की power 8 is become 256 including 0 and 255. But as per rule, cost and loss is not given. In this case, -2. This is a 254. Here you can easily identify. So same manner in this case. /16, no problem. Okay. Total 32 bit minus 16 bit. Total is the 16. Answer is here 2 की power 16 is equal to जो भी कुछ आएगा, ठीक है, उसमें क्या करना है? -2. That is your answer. And Bhanu P Singh, your answer is right. Here you can check 35534. You can calculate 2 की power 16. What is the meaning of the 2 की power 16? 234. So this actually this is the value of that 65536. Yes, you can check now. This is the 65534. Okay, hopefully everyone very well know now what is the accurate answer. Okay, now the next question, subnet mask. ठीक है, network ID, you can now identify. Broadcast ID, you can easily sort out. IP range, okay, and IP pool. Again, one more answer. IP pool either sorry, number of IP. Okay. IP pool or range. There is both are the same word. And now in this case, IP range in the /16. What is the IP range? How? Please give the answer of the /16. It is your awareness for this. Broadcast and network ID 192.168.0.0/16. Broadcast ID 192.168.255.255/16. So what is the IP range? Manani, your answer is the right. Very nice. 192.168.0.1 and one before from the last IP 192.168.255.252. Very nice. Okay. So there is no doubt what is the basic ABCD of IP address. Now the next again go for the subnet mask. Okay. So in this case, mask. First we remember what is the mask. When first time IP address distributed as a planning manner, first time, very first time, without standardization. That time they divided, no doubt ki that time IP address distributed in the whole world by the US. So US is the super lead, you can say is the super lead. So they can divided IP address geographically, which IP address in which location. So the IP address divided the class A, class B, class C, class D, and class C. Divide the class A, B, and C. Okay. And very simple manner, he just say
I am just asking about very starting level point. Okay, not go for the book. जब पहली बार 4 लोग होते हैं ना, जब काम बांटते हैं तो क्या सोच के करते हैं, ये उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्लास ए आईपी, होल आईपी इज नोन एज द क्लास ए आईपी उस टाइम के लिए। अगर इफ स्टार्टिंग बाय द 0 and 126 left hand, they decided a left hand side ग्रुप जो है वो, यानी फर्स्ट ग्रुप, यू कैन से फर्स्ट, ठीक है ना। एंड साथ में स्लैश ए भी लिखा। बी के लिए बोला उन्होंने 127 स्टार्ट होगा, 191 तक जाएगा, एंड /16 होगा। देन ऑप्शन 192 and 2 to I think 2 to 3. You can check my handout. It's okay, but I just I missed from my mind. But just like this, okay. And /24. Father D, they reserve, not distributed in the world, just reserve. Reserve to a special purpose. A very important question. The class D IP used for the which purpose? So you can say special purpose, either you can multi task या मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ये स्पेशल पर्पज एनी टाइप, ओके। एंड ई जस्ट से कि इन फ्यूचर इफ एनी आईपी एड्रेस सॉर्टेड तो वी कैन यूज, बट सरप्राइजिंगली in place of this use of EIP, by default we migrate. Now migration process is going on IPv6. Okay. So now accordingly this first thought by the invention, you give the some answer here. Option A 192.168.5.4/16. Option B 0.0.0.15/8. Option C 192.168 5.4/24. Option D 100 71 52 65 32/16. Okay. My question is that option A in which class of IP is belong? First say in which IP is the exactly match of this ABCD scenario. Option B in which class in this question? First we go for the option B. Okay. All are say as per this option B in which class IP. मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। Yes. Anybody want to unmute and say? No problem. अब मौका दे रहा हूं बोलने के लिए, बोलिए। सुरेश आंसर इज द ये, यस। देखिए वेरी सिंपल मैनर, क्लास ए मीन्स this is the left hand side block, this is the first block, okay, almost okay. This first block is belonging to the 0 to 126, okay, this is the belong, and also the same time this is also match. So both are matching, no doubt. You can say option B is the class A IP. All IP is the valid, but which class IP you can only verified after this. Now ऑप्शन सी, व्हाट कैन यू से अबाउट ऑप्शन सी? सी के बारे में क्या कहेंगे? ये कौन सी क्लास का, ये वाला जो सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है ना, वैलिड एंड सी, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, नो डाउट, क्योंकि यू आर बोथ इज द सी, सॉरी इससे ये सी वाला हो गया, राइट, ओके। नाउ ऑप्शन डी
व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? बी। बी के लिए ओके, वैलिड है। एंड नाउ यू ऑल से व्हाट अबाउट ऑप्शन ए? अब ऑप्शन ए के लिए क्या कहोगे? क्या वैलिड आईपी है पहले तो बताओ, यस या नो? बताओ भानु भाई, बहुत तेज चल रहे। नो सर। यस सर, वैलिड है। देखा, मैंने कहा ना, मैंने कहा दिमाग हटा के अगर बात करोगे, वैलिडिटी ओनली वन इज पॉसिबल, 02255। वैलिडिटी के लिए आपको ये नहीं देखना है, पहले कंफ्यूजन दूर करो। बिकॉज हमने क्या किया है, वी जस्ट रीड आउट द हैंड आउट एंड आवर प्रीवियस टीचर। नो, मैंने तो आपको इतिहास खोल के निकाल दिया। दिस आईपी इज ऑल वैलिड आईपी, बट वैलिड। हाँ, अब ये इन इन कैटेगरी में है या नहीं? इन कैटेगरी में तभी होगा जब ये दोनों चीज मैच करेगी, तो ये कहलाएगा क्लासलेस आईपी। यस सर। भाई ये जब पूरा पूर्ण हो गया, क्योंकि ए आईपी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? यूएस ने कहा कि दुनिया में हम ही इंजीनियर हैं, सबसे ज्यादा कंप्यूटर हम ही यूज करेंगे। यूएस डिसाइडेड कि होल द वर्ल्ड आई एम पावरफुल एंड मैक्सिमम इंटरनेट यूज बाय द यूएस, और उन्होंने क्लास ए अपने पास रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसमें वैलिडिटी होती टू, नंबर ऑफ आईपी कितने होते हैं, 2 की पावर 32 -8, जो भी आता है उसमें से -2 कर देते, यही तो होता ना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आफ्टर सम डे होल वर्ल्ड, दो कंट्री हैं जो 70% इंटरनेट यूज करती है पूरे दुनिया एक तरफ, दो कंट्री एक तरफ, चाइना और इंडिया। लेकिन दैट आईपी इज नॉट सफिशिएंट, जो आईपी उन्होंने बांटा था वो सफिशिएंट नहीं था। इन दिस केस क्या किया उन्होंने? इन दिस केस ओके, यू डिसाइडेड /8 ना, मैं /7 बांटूंगा, /15 बांटूंगा, आई यूज ऑफ द /23, आई यूज ऑफ द /26, कुछ भी हो सकता है। एक तो उन्होंने किया, तो ये उसी का नतीजा है। ये आईपी इज वैलिड बट दे नॉट बिलोंगिंग टू एनी क्लास। तो जो पहले से डिसाइडेड था उन्हें बोल दिया क्लासफुल आईपी, दैट इज द क्लास एबीसीडी। एंड आफ्टर सम टाइम क्लासलेस आईपी, उससे भी बात नहीं बनी, IP8 IPv6 आ गया। ठीक है, इसमें अब कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे चलूं, लास्ट लास्ट ऑप्शन है आईपी एड्रेस का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एवरीबॉडी शुड बी आंसर इन योर पेपर, और नो डाउट देयर इज अ 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इसमें से कभी आया तो सर में पकड़िए, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लास डी आईपी? ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल, व्हिच क्लास आईपी इज स्पेशल पर्पज? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, नेटवर्क आईडी ब्रॉड, ये तो सिंपल क्वेश्चन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब आपका जो पेपर में पूछा जाएगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। काम करते हैं क्वेश्चन का, तब में हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप कर देंगे डायरेक्टली यस। ठीक है, अब इन दिस केस, अब this is also known as the CIDR notification. As per our discussion, we just go for the standard IP. You can say main IP, IPv4, divided in the 4 part. Okay. Or in this case, 24 means the this is divided the fixed part, and this is fixed part is also known as the network bit. Okay. And customer part is known as the host bit. Okay. So as per discussion, okay. So if want to the network ID for this question, no doubt fixed part don't disturb. We just divided in the 4 group, and each group is the 8 bits. This is the fixed part and this is the variable part. Fixed part is the network bits and variable part is the non-host bit. Accordingly, the starting bit of network is the 0, this and /24. This is the network ID and this is the broadcast ID. Okay. तो ऑलरेडी इस पर डिस्कस हो चुका है। अब मैं इससे आगे वाले पोर्शन पे जा रहा हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट। सपोज नाउ हियर यू कैन चेंज। अब यहाँ पे उनमें से ना आ जाए, क्लासफुल वाले में से ना आए। सपोज नाउ योर क्वेश्चन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासफुल आईपी, दैट इज द क्लासलेस आईपी, और यही परीक्षा में पूछा जाएगा। अब सीधा सीधा कोई नहीं पूछने वाला। देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन, इन डायरेक्ट क्वेश्चन एवरी टाइम इज ट्राई।
/25. If here is /24, no doubt, everybody give the very fast answer. Please give the answer. 10.10.10.64/24. In this case, what is the network ID? क्या होगा? फटाफट आंसर बता देंगे। शुरू के 2 आंसर दे दीजिए अगर /24 है तो। अब हम बात करेंगे /24 का। प्लीज गिव द आंसर। नहीं, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। बट ये आपका ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। मैं अभी नहीं पूछ, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 10.10.10.64/24 है। सॉरी, उस केस में आपका आंसर क्या होगा? अगर /20। यस यस, वेरी नाइस। ये आपको भूलना नहीं है यार, आज के बाद पढ़ना थोड़ी है, पेपर देना है जाके। ओके, नाउ अगर इन केस ऑफ द /25, उस केस में क्या होगा? ओके ना, इन दिस केस तो वेरी सिंपल। यार मैंने आपको just here help of the table I want to solve this question and it is easy for you. Okay, first we route every box, every data different group 10 10 10 65. Okay, now as per each group is 8 bit. Here is the question is the /25. Okay, so what is the meaning of the /25? Left hand side to right hand side, how many bits are the fixed? 25 bits are the fixed. This is the 8 bit and this is the fixed and there is no change in data. This is a 16, 8 bit, no change in data. This is a 16, no change in data. This is the fixed. Now 24, 1 here. This is the 8 bit. That meaning of the left hand side, 1 bit is the fixed and remaining bits are the customer bit. That is the variable bit. Okay. In this case, first required this convert in the your binary form. Okay, 8 group of the binary form. So 65 here in 8 group of the binary form 0 1 0 0 0 0 1. Okay, ये आपका हो जाएगा। Now as per अभी मैंने जो डिस्कस किया है, फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया कि फिक्स्ड पार्ट है। दिस इज द फिक्स्ड पार्ट, डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर। एज फॉर द नेटवर्क आईडी, फिक्स्ड पार्ट डोंट डिस्टर्ब। ओके, तो ये तो फिक्स है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना, बट रिमेनिंग ऑल पार्ट आर बिकम 0। लेकिन जब हमें लिखने की बारी आ गई, व्हेन यू वांट टू द रिजल्ट वैल्यू, तो गिव द सॉल्यूशन ऑफ इट 8 जो 8 ग्रुप हैं, सॉल्यूशन इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दिस केस व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन? 10.10.10.0 because all 8 group, all 8 bit are 0 /25 is important. Now in case of the broadcast ID, here is the 0, don't disturb. Remaining all bits are, doesn't matter what is the value, all bit become 1. ठीक है, in this case 10.10.10. all bits are 1. Now you can solve this. This is the 127 because first bit is the 0. So when we convert 0 1 1 1 1 1 up to 7 bit, it becomes the 127 and /25. Okay, so network starting 0, range 0 not given to any customer, 127 is not given to any customer, 1 to 26. But as per accordingly, number of bit as per engineering point of view, 2 की power 32 bit minus 25. Okay, this is equal to 2 की power 7. This is equal to 128 and first and last is not given. This is equal to 126. होपफुली कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लास्ट चीज रह रही है, एनी डाउट? आईपी एड्रेस देखो भाई, मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल में जैसे लोगों ने बनाया वैसे ही मैंने पढ़ा दिया ताकि परमानेंट याद हो जाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबनेट मास्क। ओके, अगेन आई हियर गो टू माय रियल कंप्यूटर। ओके, this is the my real computer. Any computer
already saved, given to you. Suppose this computer, click on here, go to the network sharing center. Change your auto setting. I think very in the today it is easy where you can implemented your IP. Go to the network and go to the properties. Okay. So here one pop-up screen is open. This is the my computer, real computer. Here I just click here and go to the, now here we discussion about IPv4. Click here and go to the property. Okay. In this case, now you can say कि what class of IP here? यहाँ पे IP क्या है? बता सकता है कोई? ये कौन से क्लास का IP है? Anybody can say the answer. अभी पता चल जाएगा. A. ये कौन सा IP? क्लास बी आईपी है. कैसे पता? क्लास बी सर, नहीं, क्लास बी सर. नो नो. व्हाट इज द क्लास बी? नॉट ए. देखो मेरे इतने बताने का भी कोई फायदा नहीं हुआ. क्लास ए बी ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ इज एप्लीकेबल. पहला ये ब्लॉक भी हो और साथ में स्लैश भी हो, तब होगा ये. यस. सबनेट मास्क क्लासलेस. यस यस. देखा, आप समझ में आया? मैंने ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब बात करते हैं. देखिए, फर्स्ट में आईपी एड्रेस यहाँ पे हमने लिखा सेम मैनर इन द बिलो यू कैन द पुट ऑफ द सबनेट मास्क एंड दिस इज द राइट हियर. ओके. मैंने अगर कोई आईपी यहाँ पे लिखा, सपोज आई गिव ऑन आईपी एड्रेस हियर, राइट हियर 192.168.5.4/16. ओके. ठीक है. तो अजीत, आप अनम्यूट हो पाएंगे? फटाफट आंसर दे रहे हैं तो बताइए. अजीत, अजीत नहीं अनम्यूट हो सकते. एनीबॉडी, कोई भी अनम्यूट हो जाए जो हो सकता है. यस सर, बताएं. यस भानु. भानु जी, आप ये बताओ कि यहाँ पे जो मैंने आईपी लिखा है ना, हियर वन आईपी एड्रेस, तो जस्ट सेम ही कि हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स हियर. फिक्स बिट कितने? 2 bits are fixed. नहीं, 16 और फिक्स. 16 bits. 16 bits are fixed. Okay, no doubt. Everybody now very well aware about the left hand south and right hand south up to 16 bit is your fixed, no doubt. और ये जो नंबर है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है हमारे और आपके लिए. बट दिस आईपी एड्रेस इज पुट इन द कंप्यूटर या एनी डिवाइस. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी फॉर्म. ठीक है. यहाँ जरूर हमने लिखा है हियर आई राइट इन द डेसिमल पार्ट, बाय डिफॉल्ट इट कन्वर्ट इन द बाइनरी एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. कंप्यूटर को इन द कंप्यूटर साइंस दे हैव नेवर आइडेंटिफाई टू थिंग. पहला कि कोई डेसिमल नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. सेकंड, माइनस, नंबरों को माइनस नहीं कर सकता. ऑल आर अवेयर ना कि इन द कंप्यूटर साइंस देयर इज नो माइनस नंबर सिस्टम. तो हाउ टू रिजॉल्व दिस सिस्टम? 2 कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट. वेल अवेयर, आप पहले से मालूम है आप लोगों को. ठीक है. एंड सेकेंड, डिवाइड डिवीजन भी आल्सो दे नॉट अवेयर अबाउट दिस. डिवीजन के बारे में भी नहीं जानते. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन बना दूं और यहीं पे लिखता मैं /16, ठीक है, तो माई कंप्यूटर नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो बट कंप्यूटर में आईपी एड्रेस हाउ टू की दिस आईपी एड्रेस हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई, वी जस्ट गो फॉर द मास्क. मास्क इज द एबीसीडी, सबनेट मास्क इज द ओवरऑल, क्लासलेस इज आल्सो इंक्लूड. मास्क एंड सबनेट बोथ आर द सेम. Earlier only known as the mask, but day by day /15 14 8 7 6 5 4 3 every must be used. So automatically subnet mask is converted in the subnet mask. Okay, मतलब दिस एक पहचान है जिसको समय के साथ बदल दी गई. ठीक है. तो जो नेक्स्ट हियर सबनेट हियर जस्ट आई राइट सबनेट मास्क. तो हेल्प ऑफ दिस माई कंप्यूटर इजिली आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स. जो नेक्स्ट लाइन है उसके नंबर, उसकी मदद से मेरा जो कंप्यूटर है वो पहचान कर पाता है कि ये जो आईपी एड्रेस है
इसका कितना बिट फिक्स है यानी कि नेटवर्क बिट है और कितना बार कस्टमर है। अगेन आई रिपीट, फॉर द नेक्स्ट रो आवर ऑल स्मार्ट डिवाइसेज एबल टू नो कि हाउ मेनी bits are the network bit, either fixed bit in the network ID and broadcast ID। वो इसकी मदद से करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो हम उसकी इस तरह से लिखा, मतलब एक तरीका है। तो कैसे कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट, वो मैं यहाँ पे डिस्टर्ब आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका सपोज करो ये 192.165.4/24 है, ठीक है। We can't write down /24 any devices. So now here next line from left hand side to right hand side, ठीक है ना, 24 bits fix है। It just write next line all 24 bits are 1। जहां तक 1 है सबको 1 लिखना है, हर ग्रुप में 1 है, 1 लिखते जाइए, ठीक है। तो जो इन दिस के और जो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी हो गया, रिमेनिंग that is not any fixed, that is all 0। But when we can write decimal value 255, 255, 2550, we just put 255, 255, 2550, computer automatically convert in the binary and counting start from the left hand side to right hand side, and this is easily identify how many bits are the fixed। Never become 0, यहाँ के बीच में 0 हो ही नहीं सकता। और एग्जाम में डेफिनेटली 101% आएगा आपके पेपर में कि विच सबनेट मास्क इज नॉट पॉसिबल। आप उसको कन्वर्ट करोगे जिसके बीच में 0, यहाँ पे यू कन्वर्ट इन द बाइनरी, यानी एक के बीच में भी 0 आ गया, आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन हियर मैं इसको रिपीट करता हूँ पीपीटी की मदद से, फिर उसके बाद आपसे पूछता हूँ, फिर बताएंगे आप लोग। आई रिपीट हेल्प ऑफ द पीपीटी अगेन आस्क्ड टू ऑल ऑफ यू। Okay. Again, I repeat, don't worry. I repeat help of the, okay. What I am saying here, subnet mask. Subnet mask, what is the meaning of the subnet mask? Yeah, masking. Masking purpose is only one purpose. Just 1 minute. Sorry. No, I'm sorry for the interrupt now. Okay. First, you understand what is the meaning of the subnet mask. Subnet mask, yeah, mask. This is very simple. IP address for the human understanding, just we write 192.168.1.1/24. Here we can easy to understand how many bits are the network bits. In this case, 24 bits are the network bit. This is the fixed bit. Okay. And host bit 32 minus 24 bit is the 8 bits. Okay. But computer like other devices only understand only binary bit. So for sort out the problem, this help of the subnet mask, it is also known as the subnet mask. ठीक है। तो in this case की suppose in this case what is the subnet mask? So just fix part from left hand side to right hand side, put 1. 24 bits are the fixed 1 1 1 1 1 1 1 up to 24 bits. Okay. So just see in this case what is the subnet mask? 255. First all 8 bit. What is the decimal value of all 8 bits of 255, 255, 255. Remaining all bit that is not fixed, you become 0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /24. So what is the subnet mask of here? All 8 bits are 1. All 8 bits are 1. All bits are 1. And 1 here 1 and 0. When we
write down this is the 255, 255, 255 and solve this is the one, this slash 24. Here my question is the slash 24. Right. So what is the binary to decimal of this binary? 120. Now getting my point, yes या no? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दें? Yes, yes, sir. ओके, होपफुली कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो फिर भी आई जस्ट गिव द वन क्वेश्चन और एनी डाउट यू कैन सॉर्ट आउट. ओके एंड गिव द आंसर ना. एक काम करते हैं, यही लिखता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, सम चेंज एंड एवरीबॉडी मस्ट बी गिव द आंसर. तब तक मेरे को गले को भी आराम मिल जाएगा. Here is the 127 2 3 times 253 dot 253 slash 30. Okay. So please calculate what is the subnet mass of this. What is the subnet mass of this? 255, 255, 255.252. 252. Remaining और भी कोई भी? Is the right answer or wrong? आपने तो कहता Yes, sir. Right answer. Right answer है. चलिए. 252. Yes. 255. Okay, very good. All 30 bits are 1. So first 255, then 255, 255. Now, remaining, this is the all bits are 1. Only first the left hand side to right hand side to let. So this is the 252. Okay. So this is the IP address. अब जो पूछ रहे थे ना, पहले जो सवाल पूछ रहे थे, अब उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. If anybody asked the question earlier, जिन्हें मैंने इंटरप्ट किया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा. Earlier I interrupted one person. No issue, sir. Everything okay, huh? Fine. Okay. तो होपफुली कि इसमें अब चलिए, अब आते हैं जो मेरा नेक्स्ट पार्ट हमको दिया गया है. वापस आते हैं. यस यस. एक तो आपका ये हो गया, आपका इसमें ये इसके पार्ट में इसी का मैंने एक पार्ट कराया है अभी आपका, जस्ट वन. ठीक है, अब मैं इसी को इसमें इंक्लूड करता हूँ एसआई मॉडल को फर्स्ट ना. ठीक है, ये भी आसानी से कर देते हैं आपको. ओके, मैं काम करते हैं इससे. चलिए, नाउ वी गो फॉर द ओएसआई, राइट. चलिए, इसको भी मैं प्रैक्टिकल मैनर से ही बताने की कोशिश करूंगा. आई ट्राई टू हेल्प इन द प्रैक्टिकल सिनारियो. देन यू हैव हैंड आउट, आपके पास में हैंड आउट है, तो यू कैन इजिली coordinate my this session and your handout and prepare your exam. Today is very easy and current scenario, network is very easy. First, you all are say the types of area network. How many types of area network? Please write in the chat box. मालूम है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कई चीज कंफ्यूज दूर करना है मुझे. How many area as per your awareness, जितने भी टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क हैं, लाइन मैन, कैन, सैन, फैन, जो भी आप लिखना चाहें. इन द रियल फील्ड इट इज ऑल वर्किंग, यस या नो? मैन. ठीक है, देयर इज द थ्री मोस्ट पॉपुलर, लाइन, मैन. somebody also write can, somebody also write fan. ओके, आ गया, कैन भी आ गया, फैन भी आ गया. ठीक है ना, फिर इट्स ओके. My next question, it's okay as per book knowledge, as per exam preparation, no doubt, and earlier these all are available, but in current time, in the present time, and as your of handout also, आपके handout में भी मैंने केवल 3 दिए हैं. ठीक है, फिर भी confusion दूर होगा तो every can, it is easy for all of you. How many distance cover in the land? How many long distance cover in the land? 1 kilometer, 5 kilometer, 100 kilometer, 200 kilometer. What is the meaning? Land. Land 100 meters, sir. 100 meter. It is right or wrong? Nageshwar also write 100 meter. Okay. Check. Now just listen carefully. Okay. It's okay. Okay. Keeping a time also.
then again discuss. Now is the current scenario. Please mute. Okay, I mute again. 100 meter. 100 meter. Yes, sir. बुक में लिखा है Sir, within 100 meter. within 100 meter. Okay. Sir, LTTC campus. Are you where is, sir? हाँ. Sir, where is the handout provided in the online? Hands out already, our preparation handout already prepared by the LTTC team LTTC, and that handout is also shared in your digital library and clear instructions and guidance. No question will be asked from outside of this handout. So this handout is prepared for only for your exam, already available in digital library and also given to the IIT Guwahati. No question, kindly collect from the Google search either any old question, just refer this handout. Every question must be prepared fresh from this handout. So my suggestion, I purpose for only the study. yeah, long study and you already did the exam purpose, both. हाँ, yes, हाँ, sir. आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, वो इतना Yes, ही sir. जाना है उससे। और इसी को बोला गया है कि कल को nobody anybody की go for the code course या any other की sir question is out of syllabus, no, already given to you, okay, and already given to clear instructions या direction या guidance या suggestion. You can say to IIT Guwahati, if kindly help of this handout, this is a reference book, and this reference book each and every one prepare for your exam. So must be ensure ki question Sir, will be from this one. I download the IIT Guwahati websites. Already digital library available. If you are unable to download, you provide Gmail ID. I will add it to you. Okay. Please share link of the handout. Okay. Okay. I will share the link. Don't worry. Okay. I will share the link. Okay. Don't worry. Okay. Now come to here. In the current traditional network, already you are very well and good answer. It's okay, 100 meter, no problem. But in the current scenario, everybody very well know in the whole India, either any world, our network totally depend on the router and switches. Our new network, you can say core network of India, just look like a basic diagram in your screen. This is that there are three types of router used in India. One is the core router. One is the provider edge router. It is also known as the ISP router. Okay. It is also known as the P router. And third type is router is the customer edge router. Okay. In the current time and upcoming future time. Okay. Only here, just like network is the same, machinery may be different, no problem. Their machinery name is different, more 4G, 5G, NGN, everything. But basic idea in every network is the similar. There are all are routers. Router capacity, yeah, their use of router known accordingly. Their name nomenclature will be done. In this case, here is the core router. This is the main router. You can also say IP/MPLS router. Another is the ISP router. Every customer go to the ISP for their internet purpose, mobile phone, either tablet, either FTTH. This is go for the in the college campus. There is one router. You use a customer edge router. Suppose in LTTC Ghaziabad, in the campus, a lot of trainees come from outside. A lot of trainees, employees working here, all are required internet. So in this case, just here one installed the customer edge router. Okay. And this router, provider edge router is this is ISP BSNL, Reliance, Tata. Everybody, every ISP may be installed separately. No, taking license and installed. No problem. Now come in the campus. In the 4G is nothing. Just from this switch, you connect the one mobile tower and disconnect the mobile. When 4G network LTE technology, basic idea is very simple. LTE technology, all basic network is the router and their optical fiber
and local level only technology use LTE technology. Basic network, either any technology is the similar, just look like another screen. Okay, so you connect and go to the one switch and go to the router, another router, go to core network and go to the another side of the network. Server. What is the server? What is the meaning of the server? Server is nothing, any computer that used for a particular task, a particular purpose, that computer is known as server of that task. Suppose on your college main gate, one computer dedicated help of the software. Every person when come inside the campus, just take attendance. So this is known as attendance server. One computer just follow up AAA. Okay, na? This is AAA. Authentication, authorization, and accounting. Okay. So this server is known as proxy server. Okay. So every computer, if dedicated for the particular work, that computer is known as server of that particular work. Attendance server, proxy server, DSCP server, DNS server, any types of, just like a human. If you are a student, you are studying, you are a student. Some are working with BSNL, they are BSNL employees. Some are working with satellite communication, they are satellite. Some are playing lawyer. कोई कुछ भी हो सकता है, कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर है, उसके हिसाब से नाम। उसी तरह से कंप्यूटर को भी हम सर्वर का नाम दे सकते हैं और देते भी हैं। ठीक है, नाउ in the telephone communication system, what change? This computer, earlier this is a telephone and now this become change in the computer. In the telecommunication, in telephony system, just you call to anyone, easily identify कि you are calling person is right or wrong. आपने किसी को फोन किया और उसकी आवाज सुन के आप समझ गए कि आपने सही बंदे को फोन किया है. But in case of the data communication, suppose you sending some message here या some data, anytime data में भी audio, video, text, sound कुछ भी हो सकता है. In the remote system, how do you identify कि this data is delivered to the right person? It is a very big challenge. अगर आपने किसी को डेटा भेजा तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिसको भेजा है वो राइट पर्सन था? ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि वी ट्रांसमिट समथिंग रिमोटली, मस्ट बी इंश्योर कि दैट डेटा, दैट मैसेज विल बी इंश्योर द मेन पर्सन, नॉट लीकेज एनीवन. वो बिल्कुल उसी आदमी को जाए, लीकेज ना हो. ठीक है, इसके लिए फॉर दिस वी मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. वी मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन. And this rule regulation is earlier known as, first is the IP protocol. This protocol, this is known as the protocol. First is IP protocol, then become TCP protocol, and currently ISO. Are you very known what is ISO? One standard organization company. This is a standardization of everything. They decided finally a standard protocol for the internet. This is known as the TCP IP. So one question, what is the standard internet protocol for the communication, data communication, for internet communication? What is your answer? TCP IP. Very important question. Somebody confused. Just one question and give answer. There are two questions. First question, what is the standard protocol? Standard internet protocol. Option A, IP protocol. Option B, TCP. What is latest कर देता हूँ यहाँ पे, latest. First C is the TCP IP and D is the OSI.
Okay, please give the answer. As per your knowledge, give your answer. TCP/IP protocol, sir. TCP/IP. Remaining person, please write in TCP/IP, TCP/IP, TCP/IP. Anyone who can say OSI layer? Anyone? कोई है जो TCP OSI लेयर को भी बताए? सर लेटेस्ट OSI होगा लेटेस्ट OSI होगा सर। हाँ सर। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखो मेरा मेरा पर्पज है कि यू आर ऑल क्लियर और कंफ्यूजन। आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। आपने नाम नहीं लिखा था अपने उसमें ना, टेक्नो स्पार्क। किसने बोला था? आपने बोला था? वीर वीर नहीं सिंह सर, सर। श्यामसुंदर शाह, श्यामसुंदर शाह। सर TCP/IP। ठीक है। जिन्होंने स्टैंडर्ड ओएसआई इज द नेटवर्किंग मॉडल। ओके ओके। आप मुझे ये बताइए, फर्स्ट टेल मी, सपोज यू गो टू द मार्केट। ठीक है ना, आप अनम्यूट ही रहिएगा। सपोज यू गो टू द मार्केट, सपोज यू परचेज ए मोबाइल फोन। कंपनी, मोबाइल फोन कंपनी इज द सैमसंग कंपनी। ओके, आफ्टर द परचेजिंग मोबाइल फोन company Samsung. Okay, so you just go to one shop and make a cover of your phone, screen guard, clip cover, just for security purpose, physical damage, avoid to physical damage. Okay, so now you this flip guard, this screen guard, and everything you just use of the iPhone. Okay, so my question is that, is your phone now become from Samsung to iPhone? Yes या no? आप मेरे क्वेश्चन को समझे मैंने क्या पूछा? नो सर, नो नो। आप एक पंखा फोन खरीदने गए, फोन खरीदा सैमसंग का, उसका जो बैक कवर है, फ्लिक कवर है और स्क्रीन गार्ड है, एवरीथिंग आपने आईफोन का खरीद के लगा दिया। वो कहीं से बाहर से आईफोन का नहीं दिखता है। तो मैं माय क्वेश्चन इज दैट कि योर फोन इज नाइट कन्वर्ट टू द सैमसंग टू आईफोन, यस या नो? नो सर। दिस इज द फोन इज सैमसंग। Samsung. Very simple. Earlier TCP/IP, TCP/IP is nothing. This is the standard protocol. All are the right answer, no doubt. But what is the challenge? Challenge is that one messaging I sharing from one location to another location. So it be must be ensured कि this is delivered and secured. Okay. So we just finalize one protocol TCP/IP. Okay. Please mute, please mute, please mute. Please mute. ठीक है. This is a standard protocol is a TCP/IP, but add some security layer. Earlier TCP/IP in its initial stage only 4 layer, but after standardization this become 5 layer. And now, as per your handout, we just follow one reference model. This is known as the security layer, and this become 7 layer and 7 layer. Sorry. And it happened only OSI layer. OSI layer is nothing, just addition of the security layer in the TCP/IP. And as per your handout is 7 layer, but in the real world it become 10.5 layer. वो अभी बुक में नहीं है तो उसके बारे में जिक्र नहीं करना है, डेविड. ओके, so now 7 layer OSI layer is the, no doubt it is the reference model. Nothing is you can say reference model. यह एक रेफरेंस मॉडल है. इसमें क्या है? टीसीपी आईडी प्लस सिक्योरिटी लेयर एडेड है. दिस इज अ रेफरेंस मॉडल. नाउ वी गो फॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेफरेंस मॉडल एंड इजीली, होपफुली कि मैं जिस तरीके से बताऊंगा, होपफुली यू आर ऑल इन द फ्यूचर ऑल टाइम इसको याद रखेंगे. ठीक है, मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने जाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, somebody one म्यूट, जो नेट बैंकिंग करता हो.
आप बता सकते हैं विच साइट इज द मोर सिक्योर इन द वर्ल्ड? कौन ऐसी साइटें हैं जो मोस्ट सिक्योर है? प्लीज गिव द आंसर। गूगल सर। एटीएम भी है। नो वन। ठीक है, और बैंकिंग साइट। आवाज आप लोग की ज्यादा आ नहीं रही है, आप प्लीज उसमें वो सर कर। जिनके साथ HTTPS लगा होता है। बैंकिंग HTTPS लगा होता है। बैंकिंग। ठीक है, चलिए मान लिया मैंने। HTTPS का एस मतलब एस है सिक्योर। यस। चलिए, नो डाउट कुछ लोगों ने अच्छा आंसर दिया, किसी का वो है कि सिक्योर लगा होता है, मान लिया मैंने। आई एक्सेप्टेड योर आंसर, नो प्रॉब्लम। बट आई वेरी सिंपल मैनर कि वन कॉमन थिंग कि सम साइटेड वी ट्राई टू द मैक्सिमम सिक्योरिटी, like banking sector software, government cited, it the most secure cited try. Not 100% possible, but we try to do our best. ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, एवरीवन वेरी वेल नोन, एंड देन इज योर पर्सनल गवर्नमेंट साइटेड लाइक आधार कार्ड, लाइक डिफेंस। ओके, तो नाउ कौन ऑन म्यूट होगा? नेट बैंकिंग। चलो अजीत आपसे पूछते हैं। माय क्वेश्चन, दिस इज द सपोज योर नेट, दिस फर्स्ट 7 लेयर, अभी तो याद कर लिया होगा ना 7 लेयर कौन कौन से हैं? ये 7 लेयर है। हाँ हाँ हाँ। प्लीज डू नॉट थ्रो यस। सास पिज्जा अवे। ओके, this is the 7 layer of the SI layer. Please do not throw SAS pizza away. What in the real name is the physical layer, data link, network, transport, session, presentation, and application. Okay. सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। यस। No doubt, everybody well. I know कि मालूम है सबको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज दैट, सपोज करो कि ये दिस इज द योर बैंक अकाउंट इज ICICI बैंक, ठीक है ना, ये SBI बैंक में है, सपोज करो। ठीक है, योर बैंक अकाउंट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, and this is the server of State Bank of India, right? This is your home computer. You go for the net banking. Okay, you are want to open site from this server and log in everything. Now going for net banking. Okay, my question is that for the net banking, what is your the first step? क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे? What is the first step? You want to on your computer want to open net banking server. So what is your first layer? What is the first? क्या करोगे? लॉगिन। ये करो जो बोल लॉगिन। सकते। हाँ, कौन कर लो? अजीत आप बोल रहे हैं? हाँ सर लॉगिन करेंगे ना। हाँ तो बोलो सेशन ना, लॉगिन कहाँ सेशन करोगे? एस्टैब्लिश सेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अभी सेशन वेशन में मैं आया ही नहीं भाई। मैं एसबीआई की साइट पे जाके। ओनली वन, बाकी रिमूव हो जाओ। 1 मिनट सारे, अजीत आप ही बोलिए, बाकी लोग भी बंद रहिए प्लीज प्लीज। बाकी सर लोग एप्लीकेशन सर यूज खोलेंगे सर उसका। अब अनिल, आप हेलो अजीत आप म्यूट हो जाओ, रुक जाओ, चलो अनिल से पूछते हैं। आप भी सर म्यूट हो पहले जाइए। हाँ रुक जाओ, अब एप्लीकेशन। अनिल देखो, मैं जैसा पूछ रहा हूँ वैसे बताओ, क्योंकि मुझे इन जी सारे जी लेयरों को याद कराना है और आपको जी फ्यूचर जी को। जी सर। ठीक है, तो काइंडली माय क्वेश्चन इज दैट, अगेन आई रिपीट, you go for the net banking. Okay, this यस is सर your यस सर computer. यस सर For the net banking, what is your the very first step? जी सर फर्स्ट गो टू एप्लीकेशन। What application? Name सर of जो भी application? उसका जो भी सॉफ्टवेयर है उस बैंक का सर। नहीं नहीं, आप अपने सर कंप्यूटर वेब ब्राउजर में yes 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 जाके first listen. First is the you open web browser. ऐसा तो नहीं है ना, you just click on the music button, you click on my computer, you सर click on सर the MS सर Word. सर आजकल तो एप्लीकेशन है ना बैंकों के सर सारे। अरे मैं इस आजकल वही। कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ भाई। हाँ ये आप सर क्यों मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। सर मैं ओके अभी ओके ओके ठीक है सर ठीक अरे है मैं एक ठीक है नॉर्मल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप ओके क्यों? मैं ओके ठीक है, ठीक है देखो कोई ठीक चीज ओके ठीक है ठीक है। ओके ना। मैं अगेन आई रिपीट, देखो मैं देखो, ऑल आर वर्किंग यार, यू आर ऑल वर्किंग, यू आर वेरी वेल नॉलेज, नो डाउट, बट हियर वी आर ज्वाइन हियर फॉर ओनली कि और पर्पज कि वी हैव क्लियर द डाउट एंड एग्जाम पर्पज ऑफ यू मस्ट बी क्लियर। कोई एप्लीकेशन से खोलता है आजकल तो बहुत आसान तरीका है, दैट इज डिफरेंट, बट मैं एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। जस्ट डिस्कस अबाउट एनी नॉर्मल पर्सन। सपोज यू हैव द लैपटॉप ऑफ कंप्यूटर and now you want to open the net banking. So what is your first step in the simple manner? Okay, नेटवर्क लेयर।
नहीं नहीं, नेटवर्क लेयर कहाँ से आ गया? तो भैया मैं आपके कंप्यूटर में खोलना है तो नेटवर्क कैसे आ जाएगा? जस्ट 1 मिनट होल्ड रखना, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। Okay, 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 now, okay, come back. Yes, बोलो अनिल, अगेन रिपीट, नेटवर्क पे मत पहुंचो। यस, क्या नहीं होता? आप पहला काम क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द नेट बैंकिंग? पेज वाली को बोल दिया वो PDF खोलेंगे अप्रूवल के लिए। ओपन द ब्राउजर, ओके, and then type the site name यस, जैसे वन मिनट। ओपन ए ब्राउजर, दिस इज एप्लीकेशन। अब आपकी भाषा में समझाता हूँ। आपने क्या किया? ब्राउजर ओपन किया, ओके, दिस इज द नोन एज द एप्लीकेशन। ब्राउजर में बी गूगल क्रोम, में बी मोजिला, Internet Explorer, Opera, a lot of browser is application is available. Okay, then after when open the browser, then next site name. उसके Then बाद URL site name sir. then Site. after URL, okay, URL, okay, एक एक करके। अरे भाई रुको, सबको म्यूट करता हूँ, सारे अनम्यूट में रुक जाओ, 1 मिनट। कौन होगा अनम्यूट? अब एक हो जाओ कोई, 1 मिनट। यस सर, सूरज आप हो जाओ। Yeah, yes, sir. Okay. First open the browser, then Yeah. put URL. Just 1 minute. You open the browser, then URL. This is also your address. Okay. So you open this browser, you just put URL and your computer direction. Just go to the request going to the this route, and go to the this computer, then server, and server allowed in the public domain web page, and this web page is just go here and return back and open on your PC. This web page is also an application. Okay, next. Yes. And then after opening the web page, we will put credential, user ID, and password. Yes. The next stage is you put the user name and password. ठीक है ना? This is the key lock and key. Okay. This is also application, but this known as the presentation. Either you open Google Gmail, either you open Facebook. Main page is common for everyone, but you want to go personal level, so definitely required like username and password. So this is known as the presentation. Okay. So suppose you put your data. So accordingly, this computer allow only your related information on your screen. Okay. It may be suppose in case of the banking amount, how many amount, what is transaction, what is your facility, it may shown on the screen. Okay. Now the next. Next is after login, you as per your desire, you can work start. Whatever you want to make a transaction or whatever inquiry. This is your personal work. Then suppose if you are waiting, refresh on your computer, what happen? It will again session expire. Session, yeah. First is this is session expire. Session in the case of the Facebook,
In case of the in case of the Rediff mail, Gmail, is their session is the active mode? Yes or no? Yes, sir. These three is the completely software based session. A lot of types of session is available. Multi session allow, multi session is not allow. You go for the LICE exam. All exam is the through online, but only one session is allowed. In the same time, another computer you're not able to log in, but sometimes some software allow to multi-level. Okay, so session, different types of session is available. As per requirement, session will be defined. But in the case of the banking, if you go for the refresh, either waiting a long time, automatically yes, session will be expired. This first three layer is known as the user support layer, and this is the completely base of the software. Okay, and session, OTP, wrong attempt, you can block, a lot of session possibilities apply. Okay, so now this is the completely software based, directly handled by the user and directly related to the user. So this is known as user support layer. What is the layer of level in the user support layer? Application, presentation, session. Okay. Now, what is the movement of data from your computer to this computer, this server? So in your computer, there is data move from either LAN cable, either Wi-Fi, either anyway. So this is the layer number one. This is the physical layer. Okay. And data remove from this, move from your PC, mobile phone, either anyway, go to the first stoppage is your switch. This is the data link layer. Where is the data switch? Data link. Switch. What the purpose of the switch? In the same network, all data will be collected and go single way to another location. अब यहाँ से निकलेगा तो they go for the router. This is the network. One router to another router, router, go to another side, again return back, and again to server as per requirement. Again, same process repeat, and communication, sending and receiving will be started. Okay, so these three layer is known as network support layer, NSL. Switch is the example of the layer 2. Router is the example of the layer 3. Wi-Fi, net, NIC card, Bluetooth is the example of the layer 1. So very important question. Router you work on layer 2, layer 3. बताइए. Layer 3. Why no? Of some in the current time, router is a very costly device. So sometime everything going on the software base. So there managed switch is also available. Managed switch means is help of the software. This switch become like a router, work as a router, but not 100% efficiency, but some part work with the router. So the switch, if used as a layer 3, so this switch is known as the router. This switch used as the layer 2, this is known as the data link layer and normal switch. So some switch work in the layer 3. When layer 3, so that time switch is not switch. That time switch is become router. Keep in the mind. So a lot of confusion is there. Layer 2 switch is known as router, yes or no? Please give the answer. In the managed switch. No, sir, no. Yeah. If working layer 3, then it becomes a router. Okay. So hopefully everybody very well known. Okay. And now again come back to my earlier question. Some managed switch. managed Sir, switch is some only managed switch working in. नहीं sir, मैं sir बोल रहा हूँ some managed switch working with the layer 3 is called layer 3 switch. Is it called also called? Layer switch 3 means ki that is the some work of the router automatically handled by that. उसी स्विच में आपने राउटर का कुछ काम करा लिए, इसलिए उसको लेयर 3 में हमने यूज किया. ठीक है ओके सर. भाई ये स्विच तो एक ही है ना. Do you have only one switch? Some port of that switch you can use as a switch, and some port of that switch as a use as a router. Okay. So managed switch is nothing. Easily IP allotment, and some the local networking is possible. Local area network is the possible that only.
Now again come back the first question, what is the meaning of the LAN? Okay. In the current time, in the current scenario, there are only two types of area network in the field available. One is the LAN and another is the WAN. Okay. Nothing is, third is not, no is available in the current time, PAN, CAN, MAN, SAN. It is the history and as per your book. Okay. अभी आज के डेट में केवल आपको LAN और WAN मिलेगा. अब now what is the meaning of the LAN? Very simple manner. Customer is router one port is known as the LAN. Customer is router one port is known as the LAN. Now you are very well known. A lot of you guys working in the field, so they just use here media converter, change to electrical to optical fiber. Today one media converter is available of the JTE, that capacity to move up to optical fiber communication up to in the current time is 100 kilometer possible. Earlier is not possible. There 1 kilometer, 2 kilometer, maximum 3 kilometer, depend on the media converter. But today is 100 kilometer is also possible. Day-1 converter is available here. With help of this converter, you can move up to 100 kilometer. 100 kilometer again here, media converter use, convert all in electrical wing, and this is again use of the switch, and you connect up the computer, either help of the Wi-Fi you connect. So this 100 kilometer away, this computer move and come back to the same router port, all are the same LAN. So now my question is 100 it means no, within a campus meaning one port and whole campus single port you can distribute it. So all are the same LAN. But 100 meter is not bounded in the today. So that is the completely not justified answer is 100 meter. Router within a campus is the correct answer, and distance is doesn't matter because good example on our screen. Today a lot of media converter is available to up to 100 meter. Okay. Now the next is that in the same router, if two computer, another computer put and both computer put adjacent to each other, एक दोनों के साथ में रख दे, एक ही राउटर से दो अलग अलग पोर्ट से दो कंप्यूटर निकाला और साथ में रख दे, दे हैव डिफरेंट लाइन, दिस इज द डिफरेंट लाइन, क्योंकि राउटर का एक पोर्ट अलग लाइन है और दूसरा पोर्ट अलग लाइन है, so they have two different line, this is known as the WAN. So now that question also one is geographical distance between WAN, वो भी खत्म हो गया. So now only two types of communication, LAN and WAN. Now when two LAN communicated to each other, this is known as the WAN. If WAN used in the public domain just like me and you, मैं भी यहाँ पे हूँ, here I am live streaming for you online, you are remotely, you are joining me, my router is different, your router is different. Okay, तो हम दोनों का बीच का जो communication है, communication between our and your is public domain, this is known as internet. And same time network is the same, but that communication is not go to the public domain, this is known as intranet. Our BSNL, a lot of sites, SAP, ERP, this is intranet. ये आप कैंपस से बाहर नहीं यूज कर सकते, फिर को रूटिंग करना पड़ेगा नेट के ऊपर तभी कर पाएंगे. इसके अलावा नथिंग इज थर्टीज, कोई चीज नहीं है. तो असाई लेयर में आ गया, लैन वैन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है ना. अब मन में एनी हैव क्वेश्चन यू कैन नॉक्स, नहीं तो हम अगले स्टेप पे बढ़े. सर ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर फर्स्ट 3 लेयर और 4 लेयर पीडी नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क में कौन सा, अच्छा सॉरी एक लेयर और रह गया था ना यार. वेरी नाइस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, वेरी गुड. ये दिस लेयर इज द डिवाइडेड इन द 3 पार्ट. ओके, नो डाउट. 2 लेयर ऑलरेडी डिस्कशन. One is the transmission layer या network support layer,
The heat is just used for the communication from one location to another location. Ki how to communicate data from one location to another location. Another is the user support layer. This is completely help for the user mind. Now one is the very important layer is the transport layer. Okay. So what is the meaning of the transport layer? ये बहुत है, इसमें सवाल भी बहुत आएंगे। उटपटांग सवाल जो होता है ना, खतरनाक वाले पोर्ट नंबर और ये सब इसी में है। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका रास्ता नहीं है। पहले पहले समझते हैं, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, ठीक है ना। सुरेश आपने कुछ लिखा है, राउटर could be a switch but switch could not be router. This is the correct. यार राउटर another, what is the name of the router? Again Suresh, first keep in the mind, another name of the router is known as mini supercomputer. So he is a supercomputer, he can do anything. Another name of the router is the, if you go for the main router purchasing, so he is the big router. He is also known as the mini supercomputer. So he can handle everything. He now go for the 5G technology, 4G technology. 4G लग रहा है ना फील्ड में, 4G is the completely router based. Automatically software upgrade, it become the 5G. आपको 5G के लिए कोई हार्डवेयर नहीं लगाना है, ठीक है। तो यू आर राइट आंसर। आप जो आपने जो सवाल पूछा है वो तो कह सकते हो, क्योंकि राउटर इज द कैपेबल टू डू एनीथिंग, राइट, ठीक है। चलिए अब आते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। So now what discuss the, what is the meaning of the, in the practical field, what is the meaning of the transport network? Anyone? एंड टू एंड डिलीवरी। हाँ, उसका मतलब क्या है? जो मैंने जहाँ चीज पहुंची वो वही चीज है वहां वो पहुंचनी चाहिए, विदाउट उसमें कुछ डिस्टर्बेंस। नहीं वो तो मीनिंग, हाँ ठीक है, मान लिया। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ से कोई, लाइक पोस्ट ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट। सर ये सिंक्रोनाइज्ड होने के लिए, अगर कनेक्शन ओरिएंटेड है तो सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ेगा, नहीं तो। चलिए ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज द एज पर हैंड आउट, नो डाउट। और जो प्रैक्टिकल काम करते होंगे हो सकता है उनको थोड़ा सा दे हैव आइडिया अबाउट दिस, बट मैं सिंपल ही बात कहूंगा। मैं तो सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे बाकी लोग बताए भी बताता हूँ। वेरी सिंपल मैनर। सपोज कि आई सेंडिंग सम ईमेल टू यू, ठीक है ना, अजीत कुमार, आई सेंडिंग सम ईमेल टू यू, ओके। तो मुझे आप ये बताएं, जस्ट यू से टू मी कि वेयर यू चेक योर ईमेल, ईमेल कहाँ चेक करेंगे आप? जीमेल पे। अपने ईमेल बॉक्स में चेक करेंगे ना, यू चेक बॉक्स में, ठीक है ना। इट डजंट मैटर, आई सेंडिंग ईमेल, यू जस्ट ओपन योर ईमेल बॉक्स एंड चेक। कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आई एम सेंडिंग ईमेल, यू जस्ट पिक अप योर हैंडसेट, आप मोबाइल फोन या आइदर लैंडलाइन फोन एंड पुट इन योर ईयर, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं अगर आपको किसी चीज का भेजूंगा तो वो चीज उसी चीज में चेक करोगे ना, ऐसा तो नहीं उठा के कान में लगा दोगे सुनाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डन बाय द सेंडर, या व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डन बाय द रिसीवर। आप किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ये चीज कैसे डिफाइंड होगा, कौन बताएगा? आई एम सेंडिंग हियर सम मेल, ईमेल, चैट बॉक्स, वॉइस, टेक्स्ट, पीडीएफ फाइल, एवरीथिंग आई एम सेंडिंग ना। तो अनदर एंड, हाउ टू आइडेंटिफाई कि सेंडर ने व्हाट सेंड, उसने क्या भेजा था, ईमेल भेजा था, ऑडियो भेजा था, वीडियो भेजा था, व्हाट वीडियो। तो हाउ टू, जस्ट व्हेन, जस्ट वी आर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन स्टार्ट, जैसे आपने बोला ना इंटेंट कम्युनिकेशन, उसका मतलब यही है कि व्हेन यू स्टार्ट, तो जस्ट हियर पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइंड बाय आईएसओ। तो जैसे आप कुछ भेजोगे, जैसे आपने ब्राउजर खोला, ठीक है, या फिर आपने साउंड भेजा, सबका पोर्ट नंबर डिफाइंड है। एफटीपी पोर्ट 2021 8088080443 एचटीपीपीएस का पोर्ट नंबर है ना, ठीक है। मैं साउंड भेज रहा हूँ, साउंड का पोर्ट नंबर है देयर आर द 2000। आपका सैप है, सैप भी हम लोग कम्युनिकेट कराते हैं, उसका पोर्ट नंबर है 7 8080। यस यस। तो एवरीथिंग
कि in other location in server how to identify कि what want user want, यूजर वांट ने क्या रिक्वेस्ट करी है, वो पोर्ट नंबर यहाँ जैसे जाता है सॉफ्टवेयर मेन में हेडर, अगर आप उसे पढ़ोगे ना बुक्स में एज पर योर बुक, तो इतने बिट का ये लग जाएगा, इतने बिट का, ये तो आपका काम है, वो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि टाइम नहीं है कि मैं सबको बिट वाइट में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो ये तो जैसे निकलेंगे उसके उसी बिट में बाय डिफॉल्ट हेडर या जो भी है ऐड हो जाता है पोर्ट नंबर, रिमोटली इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज वेरी इजी की एंड की what kinds of transportation, basically port number is available in the transport layer and depend on the user request, it will be connectionless, connection oriented, yeah, another a lot of kinds of available transport. Har ek layer is each layer is very important in the cyber security. If you are go to the cyber security, so what is the meaning of cyber security? Meaning of the cyber security is very simple. Each and every layer go for the security, application layer security, presentation layer security, session, each and every layer has security. सभी layer पे security है. Socket secure layer is actually TC transport layer. Transport layer is just defined कि what kinds of transportation, port number. Okay. In banking system like नहीं, वो socket depend, मैंने क्या बोला, each and every layer how to secure. Suppose application layer how to secure, for example. Can you say the IP address in computer? Yes or no? आप सिक्योर करोगे ना? Yes. आप ही करोगे ना, पड़ोसी तो नहीं करेगा ना। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर में सिक्योरिटी कैसे करोगे? नेवर से यूजर नेम पासवर्ड यानी जो बताओगे तो नहीं ना। एंड सम टाइम रॉन्ग है तो हमने इसमें और भी सिक्योरिटी ऐड किया, ओटीपी। तो हर लेयर पे सिक्योरिटी फीचर ऐड करने का प्रोविजन है, ईच एंड एवरी लेयर अपकमिंग फ्यूचर। अब डिपेंड करता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो भैया मैं तो इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं भी साइबर सिक्योरिटी जुड़ूंगा, लेकिन माई कंफर्टेबिलिटी इनमें नेटवर्क में क्या क्या सिक्योर कर सकते हैं। जो ट्रांसमिशन में काम करते हैं पूछ लो, बता देगा। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस में हो यहाँ पे बताएगा। आईटी वाला बेचारा कंफ्यूज रहता है। मैं आपकी बात प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। फील्ड में ना जब आईटी ब्रांच आया ना तो सारे कंफ्यूज थे कि कौन सी ब्रांच आ गई। कंप्यूटर वाले कहे भैया हमारा है नहीं, सॉफ्टवेयर बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहे हमारा है नहीं। लेकिन मैं वेरी वेरी क्लियर कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज द आईटी कम्युनिकेशन। आईटी इज नथिंग, टेलीकम्युनिकेशन का ही नया नाम है। क्लियर हो गई? यह मस्ट, इसीलिए 20% पार्ट ऑफ द योर 100% पेपर डिफाइन इक्वल टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि जो 5G है ना, 5G कंप्लीटली 100% बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफेंस नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा फील्ड में भी वैसे भी। तो नाउ एनी मोर क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन डाउट? मेरे पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं, मैंने बहुत हाई पर तो नहीं ले गया? क्योंकि इतना टाइम नहीं है जितना है कि आपको लेयर होगा बता सकते हैं, हाउ मेनी लेयर। ठीक है ना। अब इसमें किसी ने बोला ट्रांसपोर्ट लेयर, HTTPS। STP, ठीक है, ये पहले था। इसमें हमने ऐड किया हाउ टू इम्प्रूव ब्राउजर सिक्योरिटी, दैट ब्राउजर। SSL ऐड किया हमने, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो लोगों ने कहा HTTPS हो गए। ठीक है, और इसके लिए हमें अलग से रूट डिफाइन करना पड़ा, डिफरेंट रूट में भी डिफाइन। और दिस इज द पोर्ट नंबर, हमें अगेन पोर्ट नंबर डिफाइन। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS? एनीबॉडी हैव द आंसर? 80. ठीक है, 80 सर। ना पोर्ट नंबर फॉर STP इज द ओल्ड पोर्ट ದೇವರಳ್ಳಿ 443 STPPS 443 443। ओके चिरंजीवी, हाय सर। इतना सिक्योर मत करो। ठीक है, थैंक यू, कोई बात। ओके, अब मैं आता हूँ दोबारा से। मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया आपको। अभी हैंड आउट ऑलरेडी डिफाइंड की, दिस हैंड आउट इज बाय डिफॉल्ट already given to you, so no doubt you must be already provided each and every one. If not, here I share
link of the this. Okay. So this handout is basically our team design as per guidance given by our senior management, and this handout given to all of you because nobody go to doubt key question where will we ask. So you can do it. You can help this one. No doubt it is a very vast. Anyway, okay. So here again come. Okay. OSI layer, and this is the two part are the defined for me today. Okay. So this is, and one is more is the cloud computing. ठीक है? एक्सक्यूज मी Last, सर, yes, yes. सर इसका आंसर क्या होगा फिर फाइनली? लेटेस्ट स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? इसका आंसर कौन से वाले का? सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, ओएसआई लेयर होगा या टीसीपी आईपी होगा? Standard protocol is the TCP/IP. ओके If the reference model is asking, the answer is the OSI layer. OSI layer is no protocol, it is the reference model. Just like मैंने जैसा आपको बताया कि मोबाइल फोन नहीं बदलेगा, प्रोटोकॉल वही रहेगा. समझ में आ गया? आपने मोबाइल फोन का एग्जांपल सुना था? यस यस सर। उसमें मैंने आपको क्या बोला? हमने जो OSI layer is nothing, just added additional layer for the security point of view. ओके, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका टीसीपी आईपी ही है. उसके ऊपर हमने और भी लेयर ऐड किया. बता देता हूँ, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कौन सी लेयर बाद में ऐड की गई. देखिए, अर्लियर स्टार्टिंग व्हेन द इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो इन दिस केस ओनली एप्लीकेशन लेयर इज अवेलेबल. पहले किसी को यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ता था. फिर वेरी फास्टली रियलाइज कि भाई पब्लिक डोमेन नॉट गो फॉर एवरीवन, तो देन यूज द यूजर नेम पासवर्ड. फिर रियलाइज कि सब लोग भूल जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई टाइम बाउंड करो, सेशन लेयर ऐड किया. तो पहले केवल ये लेयर था, ये दोनों लेयर बाद में ऐड हुई हैं. ठीक है, ये रेफरेंस लेयर में. तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो पहले 4 लेयर जो था वो पढ़ना अर्लियर, फिर 5 लेयर जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया वो दिया. उनमें से आप इसमें से एक, ये आपका पहले ये जो नेटवर्क में भी केवल आपका स्विच ही होता था, ये भी लेयर बाद में आई है. नेटवर्क और स्विच ये दोनों एक ही लेयर होती थी पहले. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन मेरा था कि व्हाट इज द डिफरेंस मॉडल, अगर है तो उस समय आपका वैसा ही लेयर होगा. हाउ मेनी रेफरेंस मॉडल एज पर योर बुक, अभी आपको बुक के हिसाब से लिखना है. देयर इज 7 लेयर, एंड 7 लेयर के बारे में अभी हमने बहुत ही क्लियर एक्सप्लेन किया कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है: यूजर सपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. यूजर सपोर्ट कंप्लीटली कम्युनिकेशन फॉर द यूजर के लिए है, जिसमें आपका पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर आपका कम्युनिकेशन के लिए है, वन लोकेशन से अनदर टू लोकेशन पे हाउ टू कम्युनिकेट. एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दम. ठीक है, ये बेसिक है, इसका आइडिया है. ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड रूल्स, स्टैंडर्ड रेगुलेशन, आंसर इज द टीसीपी आईपी. ठीक है, अब आ जाते हैं एक लास्ट में ही पीयूसी में देख लेते हैं, हैंड आउट में तो ज्यादा ये हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 या मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. यू कैन हियर वी डिस्कस, एंड आपको मैं बता देता हूँ. हाँ, वन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन के अंदर हम बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑडिटर पर्पज. माय क्वेश्चन इज दैट कि फॉर ऑडिटर पर्पज पहले क्या होता था. देखिए, 2 चीजें होती हैं. फर्स्ट है कि लोगों ने सिक्योरिटी कैसे की, हाउ टू सिक्योर. ठीक है, वन दैट इज द protection. Suppose you for your home you can secure by the lock, but next step आता है चोरी हो जाए. ठीक है ना, after the breaching of the security, the what standard we can follow to sort out the breach. जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी है. तो दिस इज द ISO IC 27001 इज द पॉलिसी. ये हमारी पॉलिसी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
सिक्योरिटी, इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक चीज और है, मैं दिखा देता हूँ, शायद इसमें मैंने मेंशन किया था। चलिए मैं उसको, ये यस ये 2005 एंड करंटली 2016 आर यूज। ठीक है ना, अभी फिलहाल हमारा जो है ये है ISO इनका 2005 यूज थ्रू आउट दिस। ठीक है ना, ये पूरा हमारा है अभी पर्पज है, अभी करंटली अंडर प्रोग्रेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। व्हेन दिस यूज आफ्टर द ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जब ब्रीच हो जाती है तब उसके बाद के लिए है ये, और अभी को आना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में तो आपको इसमें जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ जो अटैक्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये सब टिप्स की जरूरत नहीं है, इसमें आप उसमें चले जाएं। ये सब जो अटैक्स के नाम से है ना, नेम से सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये तो हो गया आपका। यस ये जो नेम है सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है सिक्योरिटी कम्युनिटी के लिए हमारे पास में, ये तो बाय डिफॉल्ट सम नेम आर यू आर वेल अवेयर, सम मोर नेम इज द जोन अलार्म, ब्लैक लिस्ट एंड, इसमें मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, ये है आप तीनों, एक CHC होगी, हाँ ये CHC पर्सनल फायरवॉल। ये अब जरूरी है, विदाउट फायरवॉल यू आर नॉट नाउ ऑथोराइज टू यूज एनी इंटरनेट एट योर एनी वर्क प्लेस। BSNL में तो फिलहाल अभी बहुत जगह इशू है, बट अप टू टाइम डेफिनेटली ये होने वाला है। ठीक है ना, AAA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द AAA? एनीबडी कैन एक्सप्लेन, वेरी वेरी सिंपल मैनर। किसी को AAA का ऑथराइजेशन, हाँ Accountability. ऑथेंटिकेशन, Sir, authorization, accounting and authorization, authentication. ओके, एक काम करते हैं, मैं इसमें ही PPT में एक चीज और दिखा देता हूँ, हम इसको डिस्कस करके वर्क करेंगे। यस देखिए, नाउ आपको AAA भी परमानेंट, देखिए यहाँ पे भी मैंने जो प्लान किया ना अकॉर्डिंगली, सपोज एनी कैंपस, यू कॉलेज कैंपस या एनी कैंपस, you go for the communication, so definitely today is not only telephone line is sufficient, we required internet lead line, okay, ILL, okay। so suppose you provided one lead line for the some bandwidth, क्योंकि आजकल bandwidth के थ्रू ही पहुंचाते हैं, तो अब नॉट भी कि अब नॉर्मली डिपेंड ऑन द मनी, तो 1 Gbps तक by default is the now today 100 Mbps to 100 Gbps is the common bandwidth demanded by any organization. So suppose one organization here, here LTTC, for your fine understanding. So one lead line is the 100 MB, 1 Gbps is just a true optical fiber come here, or by default CPAN. CPAN से आजकल आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। So what when this come in this, so here is a media converter used, and just here line convert electrical go to the router. This is the router. This is the router port. Okay, some mechanism is available router port, and go to the one LAN cable is here outside. Okay, LAN cable. Suppose here one computer, personal computer you take and use here. In this case, all bandwidth used by the single computer. But our purpose is in campus, this bandwidth distributed among all employees, all user in the campus. So how is possible? So just this LAN cable, just put inside the switch. A lot of switch available, you put in the switch, and switch connected through the either Wi-Fi, either directly LAN cable. Okay, connected. Okay, and this LAN cable distance is only 90 meter. What is the capability of the LAN cable? Only in the 90 meter. Okay, so more than 90 meter, we just use here media converter
already explained about this. And this convert again optical fiber and go to the another location. Again media converter, switch and computer, they connected. So all computer move and come to this same router port. So all are the same LAN. Okay. But in this case, suppose anybody use up your computer in the campus and just go to internet and here and go to outside. But keep in the mind in the today, either internet given to you by you any user, so you must be follow AAA. अगर आज की डेट में आपको किसी इंटरनेट दे रहे हैं तो यू मस्ट बी फॉलो AAA. It is mandatory and 100% इंश्योर बाय द यूजर. एनी ISP जो भी इंटरनेट देगा वो ISP कहलाएगा. Suppose in this campus, I know कि I am part of the BSNL, but on behalf of myself, all trainees, all staff in the campus LTTC, they use internet. So that means in charge of this router is known as ISP. And now I am responsible for AAA implementation. Okay. So what happened? I just go to the one company and here use of the firewall. Yeah, use the proxy. Yeah, you can by default AAA. Basically, main purpose is the AAA. So now this cable not directly put in the switch. This cable just put here firewall. Or one cable put inside and another cable remove come out and take and put on the switch. So now every person we use internet in the campus. So just go and first reach on this computer. This computer first stop. Put your username and password. Okay. This is the authentication. You are right person. When you join the LTC, so I give everyone username password. After username password, you connect Wi-Fi, no problem. But internet will be start when put username password. So I just put username password. Okay, right. And in LTC campus, a lot types of candidate here join. Some trainees, some student. Suppose student join here. And a student join here and he try to connect to internet. So first I give him the permission authentication. But he is student. I have 1 Gbps internet. So I not permitted to all bandwidth to them. I just permitted in any case one student maximum 20 Mbps speed may be utilized. And maximum website is restriction. बहुत सारी साइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. ठीक है ना. And in the lunch hour, they may be internet use. Class time, they not use internet. They connected to website, but I have some restriction. So this is come under authorization. Okay, authentication, you are connected as per given permission, but authentication, authorization, you are not permitted to 20 more Mbps. Some cited bound, yeah, time limit is defined. Okay. And next is the accounting. After the internet, they go back home. Yeah, they remove permanently. So all internet browsing, what kinds of internet doing automatically store in this your accounting. That means कि हिसाब किताब आपको पहले परमिशन मिलेगी, परमिशन किस कैटेगरी मिलेगी और क्या इंटरनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. तो ईच एंड एवरी वन सभी को मालूम होना चाहिए. ईच एंड एवरी वन वेरी वेल नोन कि इफ यू आर ओपन एनी ब्राउजर एनीथिंग. आजकल क्या है टुडे, तो in WhatsApp, you just sending message, delete everyone. Okay, delete your side and sender side. But in the store, already once again entry, so you can't delete it. क्योंकि अकाउंटिंग में आ चुका वो, समझ में आ गया. और यहाँ पे नहीं है, सपोज ट्रिपल इज नॉट अवेलेबल, इट विल बी इंश्योर बाय द आवर NIB सेक्शन या बेंगलोर, वो भी नहीं है तो इंटरनेशनल गेटवे पे, बट इज मनीडेटरी. So no data will be breached and no data will be destroyed. Every data must be there and secure. Clear हो गया?
ट्रिपल ए क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, और कहाँ यूज होता है? हर लेवल पे, और आईएसपी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट हम आपको उसमें दिखा देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको दिखाने आ गया। यस। हाउ मेनी डेटा सेंटर इन इंडिया? हमारे बीएसएनएल में कितने डेटा सेंटर हैं? एनी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एनी हैव आइडिया किसी को? 3 सर। नो। ओके, वेयर इज योर 4। डाटा? हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये डाटा कहाँ स्टोर होता है सभी का? नहीं पता? अरे कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। डेटा सेंटर कहाँ बने हुए हैं? आर यू नो कि बीएसएनएल के भी डेटा सेंटर हैं? द बिगर, सबसे जो बिगेस्ट डेटा सेंटर है, वेयर इज द बिगेस्ट डेटा सेंटर ऑफ द बीएसएनएल? सर कोलकाता। मुंबई। कोलकाता में है? बेंगलोर में है? बेंगलोर में सर। कंफ्यूजन हो गया ना। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर। वन इज द डेटा सेंटर दैट इज द मैनेज बाय द यूजर्स। जो यूजर्स को हमने जो डेटा दिया है उनको मैनेज करने के लिए है। ठीक है ना, लाइक हमारा हाउ मेनी कनेक्शन, व्हाट डेटा यूज, दैट इज वन डेटा सेंटर। देयर इज द लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, आधार कार्ड, इनके भी डाटा सर्वर कहाँ है? ये कहाँ पे है? ये अलग डेटा सेंटर है, दैट इज नॉट इन बेंगलोर, दिस इज द फरीदाबाद। फरीदाबाद में डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर में डाटा स्टोर। आधार कार्ड का डेटा सेंटर कहाँ है? बीएसएनएल के पास में है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वेयर इज द डेटा सेंटर ऑफ आधार कार्ड? आर यू नो? दिस इज यस द सर। फरीदाबाद, बीएसएनएल फरीदाबाद। छोटा सा है, हैंडल बाय द नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आई थिंक नेक्स्ट जेन। ठीक है ना, बट ऑफ कमिंग ऑफ ऑल डेटा सेंटर मस्ट बी हैंडल बाय द एनआईसी, और एनआईसी डेटा सेंटर बाय डिफॉल्ट बाय मैनेज बाय द बीएसएनएल इन फ्यूचर। Future is very bright of BSNL. Don't worry. You become SD and use. Okay. Now, types of the all data center, their data store other than user. Other than user मतलब कि उसमें ये नहीं बताना कनेक्शन कितने हैं, कितना इंटरनेट यूज किया। हमारा जो डाटा है, जैसे हमने गूगल ड्राइव, ये उस डेटा सेंटर की बात करा, दैट इज नोन एज क्लाउड। तो क्लाउड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, नो डाउट, प्राइवेट कंपनी गिवेन। Google Drive is the private cloud. Public cloud, some data is the public cloud। और आधार कार्ड आप वो करते हैं, बैंकिंग जो बैंकों के डेटा है, क्लाउड हो गए। हाइब्रिड, हाइब्रिड में सम में भी अलाउ कि कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि उसमें आप अपना भी यूज कर सकते हो, पब्लिक का, जैसे पेटीएम। पेटीएम इज एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड। दैट इज द डाटा यूज ऑफ योर बैंक सेक्शन इज योर, बट एवरीथिंग इज द प्राइवेट। ठीक है, तो क्लाउड इज नथिंग, जस्ट इज द हार्ड डिस्क टाइप्स ऑफ सेंटर, दैट लोकेशन। ठीक है, इसमें ये अब तीन हो गए, और इसमें से जो आपका है कि अब डेटा सेंटर हाउ टू यूटिलाइज, थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द डेटा सेंटर, दैट इज नोन एज द, ये सब आप देख लीजिएगा। यस, ये सास फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सपोज अपकमिंग टाइम एवरीबडी वांट टू, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है कि हर आदमी 100 टीबी का हार्ड डिस्क खरीदे, तो अपना डाटा कहाँ रखे? जैसे मेरा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरा देखिए गूगल ड्राइव है यहाँ पे, है ना, गूगल ड्राइव है। आई जस्ट ओपन माई गूगल ड्राइव। दिस इज द प्राइवेट डेटा, या क्लाउड स्टोरेज सेंटर। ठीक है ना, ओके। इसमें अगर आप देखेंगे,
document. Right. मैंने लिया 2 TB का. I have a drive only 15 I think 15 MB only applicable, but I use the 2 TB. डेटा हमने भेजा हुआ है. ये डेटा है हमारे पास में. टोटल स्टोरेज अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो यू हैव जस्ट 2 TB और ओनली यूज ओनली 231 GB इन डेटा स्टोरेज. ठीक है. तो दिस डेटा नॉट रिक्वायर्ड एनी हार्डवेयर. मुझे इसमें हार्डवेयर नहीं चाहिए. हमने उनका केवल अपना वहां से, अब ये तो हो गया स्टोरेज टाइप का. दिस इज स्टोरेज टाइप. अनदर पॉसिबिलिटी इज कि you if you have only monitor and connectivity of internet on your PC, you have not any hard disk, or you want any types of operating system used, to help of the SaaS, software as a service, you can directly log in that cloud website. अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा तो परचेज करना पड़ेगा, फिर इसको डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे. बट इन द क्लाउड सर्विसेज में, सॉस में, यू कैन डायरेक्टली गो टू द दैट कंप्यूटर, या यू कैन दैट टू द क्लाउड एंड डायरेक्टली योर कंप्यूटर यूज फ्रॉम द रिमोट एरिया इन योर क्लाउड. फ्यूचर में ये होने वाला, हर आदमी कंप्यूटर नहीं खरीदेगा, वो सीधा इस्तेमाल करेगा. सम इज द पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज मीन की some companies like Aadhaar card, they want do everything, but they want not any software, any human intervention of the public domain. So they just, because they not able to any installation of the new hardware software in any location, so they just pay the rent out and purchase the location with hardware platform and use that. उसको यूज करते हैं. और उसी में प्लेटफॉर्म में भी पूरा इंफ्रा भी ले सकते हैं. सपोज वन इन दिस किस इंफ्रा जस्ट लाइक ए लॉकिंग सिस्टम. क्या वो हमने कई जगह क्या होगा, हार्डवेयर दे दिया, उसी हार्डवेयर में आप शेयर बेसिस भी कर सकते हो. लेकिन जब आपको पूरा इंफ्रा दे देंगे तो भैया उसमें यू आर जस्ट, वही पर्सन आएगा, उसी कंप्यूटर को खोलेगा, हार्डवेयर को खोलेगा और फिर यूज करेगा. तो ये 3 तरह के मोन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में. फुल फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द IS इंफ्रा एज ए सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. तो इसमें सारे के सारे यूज कर सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल है, गेमिन एग्जांपल्स हैं, अमेजन EC2 S3, ये सब उनके पब्लिक और कहाँ जो दे रहे हैं. BSNL में तो BSNL डेटा सेंटर के नाम से अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है. वो कहाँ कहाँ है आपने कभी साइट खोल के देखा नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. क्वेश्चन यहीं से आएंगे BSNL वाले जो भी हैं आपके. आप इसमें अपने साइट पे जाएंगे, एंटरप्राइज सर्विस के अंदर डेटा सेंटर में होगा, इसमें IDC सेंटर ये सर्विसेज है, इसके अंदर चले जाएंगे. ठीक है ना. दिस इज द सर्विसेज. तो आपका IDC सर्विसेज में आपका जो है, नेक्स्ट करिए. दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड. ये BSNL इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द, दिस इज द क्लाउड. और वेयर इज द लोकेशन ऑफ द डिस्टेंडर. तो पहले अर्लियर देयर, मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी 270001 ऑडिटेड इज अवेलेबल. डेटा इज द मोस्ट सिक्योर. फिजिकल सिक्योरिटी, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता. Nobody allow easily to physically move inside the data center. It is a proper guideline, proper permission, proper time given to you, then you can allow. ठीक है. और इसमें पूरी दी हुई है और इसकी लोकेशंस है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ये फर्स्ट 3 टायर डेटा सेंटर, ये एक वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आवर डेटा सेंटर इज द, there are tier 1, tier 2, tier 3. Our data center is capable to the tier 3 data center and it is the first data center of the BSNL. कि ये पहला डेटा सेंटर है BSNL का, इवन इंडिया का, कि जो आपका पूरा का पूरा वो है.
में डेटा 3 लोकेशन में है, फरीदाबाद में है, नहीं दिखा हुआ। अभी हटा दिया है इन्होंने, फिलहाल तो मुझे लग रहा है 3 लोकेशन होने चाहिए थे। एक फरीदाबाद है, तो मिल नहीं रहा है, हैंड आउट में हो सकता है। आर यू नो वेयर इज द 3 लोकेशन डेटा सेंटर ऑफ द आवर करंटली नेक्स्ट जेन? जो को मालूम है? एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, सकते इसमें लिखा हो। ठीक है, ये सब छोड़ दिए, सब खुद पढ़िएगा इसमें से, मजबूरी से। But I am sure to all of you, question of the IT will be available in this handout. This handout available is already given to all of you. ठीक है, मैं नहीं है, मैं दे दूंगा, आई विल शेयर, नो प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन यू कैन नॉट, क्योंकि अब मैं पढ़ाने के मूड में अब नहीं हूँ, बहुत हो गया। Please provide a link for the download handout. By default, you go to the intranet site. Yes, Otherwise, sir. ओके, मैं आपको एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ। अभी मैंने खोला था ना, मैं ड्राइव खोला अच्छा था, मैं ड्राइव खोला तो यहीं शेयर ही कर देता हूँ, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा, तो यू कैन Yes, sir. डायरेक्टली ओपन एंड। आपको मैं पूरा हैंड आउट ही शेयर कर देता हूँ। इट रिलेटेड टू एवरी वन, नॉट ओनली ईबी आईबी आईटी। ठीक है ना, आई 100% हैंड आउट शेयर टू देम। Okay, sir. Okay, sir. Okay. दिस लिंक विल बी Okay. शेयर ईच एंड एवरी वन एज पर योर चॉइस। फिल अप द फॉर्म, मैं इसको पब्लिक में कर देता हूँ 24 घंटे के लिए, यू कैन डाउनलोड एज पर अकॉर्डिंगली। ओके, Yes, sir. मैं आपको पब्लिक डोमेन में इसको कर देता हूँ, उसको फिलअप कर लीजिएगा फिर। मैंने अभी शेयर कर दिया है चैट के थ्रू, आई हैव शेयर थ्रू द चैट एंड LTC का जो okay, I will accept everyone, they are accessing, want to accessing this। ठीक है ना, anyone I already changed viewer। अभी रिस्ट्रिक्शन मैंने हटा दिया, 24 आवर्स यू कैन चेक ना, if not open I will accept ना। Okay, so thank for joining, and recording will be shared tomorrow, today recording also share। Okay, Yes, sir. this is the link I will share, this is available on this link। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये लिंक आप अभी ले लीजिएगा, Yes, sir. इसी में शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना, और कल सवेरे एज पर अगेन क्लास विल बी स्टार्टेड 10 AM। Okay, sir. तो मैं इसको भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, लिंक आल्सो शेयर इन ना। ओके, और रोज मॉर्निंग में आपको फार्म भरना है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको कर लेंगे। ठीक है ना, जो SC पैनल्टी के हैं उनको रिलीविंग ऑर्डर भी मिल जाएगा अगर उनका है। ठीक है, बाकी ज्वाइनिंग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, यू ऑल आर ज्वाइन और एंजॉय करिए, जब तक मिल के पढ़ेंगे नहीं पास भी नहीं हो सकते। ठीक है, Yes, sir. तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और आज के ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you, sir. Yes, sir. ठीक है, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो, थैंक यू। Thank you, sir. करना Thank you. ओवर सेशन।